themselves and try to make it interactive so that you all learn from this session. So what we do is actually we might, yes. So basically, we might be getting a lot of data and a lot of information, but we need to make certain decisions out of that data or that information that we are having. Unless that data is properly organized, we cannot make any. There's some background noise coming. I don't know from where it is coming. So I'll request all of you to keep yourself mute form, and whenever you need to ask any question, you can unmute yourself. Thank you. So what we do in statistics is that we try to make a meaningful conclusions out of the raw data that we are having. We get data in various places, and unless we organize that data in a proper meaningful form, we are not able to analyze the data. And analysis is possible only after the classification and organization of data, and then we process that data and we draw meaningful conclusions, and that helps us many a times in proper decision making. So the first concept that we are about to understand is about data classification and processing. So we might be having a of means 1,000 records, 10,000 records, 1 lakh or 1 million. So it could be a huge data, and by looking at the data, you cannot make a meaningful conclusion about attributes of that data. So for example, if you want to know in the upcoming election which party is going to win, so if you have discrete data of all the people who are about to vote which party, you cannot make a conclusion that which party is getting how much percentage votes and all. This is just an example, and it could be any kind of a data. Unless we organize it in a certain manner, we will not be able to make a meaningful conclusion out of it. So in statistics, what we generally do is, first of all, we try to classify the data. So we classify the data is in the it's a process in which we arrange the collected data. So first of all, somebody collect the data, and then that collected data is arranged in subclasses or classes according to their common characteristics. So for example, if you want to know that how much percentage of population in a city is male and how much is the female, so the first step would be to collect the data of all the people in that city and then classify them according to the attribute, how many are male and how many are female. So if I want to know whether my sale or my profits are increasing or decreasing, so we are calculating the profits on yearly basis, and if we are charting out those profits on yearly basis in a table, then we are able to understand what is the trend, whether we are making our business is growing or it is going in the downward side. So basically, first of all, we collect the data, and then we collect the collected data is then classified into classes and subclasses. So there could be classes and there could be subclasses also. So in the first example, their first class is urban and village, and then subclass is female and male. So classification is basically a grouping of related facts into classes. So we just have some example like here. The population is classified, the profit in year-wise classification is there, or production of food grains is state-wise is also classified. So different ways of classification, but those different types of classifications are generally categorized into 4 categories. So as you can see in the example 2, it is an example of geographic classification, because we are classifying the data based on different geographies. So Tamil Nadu is this, Karnataka is this much, Andhra Pradesh is this much. So it is basically geographic classification. When we say that the numbers of different cities or numbers of different countries or different states, it is basically we are classifying the data, we are grouping the data based on different
geographies. Second could be chronological classification, that we are classifying the data on a simple numbering system. So 1, 3, 4, 5, 6. So it could be year 2001, 2, 3, 4, 5. So this example, the year-wise profit is basically a chronological classification. Another could be qualitative classification, that we are classifying the data based on the quality or attribute of the data. Like we want to know that how many people in this class are engineers, or how many people in this class are architects, or many people in this class are postgraduates. So we have identified a particular quality of people, quality of data, and based on that particular quality we are trying to classify the data. In the first example, we are classifying the data based on a particular quality, that how many are male, how many are female. So that is an example of qualitative classification. And last is a quantitative classification. In quantitative classification, what we do is based on the quantity, that how many of them are above 60 years. So based on particular quantity, we are means how many companies are having a turnover of more than 50 crores. So based on a particular quantity, we are classifying the data. So this is the first step of statistical analysis, because once we classify the data, once we arrange the data, we are able to make a meaningful conclusion out of it and use for decision making. Any question about data classification? No, sir. No, sir. Can someone give any other example of qualitative classification? Liking a product, Yes. like you give review, Google review or whatever, that is also qualitative. Like, Sorry, I dislike. could not listen you Yeah, properly. There is some audio disturbance. yeah. There is you like a product or you like a service, say a hotel or a restaurant, and you give some review. You like it or dislike it, dislike it. Yes. Very good example. So based on that, the restaurant or the hotel will be able to find out, and it could be like a category of 5-star rating. So how many have given the first 1-star rating, how many have given the 2-star rating, 3-star rating. So based on that percentage, you might understand that what is actually the quality of that hotel. So or it could be how many of them are liked or how many are not liking it. So they generally ask that would you refer our hotel to your friends and relatives, or did you had a good time here. So those start, because if you have a bundle of 1,000 forms, you want able to figure out means whether it is good or not. But once somebody enter all that information into computer and then it is classified in this manner, then the management can find out whether the team is performing better well, or and the guests are satisfied, or if the team is not performing well and most of the guests are not satisfied. Of course there would be few people who will be dissatisfied, but the total data will definitely give us a meaningful conclusions. So sometimes the data is represented in a tabular form that we have seen in the previous example, but sometimes the tabular form is still not very easy to understand, and we try to represent the data in a graphical form to make it easier to understand. So basically the graphics is another way of analyzing the numerical data. A graph is a sort of chart through which statistical data are represented in the form of lines or curves down across the coordinated point on its surface. So what happens, like in this particular case, if I make a graph of profits, so year on year basis, suppose it is started with 72, then it goes 85, then it goes 92, then it goes to 96, then the graph goes a little down to 95. So that trend by way of a chart
is very attractive to eyes, and more it's easier to understand. Likewise, a bar chart can be prepared for this production of food grains of different states, so which can show immediately to your eyes that which one is longer, which one is having a high means big weight. So you will understand that okay, this state is doing better. So graphs enable us in studying the cause and effect relationship between two variables. A graph helps to measure the extent of change in one variable when another variable changes by a certain amount. So basically helps us in different ways. We will understand in the coming slides some of the graphs and uh, how they help us. Graphs are easy to understand and eye catching broadly. Anything that we can analyze by graph, we can also analyze by way of tables, but they are easy to understand and they are eye catching. Most of us would have made some kind of a graphical representation while making some presentation or something to the management, that is widely used. Next concept is frequency distributions. Uh, you might find that many of these concepts are a full concept in itself, but statistics is allocated 1 hour in this syllabus. So you might find that the speed is little faster, uh, and concepts might be different from each other, but at least you will understand all the principles of statistics and you would be able to use those principles in your working. And in case you want to know further details about any of these principles, you can of course do your research later, and there's a lot of material available. uh, Frequency distribution is another concept. What we do is, based on the frequency, we try to find out the conclusions. So in the previous example, as we understood from a hotel, that how many people are given the 5-star rating, or how many are giving the excellent rating or very good or good rating, and based on the percentage of people who are giving the excellent rating or very good rating, we are analyzing that how good the hotel is or not. So many of us use ratings on TripAdvisor or Trivago before we try to search for a hotel when we go outside, and that uses the similar statistical techniques. It uses the frequency distributions, and like for example, if we want to know whether our country literacy is improved or not, so we can find out how many people are illiterate today and how many people were illiterate 1 year back, 2 year, 3 year, 4 year back. And based on the frequency of that particular attribute, we might derive conclusions. So frequency distribution is an overview of all distinct values in some variable and the number of times they occur. So in frequency distribution, it is always the number of times they occur. Means how many number of guests have given this kind of a rating, how many people are there in the room who have this kind of an attribute, how many people are postgraduate. So based on a particular quality, we try to find out the number of frequencies, how many are there. So in this particular example, we know that 22% of people are saying that this course is good. So if there was a survey of about some course, so 41 people said that it is very good, 93 people said that it is good, 42 said that okay, and 7 people said that it is bad. So which gives an understanding that 22% are saying it is very good. And if we add 22 plus 50.8, so we get 73.2% people who are satisfied with the course. They are either saying good or very good. And if we add the number of neutral people also, we get 96.2%. So which means only 3.8% people are not satisfied. Other people are either fully satisfied or they are somehow at least to some extent they are satisfied. So based on these distributions, we can identify the effectiveness of that particular course. Like for example, after these sessions, you might be asked to give a feedback about the faculty or the information, and based on the information that you provide, the management or the RVO would understand how effective that faculty was, and they use this technique to identify.
Any question on frequency distribution? Next concept is measures of central tendency. A measure of central tendency is a summary statistic that represents the center point or typical value of a data set. These measures indicate where most values in a distribution fall and are also referred as the central location of a distribution. You can think of it as the tendency of data to cluster around a middle value. In statistics, the three most common measures of central tendency are the mean, median, and mode. Each of these measures calculate the location of central point using a different method. I'll just explain it by way of an example. So many of you would have seen that every company uses an attendance taking machine in their office. And if suppose they are trying to analyze the attendance of one employee or maybe a group of employees, so they will collect the data and they will put it into a frequency distribution table. So in this table, they will say that if 10 o'clock is the office reporting time, so 10 o'clock, how many times? After 10 o'clock up till 05, how many times? Between 10:05 to 10:15 means you are creating a table which says uh, 15-20 minutes, half an hour before or half an hour after, and you are making a table of 5 minutes interval each. So where do you think the maximum time the employee would be coming? So 10 o'clock. 10 o'clock is the time, attendance time. They have to reach 10 o'clock, and we are creating a table as to means between 9:55 to o'clock, 9:50 to 9:55, 9:45 to 9:50, and then 10:05 to 10 is this kind of. So in most of the cases, the middle location is the place where you would find that most of the occurrence will occur. So what will happen, because employee know that 10 o'clock is the office time, he will always attempt to reach at 10 o'clock. So in most of the cases, there are of course exceptions are there. In most of the cases, he is attempting to reach at 10 o'clock. Most of the times he would be coming to the office would be around 10 o'clock. So there would be less number of frequencies which are like 10:30 or 11 o'clock, because only on a day when he has some urgency or only on a day when there is a heavy traffic in the market, he would be coming so late. And obviously when the office time is 10 o'clock, he will not be coming 9 o'clock, 9:15. So he will not be trying to come too early also. So generally we try to find out what is the central tendency. So if the central tendency for that particular employee means the frequencies of that particular time would be the highest. And of course, since he cannot plan so well, sometimes he would be coming 10:05, sometimes he would be coming 9:55, and then sometimes he might be coming 10 minutes before 10. He might be coming 10 minutes after 10. So as the time, the variation from the central target point goes off, the number of frequency will also go down. So ultimately it might be that before 90 he never came, or after 10:30 only came one or twice, right? So that shows us the central tendency of that particular data. So I'll just give you an example. But now in a particular case, if the central tendency is this kind of a pattern, which shows that 10 o'clock se pehle to he never came, and always between these times, and then also in these cases also, as we go off the central point, the record shows lower values. It could be used in various places. Like for example, I want to know the uh, uh, in case of suppose some product is getting manufactured.
and a particular material is supposed to be consumed for 200 grams only per unit, and we are concerned about whether the material is getting wasted or not, and we try to create a statistical table about 100 units as to how much material was consumed in those 100 units, and the standard is 200. So ideally in most of the cases, it if it is a fully automatic process, it might be that you get a very accurate figure. But if the process is faulty, you might find that in some of the products it is 210, 220, 230. In some of the products it might be 190, 120, 180. But in case in all the products it is lower, then the central tendency means the target wrong. So the measure of central tendency help us in deriving various results. And generally what do we use? We use mean, which is the simple average. Simple average means we sum up the value of all the records and we divide by the number of units, so we get the average. We use the median is the middle value, and we use the mode is the value which gets the highest occurrence. Any confusion in here? Any doubt? No. Clear hai? सर ये Yes. मीन कहाँ मीन Can someone yes सर वन yes डाउट एक्चुअली ये मीन yes please. कहाँ यूज होता है और मीडियन कहाँ यूज होता है बिकॉज दोनों के बीच कंफ्यूजन जिंदगी भर रहा है Okay, sir, actually क्या होता है कि in many of the case mean might give you the best results, but in some of the cases median might give you a better result. And sometimes we use the mean, but we use median and mode for uh, uh, as a control to cross check whether we are doing it correct or not. So I'll just give you an example that if there are 30 people is in a room, and we want to know how is the average income of the people in this room, because based on the average income of this room I want to pitch an investment product, right? So I am an investment advisor and I enter this room and I try to pitch for a product. So obviously the product that I am going to pitch for people having an income of 10 lakh rupees is going to be different than the product that I'm to pitch for the people who have the 1 crore of income. So I try to find out what is the average income of this room. So I just add the income of all the people and I divide by the number of people. I get the average income. But it might be possible that only 3-4 people here are having a very heavy income. So most of the people are actually having an income of 10 lakh rupees, 10, 20, 10, between 10 to 20. But out of 30 people, there are 2 people who are having an income of 20 crore each. So will the mean give you the right result? No, no. So because of the presence of some outliers, we call it outliers in statistics because they represent the whole population. And because of the presence of those outliers, you might get a very incorrect mean. And you might conclude that, okay, these people are having an average income of 80 lakh rupees and I should pitch for this kind of a product. And actually, no one is interested in that product because the mean gave you the wrong result. Whereas if you used median in this particular case, you might get a better result because you just sort the population in ascending order and then you will find the middle value. So it would be much closer the value that you are looking at. Likewise, you might be using mode also, and you find out how many people, how much income group is actually getting most of, and that might help you to target your audience. But in a different situation, it might be different. In case the population is evenly distributed and there are no outliers, then mean give you a better indication of the attributes of the population. So we always try to use mean unless it is giving us incorrect results, right? Yeah, yeah.
It's a good example Yes. to understand. Thank you. Thank you. So elementary theory of probability. Elementary probability theory is that part of probability which deals with probabilities of only a finite number of events. We can't actually chart out the probabilities of infinite number of events. So we try to find out finite number of events and try to find out the probability. A probability distribution is a table or equation that links each outcome of a statistical experiment with its probability of occurrence. So what happens in case here, in this case, we have the actual results. But here, what we are trying to do is we are finding out a sample of the whole population. We are doing a statistical experiment. And by way of statistical experiment, we are trying to find out the probability of the whole population. So for example, here, if we have done the survey of one hotel and the guest of that hotel, we don't know what the other guest will look at. But sorry, in this example, we have done the survey of all the guests of that hotel. So our results are very having more accuracy. So the probability is very high. But in some of the cases, the sample size is so big that I cannot actually check the frequency of the whole sample. Like for example, if elections are going on and before the election, the news channels want to show an exit poll. So in that exit poll, of course, they people cannot actually do a survey of all the electorates. So if there are 130 crore people in India, out of which I don't know how many are adults, but there is will be a big number who will be voting for an election, and news channels not actually interview each one of them. If they interview each one of them, then they will get this final figures. But since they are not interviewing each one of them, they are trying to find out a sample. And based on the attributes of the sample, by way of that statistical experiment, they try to find out the probability distribution for the whole population. Right? So that is the theory of probability. So how to do that? They try to do a sampling. So by doing a sampling, they are able to find out the attributes of the whole population. So I'll just give you an example. Like in a room, there are 100 people. And out of 100 people, I want to know how much is the average income of that particular room. And I want to do it quick. So if I do not have time to actually ask each one of them and take 100% sample and then do the draw the conclusion, what I will do, I might ask 10 people, and based on the feedback of 10 people or how much income that they are telling, might draw a conclusion that I randomly chosen 10 people and they were earning this much. So I understand that probably this room is full of people who are having an income of this much. So by using a random sample means each one of the people was having a equal chance of picking up, and based means anyone could be picked up, and based on that we have drawn a conclusion. Or for example, in a particular school, we want to know how many of them like football, and we just put a random sample of in a hall, we just pick up 100 people and randomly, and then we decide that based on the probability of this random sample, this is the conclusion. Then the whole population, we can attribute the same quality to the whole population. So of course we is it going to be 100% accurate? No. Of course it is not going to be 100% accurate, but in many of the situations it is useful. And since there is no the effort to actually do this analysis
of the whole population might not be in proportionate to the benefit that you are going to get. So for that purpose, you might want to use the sampling. In audit also we do that. So for example, if I want to check the accounting of a company for the whole year, I cannot check each and every transaction that they have done for the whole year. So in auditing also, we try to choose some sample. And if we have, like for example, if the company has purchased machine for 10,000 times, and I have randomly picked up 100 invoices, and I found that everything was proper, everything was perfect. So I may draw a conclusion that uh, maybe the other one also correct, because I have chosen randomly. So the higher is the sample size, the higher is the probability of the accuracy of the conclusion that we draw. At the same time, sometimes it might happen that by choosing a random sample, we might make mistakes. Uh, so can someone give an example that by choosing an absolutely random sample, we might make a mistake? So, sir, suppose Without any planning. yeah. So Yes. let's say suppose there is a bag of apples, bag containing 20 Yes. apples, and Yes. 80% of them are small size, and Yes. 20% of them are large size, and they are in a bag in a large sack. Now, if I put my Yes. hand deeper without doing a proper mixture of that sample, if I put my hand deeper and try to pick out 10 random samples, I will be most probably getting the larger ones. Mm-hmm. So that may give me a wrong sample. Okay. I understood your example, but I'll just give you a better example here. So, for example, if imagine there is an assembly hall of a school, there are 1,000 kids standing in the assembly hall, and if we are randomly choosing students out of that sample, 1,000 people, are we going to have the equal chance of choosing students out of every class, because we are choosing random samples? Yes. It might happen that we might not choose students out of any particular class because we are just choosing randoms. It might happen that we might choose more of a male students instead of female students. It might happen because we are choosing the sample randomly. So in this particular case, we might miss some of the sample altogether. Another example, if I'm doing audit of a company and I'm choosing the vouchers randomly, so it might happen that a particular nature of pens is altogether not chosen for sampling because I'm choosing randomly. So instead of choosing the sample completely random, sometimes what we try, we do some planning first. We say that, okay, first of all, let me plan what kind of sample is this. And then we classify the sample and try to use, try to find, pick up sample in a manner that each one category at least gets picked up. So even though you are again using a random sampling, but you are creating in a manner that at least every particular category gets represented. It should not be that one category gets represented more, Sir, right? in case of exit polls survey, Sorry, sir, your voice is not so exit clear poll, to me. exit poll survey, which type of sampling is there? Random or Uh, stratified? किस केस में सर? Exit poll survey, election, अच्छा election. सर, हाँ, सो एग्जिट पोल में भी सर वो रैंडम नहीं करते हैं, क्योंकि वो क्या करेंगे, दे विल गो टू विलेजेस, दे विल गो टू अर्बन प्लेसेस,
they will go to different places, and then between those places it is a random sampling. So it is a stratified random sampling. Stratified, yes. Otherwise what will happen, they might choose all the places out of a one particular state, and they will say that, look, this is going to become the prime minister. And it might happen that in UP somebody was having a big lead, but in all others he was not having a lead. So by just having a absolutely random sample, they might not draw a proper conclusion. But Okay, sir. there might be some bias because different news results are different. So can't go into that. But definitely it has stratified is an improvement of a random sampling basically. So in accounting, what we do, we will say that out of machinery purchase, at least 10 vouchers I will choose. Out of furniture purchase also I will choose 10 vouchers. Out of freight expense also I will choose this much, so that I am making sure that no particular expense gets missed out, or no particular period gets missed out. So in that way, even though the sampling among those periods is random, but we are not making sure that, for example, if I choose perfectly random sampling and in a particular month the accountant was on leave, and on that particular month there was a lot of mistakes, and by any chance we only chosen 5-6 sample of that particular month, and we have drawn a conclusion out of 1000 vouchers we have chosen, only 5 have a mistake, which means that everything is okay. But if we would have chosen it in a classified way, we might understood that, okay, in that particular month out of 20 sample, all of them had a problem, so which means that January month has a problem. So stratified random sampling always give you a improved results. So sampling distribution represents the distribution of statistics for a particular sample. For example, a sampling distribution of the mean indicates the frequency which is specific occur. This means that the frequency of values is mapped out. You can also create a distribution of other statistics like variance. Below is an example of sampling distribution for the mean. So in this particular case, generally it results like a mountain, because most of the cases the frequency at the middle point is generally higher. There are more number of instances towards the middle. That happens with most of the statistical data. Next is regression and correlation. That is a concept. So what we try to do is, in correlation, basically we try to analyze the association or absence of relationship between two variables x and y. So we are trying to know that is there any relation between the age and happiness of people? Is there any relation between age and earning of people? Is there any relation between qualification and earning of people? Is there any relation between, means any two attributes? Higher the attribute of one, how does it affect the attribute of y? So we chart out different sampling, like if there is a means age of 20 years, this is the earning. Age 21 years, this is the earning. So basically we know that there is some kind of a relation between these two attributes. Those two are different attributes, but there is some kind of a relation. We have identified that the more is the age, the more is the earning. But we are not able to find out the value of the other attributes based on the value of first attributes. So for example, even though I know that with the increase in age, the earning also increase, and thereafter before the age of retirement, with further increase in age, the earning decreases. So I know the relationship between these two variables, but if I know one variable, I cannot answer the other variable. I know that the person who is of the age of 21 might be earning less than the person who is of the age of 30 years. And who is of the age of 60 years might be earning less. But if you ask me that I give you the first figure, you give me the second result.
So if I tell you 30 years age, then you tell me the earning. That's not possible, because we cannot compute the value of the other variables based on the value of the first variable. So that is called correlation. It's already 12 o'clock. I planned it to finish it in 1 hour, so I will finish it in another 15 minutes. So that is the correlation. On the other end, regression analysis predicts the value of dependent variable based on the known value of independent variable. So in regression, one variable is dependent on the other variable. So in that case, we know in advance that if one variable is this much, then the other variable is likely to be this much. So if we know that the average exchange rate between dollar and INR is this much only, so we have defined a dependency of these two variables. So if I have the figure of Indian rupees, then I would know how much is likely to be the figure of equivalent US dollars. So we understand in this particular case, we can find out the value of the figure based on the known value of the first figure. So that is called regression analysis. Any question? Can you explain more by taking example independent variable? Sorry, sir, your voice is breaking and I could not understand. Independent variable. Can you Would please it be explain possible what? for you to write in the chat? Okay, sir. I'll appreciate, because somehow the voice is echoing. Can you explain independent variable by example? So, sir, I gave you an example that there might be a relationship between age and the earning of a person, or but we cannot calculate the earning of a person by knowing the age. So they two are independent variable. They have some relationship with each other. Likewise, the qualification and earning are two independent variable. They have a relationship with each other. Means the more qualified a person is, the more earning he might be having. So there might be, like, for example, if you want to know the frequency of person making a foreign trip or vacation based on the earning of that person, so they two are different variables. Okay, you are asking about the regression. In regression analysis, we know the dependency or of one variable to the other variable. So by knowing one variable, you might be able to find out the average value of the other variable. So I gave you an example that, for example, INR to US dollar. So if INR, if US dollar is $1, how much INR I have to pay to obtain, to buy that $1? So it might be 74, 75, 76 at different point of time I have created. So by knowing the value of one variable, might be able to know the value of the other variable. So in this particular case, I know in advance the value of the, I can compute the estimated value of the other variable by knowing the value of one variable. Okay, thank you. Next is a time series analysis. Time series analysis is a statistical technique, deals with time series data or trend analysis. Time series data means
that data is in a series of a particular time period or intervals. The data is considered in three types. Time series data, a set of observations on the values that a variable takes at different times. So we might say that in 2001 we had a turnover of this much, 2002 this much, 2000 this much. So at different point of time we had a different turnover. So based on the time series we are able to analyze whether we are growing or we are not growing. So means GDP, if we chart out the GDP of our country year wise, we are able to analyze whether our economy is growing or in which year it was growing faster. So time series is basically analysis of data based on the time attributes. In case of cross sectional data, what we do is at one point of time we try to analyze the data of different sections. So we might say that in 2018 the turnover of this particular product was this much, and turnover of B product was this much, and C product was this much. So there are different sections, there are different variables, and for a particular point of time we are trying to identify their values. In pooled data, what we do, we club time series data and cross sectional data. So what we say is in 2010 division A turnover was this much, division B turnover was this much, division C turnover was this much. 2011 division A this much, B this much, C this much. So we are making a table of time series also across different sections also. So, and we to derive some conclusions. Any question on time series analysis? No, sir. No. Okay, so next concept is index numbers. So index numbers are used to derive some conclusions. Sorry, pool data एक बार बता दीजिए सर. What is pool data? क्या एक बारी बता दें? Pool data जो third point था ना. Pooled data. So basically it is a combination of time series and cross sectional. So it is a combination of both of them. So we are saying that in 2010 my turnover from division A was this much, B division turnover was this much, and C division was this much, and then next year much of three different divisions. So we are talking about cross sections also, division A, division B, division C, and we are talking about different time also. So it's a time series and cross sectional, it's a combination of both of them. Is it clear, sir, now? Right. Thank you. Okay, thank you. So next concept is index numbers. So index number, one of the most popular example is like Sensex or Nifty values that we get, and we derive some conclusions out of it, that whether our stock market is moving in which direction. So suppose the price of a commodity changes from 100 to 120, and then from 120 to 180. Here, just by looking at this information, we can tell that the prices has hiked by 20% and 80% respectively. With respect to the initial price, it is situations like these or even more complex ones where the index numbers come in handy. An index number helps in the calculation of percentage change in a phenomena with respect to a base parameter. So we have a base parameter, and then based on the what are the changes in that particular sample, based on the base parameter we derive the index. So for example, in BSE Sensex, a number of shares were chosen to form a Sensex, and the market cap of those companies was taken at a particular date, and based on the changes in the market cap of those companies, the index was built. So the base was taken as 100, and every change was the index was formed. And today we have a Sensex in front of us. Likewise, Nifty was also constructed. Another examples could be wholesale price index or any other index, and the percentage change in those index are actually calculated. So I just give you an example. Like for example, our country Sensex is 38,000, and
there might be another country whose Sensex is into lakhs. So by looking at that number, can we conclude that since that Sensex is into lakh and we are into thousands, so they are a more developed country? No, sir. Anybody else has an answer offer? Any perspective? No, no. No, sir, no. So consensus is no, because the index, the way it is constructed, it also depends on which year you have started your index and at what value the index was started. So index only tells us the relative change in terms of percentage. It doesn't tell us the absolute figures. So we cannot tell. So for example, Nifty was actually implemented later than Sensex. So that is why the Nifty numbers are the value of T is much lesser than the Sensex, but they both are actually a barometer of the same market, the Indian stock market. So by looking at the index numbers, only we are able to analyze the relative growth. We are not able to analyze the size of the market. Many a times you would observe that people will say that our Sensex is only this much and that country US they are this much, so we are they are bigger. So they might be bigger in other sense, but the conclusion drawn on the basis of the value of index is incorrect, because the index is created based on a particular period. If I try to create a new index today, its value will start from 100 today, so its value might be much lower. So because it always gives us the relative figures. Any question on index? No question. Right. So this is all. I am almost on time. It's 12:15 only. Any question you have about any of the topic that we discussed today, I'll be happy to take up. Okay, thank you very much. You had my contact details on the presentation, and I will share this presentation with you all. And थैंक यू सर. thank you all for participating. हाँ, सभी पार्टिसिपेंट्स को प्रेजेंटेशंस हमारी तरफ से मिल जाएंगी राजू जी से कलेक्ट करके. इनके मोबाइल नंबर, एड्रेस, कॉन्टेक्ट सारी डिटेल्स आपके पास अवेलेबल रहेंगी. ऑलरेडी ही इज इन द ग्रुप इटसेल्फ. तो सब नंबर अभी भी सेव कर सकते हैं, अदरवाइज वी विल प्रोवाइड यू एनी टाइम. हमारे साथ में प्रीति गर्ग जी भी जुड़ चुकी हैं. शी इज ए कंपनी सेक्रेटरी एज वेल एज एडवोकेट. राजू जी आप तो शायद परिचित होंगे प्रीति जी से भी. प्रीति फुल नेम? प्रीति गर्ग. सर मैंने नाम बहुत सुना है, लेकिन फेस टू फेस शायद आज ही मुलाकात हुई है ऑनलाइन. चलो हमारे आने की वजह से दो फैकल्टीज आपस में भी मिली. राइट. राजू जी हमारे कंटिन्यूअस स्पीकर चल रहे हैं और प्रीति मैडम भी हमारे हर बैच में स्पीकर्स हैं. कोई ना कोई चैप्टर जनरल उसका ले रही हैं. तो मैडम अब आपका सेशन स्टार्ट है. आप एज ए प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हो गई हैं, अदरवाइज फेलो मेंबर ऑफ द कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया एज वेल एंड रजिस्टर्ड वैल्यूअर एज वेल. रजिस्टर्ड वैल्यूअर जिस दिन हमारी क्लास चल रही थी, मैंने क्लास ली थी, उसी दिन मैडम ने एग्जाम पास किया था जब इनकी सेकंड क्लास थी. ओके. हाँ, जो मेरे को याद है, क्योंकि अब मैं भी काउंसिल मेंबर हूँ, तो इसलिए सारा काम याददाश्ती के ऊपर ही चलता है मेरा तो इलेक्शन का, अदरवाइज तो. So thank you राजू जी and welcome प्रीति जी. Thank you sir. राजीव सर, आपका नाम दिव्या ज्योति से मैंने बहुत सुना हुआ है. अच्छा ओके. हाँ, वहाँ काफी क्लासेस मैंने ली हैं. हाँ, वहाँ से काफी सुना है मैम से. आपका नाम सरिता मैम है ना वहाँ पे? Yes. Okay. Thanks. Nice to get connected. Okay, sir. Thank you. So you can change the host, and I will then disconnect. I guess if I remain the host and I disconnect, then everybody will get disconnected. Now Preeti madam is the host. Yes. Okay. Thank you, sir. Thank you.
Thank you, sir. तो अब जनरल लॉज का टॉपिक है जो मैडम लेंगी। हमारी सारी एसेट्स क्लास में लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एज वेल एज सिक्योरिटीज के अंदर भी मैडम जनरल लॉज लेती हैं। मैडम इसमें हमारे साथ 10 लैंड एंड बिल्डिंग के वैल्यूअर्स हैं और 3 प्लांट एंड मशीनरी के, बीइंग इट इज कॉमन टॉपिक। हाँ, तो So law is altogether different, right? Before starting with, I will give you my, sir has already introduced me, so I am introducing myself in the form of screen share basically, right? Just give me 1 minute. Just give me 1 minute. I'm sharing the screen. Please let me know, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Yes. Yes. Okay, fine. Just a minute. Yeah, right. So, sir has already introduced me. It's my brief introduction. I am an advocate. I did my CS in 2001 and law from Delhi University in 2006. I became RV in 2019. That's why, because I was being motivated to enroll and get this exam clear. I am in association with this registered valuer ICSI since ICSI started this RV. Right? So I knew about it a lot, and as far as you are concerned, I believe in the sections that you are not aware of laws basically. What is the meaning of law? Can you let me know? What is exactly law? What do we understand by law? Rules. Legal binding. Set of rules. Set of rules and regulations. Okay. Can everyone make laws? Which laws are applicable to us? No. So we follow which laws? Who enact laws for us? Constitution of India we follow. Parliament enact laws. Constitution of Parliament India. enact at the level of center, and at the Legislatures. level of state, it is enacted by Assemblies. State legislature. Legislative Assembly. State Legislative Assembly, right? Okay, great. So I am going, you must have read a part of it of the constitutions and all. I am going to take up the second part of your general laws, that is in point 3. Have you gone through your syllabus? No. Okay, then my request to all of you is first download your syllabus from IBBI site, the latest one, because it says all the updation up to 28 February 2020 will be part of your exam, right? Next, I am going to tell you, just go through the syllabus and see the marking system. The basic thing in this exam is we are all professionals. We have gone ahead in our life, and then we are again studying for exam just like a student. So be a student. When you are attempting this exam, be a student, because what happened when I am attempting this exam, what I will do, oh, I don't know, 1, 2, 3, so I will lose patience. It's some hard to our professional ego also, but don't do this. I have to get 60 marks.
See, this philosophy is recently being followed by someone also in the exam. I have to get 60 marks, even if I don't know 5, 6 questions, it doesn't make a difference. The thing is, because after 4 or 5 or 6, I will know it. It's definite if I have read it. So just be it, don't lose patience while you are attempting the exam, and prepare everything according to the syllabus. That will be part of your exam only. I'm going to take up your part third, that is general laws. A part of it you have covered in your constitutions and all, and remaining part I am going to cover it up, right? And whatever part you think of, don't think that it is going out of your part, because every part is 2 out of 100, 4 out of 100. Every chapter is like this. So we cannot leave it. Just focus on those points which are easy and in which you are 100% sure you will clear it. Focus on those, and as far as these topics are concerned, these slides which I am going to present are more than sufficient. So if there is any query, you are most welcome to ask. I am going to start with this. First of all, I am going to start with your registered valuer. Can you tell me what is registered valuer? Who is called registered valuer? What are the requirements for becoming a registered valuer? Have you gone through it? Should have cleared valuation. Why are you doing this registered valuer? Who has recommended you? Why are we appearing for this exam? Why do we want this degree? We want this qualification basically because there has been change in the Companies Act in 2017, which has required it now valuation should be done by registered valuer. And who is registered valuer? It is defined in my section 247 of the Companies Act 2000. Whichever law is being passed by the parliament legislature and is being signed by the president in case of central act, it is known as act. Like so, for the companies, we have Companies Act 2013, where a section 247 has been inserted, which have provided who is a registered valuer, how can you become a registered valuer, who can how can you make a registered valuer organization, what are the functions you are supposed to do, what are the safeguards you should have, because now RV is a full-fledged profession and it is going to grow at a tremendous speed, because a new bill is going to be proposed which will make it a separate independent profession, just like other professions, right? So first of all is my registered valuer. I have to value which. If I go through the balance sheet of the company, I have to value properties, I have to value stock. But because I am only plant and machinery and land and building, I do this if it is a land and building, then I will value if it is machinery. So Ma'am, there is a problem in your network. Voice break हो रहा है. Yeah, voice नहीं आ रहा है. sorry, connection was disrupted. I'm again sharing. So
So what it is, how can I become a registered valuer? Just apply it in your way, that there is a minimum qualification that you are supposed to have. Then you would have got registered yourself with RVO, like All India RVO. And there, after registration, you will be called member of your RVO, where you have to, you must have qualifications in B, your engineering degree or plant engineering degree, then an experience of 3 years in case of graduate, and in case of 5 years in case of graduate, and 3 years in case you are having a postgraduate qualification. And then you have to cover up these 50 hours training, and then you will appear for your exam. Once you will clear the exam, you will be called a registered valuer. Who will appoint you? This is this is for your MCQ. Please, this yellow highlights are for your MCQ. Registered valuer is appointed by whom? He is appointed by the audit committee, or if there is no audit committee in the company, then by the board of directors. So market, this is MCQ that used to come from the registered valuer. And believe me, from this registered valuer, because this is an exam of registered valuer. That's why this registered valuer section as well as rules are important. They used to give 3-4 marks, sometimes 3-4 questions also on it, and they are easy to be answered. So the valuer, whoever will be appointed, he has to give an impartial, true and fair valuation. I can remember it from ITF. If it will come in my MCQ, they may miss any of the word, either the impartial, true or fair. So I have to remember this ITF for my MCQ. I am telling everything from your exam viewpoint, right? Make an impartial, true and fair valuation of assets, whichever will be required to be valued. You shall exercise due diligence. Next MCQ, you shall exercise due diligence while performing functions as a valuer, and the valuation shall be in accordance with the rules. Which rules? This is given in rule number 18. The valuer shall not undertake valuation of any asset in which he has a direct or indirect interest. This I am going to clarify from this. See, you are supposed to value any particular land or building or any plant or machinery, and your valuation, you are getting an appointment on 30th June, and this valuation you submit the report ending on 31st July 2019, right? If this is the case, then you should not be interested in that particular asset, in that particular building, because if you will have interest, you will give a lower valuation to it. Or you may have you should not have an interest in that particular asset which you are going to value in next 3 years also. This is what is the limitation in the past 3 years from the date you are appointed, and 3 years subsequent to the date you have submitted your valuation report. You should have neither the direct interest nor the indirect interest. Direct interest means you should not have direct. Indirect means through some other relative, through some other concern through which you are going to get benefit. So neither there should be direct nor there should be indirect interest. If you contravene the provisions of this section, say you don't get, then you are not appointed by the audit committee, you got this valuation from some contact, but you didn't ask for your appointment letter by the audit committee, and you submit the valuation report. This is what you are violating this. You are violating this or this, then there is a fine of 20, that could be there from 25,000 to 1 lakh. And if in submitting this report there is an intention to defraud the company or its member, then this imprisonment is at least of 1 year. And then there is a fine that could go from 1 lakh to 5 lakh. See, wherever is the fraud element, this goes, this is always there, imprisonment will always be there.
and fine will be multiple, right? So please remember this penalty also. Whenever any registered valuer is submitting any valuation report with an intention to defraud, then he has to refer, apart from this, he has to refund the remuneration whichever is received by him and pay for the damages to the company or to any other person whosoever incur loss because of your misleading or fraudulent valuation report. This is what is your section 247, which in nutshell prescribe who can become a registered valuer and what is expected, and if it doesn't fulfill, what are the penalties that would be there. The next MCQ is, see, in this section 247 of our registered valuer, central government has given all the powers to IBI. Right now, the powers with the IBI. MCQ is section 247, to whom the powers has been delegated by central government. It is a ministry, MCA, Ministry of Corporate Affairs. It is IBBI, or they will give two other options also. So this is IBBI is the correct choice. My rule says asset class means a distinct group of assets. Land and building is a distinct group. Plant and machinery is a distinct group because they are displaying some similar characteristics. Whenever a registered valuer organization like All India organization, IOF is there, the certificate of recognition, they get certificate of recognition from IBBI. But we get a certificate of registration. We don't get certificate of recognition. This is for RVOs. For RV, for registered valuer, it is certificate of registration. So what are the educational qualifications of who can become a registered valuer? A person, they have given in the two forms, an individual can become a registered valuer. There can be a partnership firm who can become a registered valuer. There can be a company also which can function as a registered valuer. Now how? They have said if a person, an individual wants to function as a registered valuer, in that case, he should be a valuer member of RVO. The day you have got yourself registered in this RVO, you became and you will complete your 50 hours, you will get a certificate of membership from this RVO, All India RVO, and then you will become a valuer member. Now, once you will clear the exam, your RVO will recommend to IBBI that you should be registered as a registered valuer. Second thing, but when will it recommend? Your RVO will recommend only when you clear the valuation exam within 3 years. Within 3 years, the date you get your membership, registered valuer, you become a valuer member. Within 3 years, you have to clear this exam. Only then you could be recommended to become a registered valuer. Then you should possess the qualifications and experience. I am going to tell you. You should not be a minor, not of unsound mind, not undischarged bankrupt. The MCQ is on person resident in India. You should be a person resident in India according to FEMA. See, they confuse, you should be a person resident in India according to Income Tax Act or according to FEMA. You will click the correct choices according to FEMA, which says you should stay for at least 183 days in India. Your stay in India should be of at least 183 days, right? Then there are things, because registered valuer and every profession is very, it has responsibility for the society.
and it has financial responsibilities also. So they say you should not be convicted for an offense for which there is a punishment of 6 months or more, or there is an offense involving moral turpitude. Even if there is any one person has been imprisonment for 6 months or for a moral turpitude, he can become a registered valuer. He can be eligible to become a registered valuer after a period of 5 years from the date his punishment is expired. But at any time, if a person is sentenced to imprisonment for 7 years, then he can never become a registered valuer. So another MCQ is for this 7 years or more. There will not be any penalty under the Income Tax Act for filing a false report by the CA, or if there is a false report, there should not be any appeal with the appellate tribunal. Say somebody has given a false report, there is an appeal that is pending. Even if it is not pending, finally it is declared, yes, this is a false report, this is a fraudulent report, then a penalty is levied. After a period of 5 years, that person can become eligible to be appointed as a registered valuer. Right? And be a fit and proper person. Please see, this is a very prominent word everywhere. And proper person. What is the meaning of fit and proper person? Physically fit, mentally sound. Okay, mentally sound, they have given it. Now they have given the 3 criteria for this fit and sound: integrity, reputation, and character. I have written it as IRC because that could be one of your MCQ. Missing anything, either the integrity, reputation, or character. There should be no conviction. Conviction means he should not. See, there is a difference between allegation and conviction. Allegation means there are some charges against a person, and when these charges are proved and he is subject to some penalty or imprisonment, we say he is being convicted. So fit and proper person means there is no conviction, he is not undergoing any penalty or imprisonment, there is no restraint order which is to perform. Somebody has done something wrong in his passport. Yes, you cannot leave here, you cannot abscond. Like Reza Chakravarti's case is going on. She cannot abscond. So there should not be any. कौन बोल रहे हैं सर? हाँ जी बताइए. मुझे ना एक्चुअली आपकी आवाज है. अरुण जी ने नंबर दिया था, किसने दिया था? अच्छा हाँ, अभिनव जी ने. हाँ जी सर समझ गया मैं. हाँ जी मैं समझ गया. वो उसके लिए प्लाज्मा के लिए. पवन जी प्लीज स्विच ऑफ योर माइक. मेरे ख्याल में वो पेशेंट शायद सर्वाइव नहीं कर पाए. ऑफ योर माइक. हाँ, क्योंकि कल मेरी उनसे शाम को बात हुई थी, तो वो कह रहे थे कि जी अब. पवन जी प्लीज म्यूट. पवन सर नहीं हुई थी. वो कहते बस हमें वेंटिलेटर हटाना है. उसके लिए बात कर रहे थे कि परमिशन दे दो तो वेंटिलेटर हटा दें. पवन जी प्लीज म्यूट योरसेल्फ. सर्वोदय हॉस्पिटल में थे फरीदाबाद में. हाँ जी 8 सेक्टर में. सर प्लीज आस्क हिम. फिर मैंने उनको इसलिए दोबारा, उन्होंने मुझे बोला था मॉर्निंग. हेलो पवन सर, क्या बात करोगे? फिर मैंने उनको दोबारा कॉल भी नहीं किया. मैम उनको आवाज ही नहीं जा रहा शायद. सर प्लीज म्यूट योरसेल्फ. हाँ जी. नहीं, वो तो उसमें वो रिकवर्ड पेशेंट का प्लाज्मा नहीं होता, बी पॉजिटिव पेशेंट का. पवन सर आप कोविड रिकवर्ड हैं क्या? सर प्लीज म्यूट योरसेल्फ. पवन जी नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब आपका हुआ था पॉजिटिव नेगेटिव रिपोर्ट, he doesn't listen you. विजय सर आप नेगेटिव का नहीं है. अगर आप कर सकते हैं तो नेगेटिव के बिना तो देते.
उनकी वो है क्राइटेरिया है कि जैसे अगर किसी को मैम आप start- रिमूव कर दो, इफ पॉसिबल रिमूव कर दो, देन ही विल ऑटोमेटिकली ज्वाइन. Okay, okay. I have done it. Okay, thank you. I mute him. So there, if there is a partnership firm or there is a company which means after clearing your exam, you want to work in association with someone in partnership, or you want to make a company and then work as a registered valuer, you can do so, provided, see, these are the things they are saying this should be in you if you want to work as an individual registered valuer. In case of partnership firm or company, they are telling it negatively that if these are the things, then you cannot set up a partnership entity or company doing the role of registered valuer. The object should be, if the object is other than rendering professional or financial service, means the partnership entity or company can only work for the valuation services and not for any other services. If it is a case of company, then it can be subsidiary of only one company. It can have only one holding company. Apart from that, it can have no other company in control of such company. The company should not be undergoing the insolvency or bankruptcy, क्योंकि जो खुद financially sound नहीं है, वो ऐसी financial network या report नहीं दे सकता. As far as partners or directors are concerned, they should fulfill this criteria which we have discussed in individual case. The partners and directors should be the registered valuers, and it is not necessary that all the partners or directors, like in case land, should be the valuer of only registered and land and building or plant and machinery. There could be a combination that there is registered valuer of land and building, plant and machinery, and securitized or financial assets. All these three streams, they can club together and form a partnership firm, or they can form a company. At least 3 director partners shall be registered valuer. And if you are going to value a land and building, then at least one partner or director should be registered valuer of land and building. If you are going to value plant and machinery in your firm or company, at least partner in case of partnership firm and director in case of company should be the registered valuer of plant and machinery. And what is the qualification required? In your case, what was the qualification required? Can you tell me in case of land and building, what was qualification required for applying for this? Post graduation or bachelor, graduation. Graduation minimum. Which particular stream? Civil architecture. Civil engineering. And Civil in and case of architecture plant and for machinery, Mechanical or electrical? electrical mechanical engineer. electrical engineering, right? And in case of secured or financial assets, it should be in financial degree like CA, CS, ICWA, or some postgraduate degrees in MBAs also. If it is a graduate, then experience required is 3 years. If it is a 5 years. And if it is a graduate, then it is 3 years. In case you are a member of some professional institute like CA, CS, or CMA, then only 3 years required. Who will conduct this valuation exam? Our exam will be conducted by IBBI. Syllabus will be made by IBBI. Whenever there is a change in syllabus, it will be on the website of IBBI at least 3 months before making change. At least 3 Hello, months ma'am. before making change. In your case, we can see that the syllabus was changed with effect from 1st June 2020. And the new syllabus was on the site on 28th Feb 2020. So there is a gap of 3 months in making change in the syllabus. An individual can appear for any number of time. Whenever you will appear in NISM site, you will, as soon as you will submit your exam,
it will give you automatically your result. And if you will be passed, you will get an acknowledgement on your mail ID also, acknowledgement there also, and then a proper mail will come to you that you have cleared this exam. And after that, you have to apply. Anji sir? Somebody is asking something? So No, how ma'am. will you apply for registration? If you are an individual and you want to work as an individual registered valuer, then there are the annexures with this particular rules. In this annexure 2, there are the forms specified. You have to apply in form A, please mark it, and with the fee of rupees 5,000. And this fee is non-refundable. If you want to make a partnership firm or a company to be registered as a registered valuer, then the form is form B and it is given with the fee of 10,000 rupees, which is non-refundable. What will IBBI do? This all submission will go to IBBI. Has to approve the application within 60 days. If your all things are correct, within 60 days the application is approved and a certificate of registration is granted in the form of Form C. Please remember these Form A for the individual, Form B for the firm, and certificate of registration is in Form C. While calculating this 60 days, some time period is excluded. Which time period? See, it may be that there are some deficiencies in our application and it usually happens. So they give 21 days to rectify the application, or they may require some other additional documents for the clarification. Might be you might not have attached the degree of your particular qualification and you have given only the mark sheet. So they will ask for the degree. There is a particular order in which my document should be attached, my PAN number should be there, my Aadhaar card should be there. So, and that should be in order. It's not that I can send it in any way. No, it should be in particular order that is being mentioned in the site in Form A. I have to give it in form. There may be some queries also with the IBBI when we submit the application, and they may ask for your personal presentation and they will give you another 21 days. Whatever time is taken, this will not be counted in 60 days. There may be a case that prima facie IBBI, it seems to IBBI that this is not a valid case. There are so gross deficiencies, so they should be rejected. This communication should be in 45 days. So that applicant is given next 15 days to clarify his position. If it is satisfied, authority will give the certificate of registration. If not, it will reject the application. Registered valuer shall conduct in according to Rule 18 valuation. Now, what are these internationally accepted valuation standards? So, this is one of the prominent question on the basis of which standards you are going to value. It is on the basis of international valuation standards or valuation standards adopted by RBO. Right now, ICAI has adopted this. So, you have to, generally the recommendation is going by the internationally accepted valuation standard. Right? So when you are going to prepare the report, I have to prepare my valuation report in the way that it will fully disclose all the inputs that I have got. If I have got the assistance of some other registered valuers or other professionals, that should be mentioned in my report. First of all, everyone should be aware of that the appointment letter to be from the audit committee, or if it is not the audit committee, then from a board of directors of the company. Don't negotiate on this. This is the first most requirement that should be in our hand as a registered valuer. In my valuation report, I will give the background information, historical information, why the asset to be valued. It is for the amalgamation, it is for the merger, or for the compromise, or for the takeover, or for the sale, or for liquidation.
who has appointed this should be mentioned. Then I have to give my own identity. Who am I? What are my qualifications, residence, PAN number, Aadhaar card and all, and of the other experts also. If there is any interest conflict there, it should be specifically mentioned in the report. When you are appointed, with respect to which date a particular asset has to be valued. See, this is very important because it is not that I can give valuation in respect of future date. I have to give the valuation in respect of right now, today's date or some past date. And that should be specifically mentioned. Along with that, the date on which I will sign, there is a date of report. So there are 3 dates that are mentioned and which are important: appointment, valuation, and the date of report. Inspection or investigations undertaken, whatever the information you have relied upon, which valuation standards you have followed, which valuation approach you have opted, and why have you not adopted the other approach, or whatever the weightage you have given to your market approach or to your asset approach, that should be specifically mentioned. And specifically mention in it that the report is given for this particular purpose, so this should be used only for major factors that are taken into account, conclusions, any particular you have confronted some problem, you have not got the proper informations, or you have relied on the public source, that should be specifically mentioned in the report. It should be clear-cut disclosure in the report, and it is very important. Whenever I'm going to say I'm going abroad, so that my period of stay is less than 183 days in the previous year, these rules say, okay, surrender your certificate. Temporarily surrender your certificate. Say you are going into employment again, temporarily surrender your certificate, you can do so. Whenever you will surrender within 7 days, the whatever communication I have to do with IBBI, it is only through my RVO. I cannot directly communicate with IBBI. See, so whatever you are temporarily surrendering, you will surrender it to your RVO. Your RVO will send it to your IBBI within 7 days. IBBI will give you the reply. And then the names should be displayed on the website of the RVO. Now, how can one make a RVO? If you want to make a RVO, you should be, now the new section is Companies Act 2013. So you should be a Section 8 companies, means it should be a non-profit organization. Non-profit organization is distributed as dividend. The profit be invested for the development of the for the profession, and it is solely the registered value with the regulations relating to registered valuer. Now the same procedure is there, like we get the certificate of registration, RVO gets certificate of recognition from D along with the fees of 1 lakh rupees. Here the fees is 1 lakh. And the same procedure is being followed in case of RVO also. The thing to be remembered is that what will be the form of certificate of recognition? It is Form E. So now we can remember Form A is for individual registered valuer, Form B is partnership or company registered valuer, certificate of registration is in Form C. If there is an RVO, it will apply in Form D, and the certificate of recognition will be in Form E. See, if anybody has a complaint against a particular registered valuer or a RVO, it's easy to approach IBBI. He can approach in person, by post or by courier. The simple thing he has to give is file a complaint along with a non-refundable 1,000 rupees in favor of IBBI. And then whenever there is a complaint against individual registered valuer, IBBI deals itself. But if it is a case of a partner of a firm or a director of a company, then
IBPI may refer the complaint to the concerned RVO and deal with it. So it's very easy. So, and whenever there is a complaint, there will be proper inquiry. There will be a show cause notice that will be issued to clarify the position that you have. And show cause notice will tell you everything, why you have been given the show cause notice, what are the allegations. The allegations are under which act, which particular law. They will all be given. The show cause notice may be served at its registered address only by the registered post with acknowledgement due. See, this is so important. You know, whenever there is a summon, there is something that is coming from the court or some regulatory authority, it will be through the registered post with acknowledgement due. And now, because this is a time of electronic media, then it is also sent by the electronic means to the email address. What the principle? It will be the principle of natural justice. See, there are no violations to any law, any rules and regulations in India. This is the most important principle all over that will prevail. Even if something is wrong in a particular law, but circumstances of the case justify it to be natural as a human being, then my principle of natural justice will prevail. This will prevail in our case also, being a registered. It means that no action is taken, only warning is given, or there may be suspension for 3 months temporary, or in case of RVO, they may change the partners or the governing board. If some RVO is ordered to be closed, then all its members will be shifted to the other RVO. So individual members are not going to be at loss. Whenever the order will be there, at least 30 days period is there for the enactment of the order, enforcement of the order, appeal can be made. This is important. Committee to advise on the valuation matter is being made by the central government, so that this committee can recommend it for the valuation standards as well as the policies laid down. And the composition is, it shall comprise of a chairperson, and chairperson should be someone who is knowledgeable in accountancy, finance, valuation. He should not be someone like we used to do in our Lala type companies, that anyone who is Lala is made the director. No. In this case, the chairperson of the committee is a knowledgeable person. One member is nominated by the MCA, one is by the IBPI, one is by our law department, legislative department. Up to 4 members are nominated by the central government with respect to the different RVOs that are being formed. Four members are also nominated by the central government for. Do you know registered valuer concept is being allowed under which 2 particular laws till now? 2 laws in which registered valuer by registered valuer only. Can you tell me? In which particular law? Mandatory required. It's in the Companies Act and it's in the IBC code. At the 2 places, it is specifically done by register. Apart from that, there are some changes in SEBI REIT also, which is registered valuer, and with the enactment of registered valuer bill, this requirement will be in any law, every law, but it will take some time. This is one of the questions that used to come is ICI, ICSI or ICI institutes presidents are the ex officio members, means because see, every year there is there are elections and presidents got changed. So they are saying whosoever in the seat of president, he is ex officio member of this particular committee. The tenure for how much period they can be appointed, any particular chairman or member 3 years, and they can be appointed only for 2 years, that is maximum 6 years can there. This is what your registered valuer and registered valuer rules. Anything you want to ask? The basic introduction of the course which
Anything you want to ask from it? Hello. Yes. In regarding partnership firm registration, I have one question. If there is a partnership firm in which there are 3 partners, but other 2 partners are sleeping partners officially by register agreement, then only one partner is active, then he will be ऐसा eligible only. पॉसिबल नहीं होता सर कि एक स्लीपिंग पार्टनर और 2 तो एक्टिव पार्टनर रखोगे ही. नहीं, एक्चुअली दो स्लीपिंग पार्टनर है. 2 स्लीपिंग पार्टनर कैसे कर दोगे? खाली ये तो फिर सिंगल प्रोप्राइटरशिप का काम हो गया. That would be a case of sole proprietorship. Partnership firm means at least 2 persons. और 2 persons का agreement तो one is active partner is okay, but all the 3 should be registered valuer then. Okay. Okay. Thank you. Right? Because Okay. my law says all or at least 3 should be registered value. Okay, ma'am. Right? Anything else? Ma'am, if one is practicing law, can he practice registered valuer? Yes. Right now it is allowed. Okay. Thank you, ma'am. I am doing it. Others are also doing. There is earlier there was a requirement of NOC. Now there is no requirement of NOC. Nothing is required. Okay. So next I am starting with this Securitization Act. My Securitization Act, SARFAESI, has a very big name. Securitization, Reconstruction and Enforcement. So if I know these names, the whole act is very easy for me. So what is it? I'm going to explain you through some chart. So this is my chart, which is going to explain what is actually, once I will understand this, it will be easy to understand IBC also, right? What happens? Banks, financial institutions or NBFCs, they are basically the creditors. They give loan and the loan is basically the borrower. Whenever this the borrower, bank shows this in the asset side as loans and advances. Because this is an asset for the bank, bank is going to get interest on that money that it has lent, which is known as time value of money, because I have given you my money. So with the passage of time, you have to give me the interest on it. That is the time value of money. Whenever there is a concept of time value of money, it is known as financial asset. Whenever any asset is there for the purpose of earning money with the passage of time, it is known as financial asset. I am not using it for producing anything. It is not land that is being used. It is not plant and machinery that is being used in production. It is the money that I am taking. I am just giving you the money and I am asking you to give me in return the interest because you are using my money. This is what is the relation. Whenever a loan is given, borrower is being asked to give some security. So this loan and advance is known as securitization, secured asset, because it is secured by some property. Now this financial assets, banks balance sheet, if you would have seen, they divided in 2 ways. One is known as performing asset, other is known as non-performing asset. In case of performing asset means interest is being repaid in time, principal is being repaid in on the due date. That is what is performing asset. But in case of non-performing asset means interest is due and there is a default.
or principal is due to be paid, installment is due to be paid, and there is a default. And if this default continues for 90 days, the next MCQ is this: when do you classify any financial asset as non-performing asset? If there is a default in interest or principal for more than 90 days, then it is classified as non-performing asset. What will bank do? Bank will send the notice to the borrower and will ask to make the payment. Or if there is some problem with the borrower and he asks and mediates, then okay, fine, there could be some relaxation by the bank and this will be turned into your performing asset. Start again generating interest and return of the principal amount. But borrower says, I don't have money at all. I cannot pay. He straightforward refused or he didn't respond to you at all. Then this is a loss asset for you, bank, because it is not getting anything. Now, because bank is in the business of lending, it usually can, though it is authorized, but it usually cannot take harsh steps directly on the borrower, take his security and sell it in the market. Because it has to focus on the lending, and if it did like this, it will give a bad name in the market. So there is another concept that is being framed here was the company which is known as securitized company or asset reconstruction company. What it says, this company says to bank, okay, give your this loss asset to us. We take this asset, we will negotiate it with the borrower, and then we will recover the money. So what the securitized company is doing, this is taking this non-performing asset, which is now a loss to the bank. Even if it is a loss to the bank will say, I am also giving you the security. What will I get in return? This securitized company say, we are giving you our securities, we are giving you our shares, we are giving you our debentures, we are giving you our other form of securities in exchange of this particular loss asset. So basically in the bank balance sheet, this loans and advances will be replaced by the securities of the securitized company. So this replacement of loans and advances with the security of the securitized company is known as securitization of financial asset, right? Now, what the bank, what this securitized company will do? Whenever it will have some dividends payment, it will and it will distribute. Bank will also get interest or dividend. Now it's the role of the securitized company. This will talk with the borrower, and they are not the soft kind of bosses. Because the aura of the bank officer, ma'am, just excuse me, ma'am. Ma'am, is ma'am, excuse me. altogether different. I have a question here. How you behave with the police officer or a person having some this kind of scenario, and how will you behave with the officer, the one who is having power? So borrower, when comes to the securitized company, it tries to negotiate with the borrower, try to make him understand and ask for the genuine problems. And he says, okay, I have 20 crore loan and I cannot repay it now because there is a huge loss, or my partners are ditching me, or something like that. There could be any else problem. If there is such problem, then they will try to negotiate. They will say, okay, you cannot repay 20 crore, repay 15, say no, 10, 8, whatever genuine it is broken up. So he says, okay, but I cannot pay interest. Okay, don't pay interest. And then the installments are being made. Borrower starts repaying, it's good. But after some time, again he makes default. Now securitized company issue a 60 days notice to the borrower, and after that its officers will straightforward go to the land, building, plant and machinery, whichever is being kept as a security. They will throw the borrower out of that particular place, all things out of that particular place, and will have control over that particular security. That is known as enforcement of security interest. Whenever securitized company is
Negotiating with the borrower, that is known as reconstruction of the financial assets. In the last, if he is not paying, and when it is enforcing the security, it is known as enforcement of financial security. So can you tell me anything else you want to know from this? Because the word is securitization, reconstruction and enforcement. Is this clear to you? Then it will take just 10 minutes in covering this particular act. Ma'am, one question here. Yes. This last point number 9, this box you told securities company, securitized company. You missed it because you were on the phone, right? No. I was not on the phone. I was asking you. It's on the securitized company. You are Yes. asking. No. My question is, who are these securitized companies? Is it the SEBI? Is it some designated company, some Section 8 company? I'm coming to that particular thing also, sir. Securitized company are the companies which are registered with RBI for performing this particular role. And generally, their banks and all make one particular separate subsidiary or something. They form a separate company. Banks together have made some separate company, and that is being registered with the RBI for performing the role of securitized company. That we are coming in the slides, right? Okay, ma'am. One more question. In box number 10, you have mentioned issue of securities. What is the meaning of issue of securities? Just give me 1 minute, Mrinalji. Actually, I was not saying to you, Mrinalji, that you were on phone. Somebody else was on phone. Okay, I thought that person is asking. Sorry. No problem. Yeah, I'm just sharing the screen, and then I think your all queries will be resolved in that. Okay, because Sure, this is a step-by-step process of learning the concepts. Sure, ma'am. Thank you. One thing I want to tell in my slides, if you will go through the comment section, if there is any clarification और जितने भी आपके यहाँ पे questions होंगे उन सब के answers उस comment section में available होंगे, right? So once we have understood the meaning of these three terms of the act, I can know the purpose will be securitization, reconstruction and enforcement. And then they have also created a central database. So whenever some security is created on a particular property, that information is given to that particular central organization and it will keep a record. Stress assets we have used. The word stress assets, non-performing assets, I have told you this 90 days period is important for your MCQ. And if up to 36 months bank is not able to recover any interest or principal, if it is due, then this is known as loss asset. Originator means the owner of financial assets which is acquired by ARC. Can you tell me who is originator in this particular diagram? Who was the originator? Owner of the financial asset which is acquired by ARC. Who was the owner of financial asset? Who was the owner of loans and advances? Banks. Who was the owner of loans and advances? Banks, because they gave. It's the bank who was the owner of loans and advances. Right, it's the bank who was the owner of loans and advances. So originator here means banks, NBFCs or financial institutions whose financial assets has been acquired by asset reconstruction company. Sponsored, just like you know in the companies, there are shareholders. Equity shareholders who are investing to get some dividend or some make the profit right there. In the similar way, in these ARC, asset reconstruction company, those who invest at least 10% of the paid up equity capital, means those who are having at least 10% voting right in ARC, they are known as sponsors because equity share capital means voting right, right? Now, which, Minal sir, aapka question, which company can be formed as asset reconstruction company? This
This asset reconstruction company has to fulfill some norms as far as funds are concerned, and it has to take registration certificate from RBI. How much funds should it have? It is saying owned funds. Owned funds means equity. Ownership always lie with equity. So owned fund means at least 2 crore or 15% of the total financial assets which are going to be acquired. So if they are going to acquire financial assets of, you say, 100 crore, so they should have at least equity of 15 crore. Because 15 crore is higher than 2 crore, so they should have at least equity of 15 crore. What is the requirement it has to form is it should not have incurred any loss in any of the 3 preceding financial year. ARC should have made adequate arrangements, means it should have arrangements how it will realize the financial assets. It should have infrastructure, it should have people, it should have force so that it could recover its loans. The director should have adequate professional experience in finance, securitization. They should not be convicted in any offense. And see, this moral turpitude is such a grave offense nowadays that if you see in your register valuer also, even if single day punishment is there, you will be disqualified for being register valuer for next 5 years. If any director is in moral turpitude, then he can, such company cannot become ARC. Sponsor means those who are having at least 10% voting right in the company. They should be fit and proper person, and the criteria of fit and proper person we have seen in our RV rules. Similarly, RBI also sets up the rule. Similarly, there are some prudential norms and guidelines which are not there in the RBI guidelines. But these are the main that we have to keep in memory, that it should not incur in loss in last 3 years. This funds requirement is there, and this moral turpitude of it. Right? Certificate of registration is granted by RBI. If there is one ARC which is not performing according to the guidelines of RBI, it can cancel its certificate. But whenever some action is taken, there is always given a chance to the aggrieved party to make appeal. In this case, ARC can make appeal to whom? RBI only. Ministry of Finance. Yes, it can make appeal to, there could be any choice, central government or Ministry of Finance. Because from RBI, next step is Ministry of Finance and not the court. Okay. Now, even if certificate is being cancelled, ARC status will continue to be hold, because before explaining this, I will explain one more thing to you and then I come to this. We have said that ARC will have own funds, this equity. From where it will take the funds? Not from the normal investors. These funds are being invested in ARC by QIBs. This 15 crore or 2 crore which I am saying, or if they are going to acquire 1000 crore, 150 crore will be the investment by QIBs. That is known as that qualified institutional buyers. If they are in the ARC, then unless and until they are being repaid back, the status of ARC will continue despite of cancellation of registration certificate. Right? And whenever there is a transfer of assets, we know we have to pay stamp duty on it. But when the financial assets are being transferred by bank to ARC, there is no stamp duty required to be paid. This is specific exemption given in the Securities Financial Act. That when there is a transfer of financial assets from banks to ARC, then there is no stamp duty required to be paid. The person is under obligation to pay, and here either the borrower, his nominee, or someone who has given guarantee on his behalf. Surety is the person who has given guarantee on behalf of the borrower to repay if borrower makes default.
So any three may be the obligator, right? Now to whom ARC may offer security receipts, whichever securities ARC issue to the QIB, it is no. So it could be issued to the qualified buyer, or is a right choice. I am explaining it. Fourth is a right choice, means it could be issued to the QIB, or there may be some other category investors to whom RBI is okay. It could be declared provided it consult with SEBI. Board here means SEBI. RBI should consult with SEBI, make a list of the persons who can invest in ARC. They are either the qualified buyers or maybe high net worth individuals or someone else who could be allowed to invest, right? In case of this is an exception that the company is going in IBC, then nothing can be done. SARFAESI will not be there. But if the company is not going in IBC, then if in case of ARC, financing of a financial assets is by more than one secured creditors. You know, there is a joint finance by the banks also. In various companies, we used to see that there is a joint financing by more than one bank. In that case, if any action is to be taken by the banks or the joint creditors, they should be at least 60% in value. Joint creditors can take action only if they are 60% in value, they are together, only they can take action against in the SARFAESI, otherwise they cannot take action. In IBC, this percentage is 66%. So this could be the confusion. So to mark it up, लिख भी सकते हैं in SARFAESI, joint creditors if want to take action, there should be 60% joint creditors together. In IBC, it should be 66% credits, right? If QIBs are not being paid, then 75% of QIBs together can take action against ARC. So if they want to go in IBC, if shareholders want to go in IBC, sponsors want, then at least 75% value they should hold, only then they can take action against ARC in IBC. Creditors, if creditors case, then it is 60%, and if it is sponsors case, then it is 75%, right? Anything? In case there is any dispute under SARFAESI between the parties, say banks, joint creditors, financial institutions, or QIBs, then dispute will, the Act specifically mention that they will go under Arbitration and Conciliation Act. They will not go in any court, they will go under Arbitration and Conciliation. Arbitration and Conciliation Act is for the out of the court settlement, right? How many days notice period is required? Can you answer this? I have done discuss it in chart also. If after reconstruction borrower is not repaying, how many days notice is required? 60 days. 60 days, right. Now, if some action is being taken against a particular borrower, and he has agreed, he is not happy with it, he wants to take some safeguards, then he can approach DRT. The tribunal here, the authority for decision is tribunal within 45 days. DRT has to dispose this application within 60 days to maximum months. And then this DRT, if by the decision of this DRT, the company, the ARC is not happy, appeal can be made to DRAT, Debt Recovery Appellate Tribunal, within next 30 days of the order. After DRAT, there is no appeal allowed.
Means you cannot go to the court at all. In case of SARFAESI, you can go to the court at all as far as your measures to recover secured debts are concerned. Now, DRAT will not entertain any appeal unless and until 50% of the amount of the debt claimed is deposited. Say the debt claimed is 1,000 crore and DRT determined it as a 500 crore. So 50% of 500 crore should be deposited with DRAT. Only then it will entertain the appeal, otherwise it will not entertain the appeal. Sometimes on some particular circumstances, this percentage may be reduced to 25%. This is what is for MCQ purpose. These all slides, please go through all these slides. Anything you want to ask from this, you can ask. Full form of DRAT. Debt Recovery Appellate Tribunal. I will also add it in my slide also. Or if you will go in the comment section, there will be full form there available. Okay. If you will click comment section here, a separate place will be there which will show you the full form. Okay. So there could be MCQ, which is the adjudicating authority, which is the appellate tribunal in SARFAESI. It is DRT and DRAT. Okay. मैम ये जो सरफेसी है, ये सरफेसी जो है ये किंगफिशर एयरलाइंस इशू में भी यूज हुआ था क्या, डीआरटी एंड ऑल दिस? सर उस टाइम था ही यही. ओके. सरफेसी इज इन आई थिंक 2002 का है सर. सॉरी 2002 का है सर फांसी. इनैक्टमेंट 2005 में हुई थी, बट किंगफिशर के टाइम यही था. Okay. Yes, sir. Definitely, all the slides will be shared with you. Somebody has asked, all the slides, whatever are the documents that are being discussed here, that will be shared with you. There is a very small section they have mentioned in your syllabus, that is section 5N of the Banking Regulation Act. This Banking Regulation Act is basically the act which deals with the banks, which regulates the banks, RBIs and all. Secure loans or advance means a loans or advance which is made on the security of the assets. Like we have discussed, whenever a bank is giving a loan, it is asking for the asset being given as a security. And the market value at any time of this asset shall not be less than the amount of such loan. This is what is required apart from this. There is a loan and advance. Together with the loan and advance, there will be the asset that is being given as a security. The value of this asset, the market value, shall not at any time be less than the amount of such loan or advance. Unsecured loans or advance means a loan or advance which is not so secure. This is the simplest difference between the two, right? What we will do, we will say on the security of the assets only. No, if MCQ comes, you have to click the whole as a right choice. That was the only one section that is being mentioned in the syllabus. Just give me 1 second. There is a small sections from the Companies Act that I'm going to discuss. I'm covering small because these are giving you 1 mark easily. They are easy to remember and they will give you 1 mark straightforward. और 1 mark जितना ही पढ़ना है आपको इसमें, इससे ज़्यादा पढ़ना भी नहीं, right? Section 192 is basically a new section. See, whenever there is some arrangement between the company and the directors, because the company is giving its assets to the directors and for consideration other than cash. In that case, they are saying, okay,
give the assets to the directors in consideration other than cash because they have done something good for the company, or they are to be rewarded, or some other way they are being awarded. So they say you cannot do it straightforward just in the board meeting. If anything is to be given to the directors, if any loan and advance is being given, say, by the director, and in return of it you are giving some asset, so they are saying a prior approval by a resolution is required in the general meeting. And if the director or the person is a director of the holding company, then a special resolution is required. See, the simplest thing is please give me 2-3 minutes more so as to cover it up. Okay. I am saying regulation says that you have to, if any loan, any asset is being given by a company to its own director, simple resolution of its own members is required. But if any asset is given to the director of the holding company, then special resolution is required. This is what is there, right? Can you spare another 15 minutes? Please. Okay, ma'am. Okay, then I'm starting with the IBC. That is the most important with the after SARFAESI. Just a minute. Not sharing the screen. IBC is just like the SARFAESI. That is, the banks are having financial assets in the, they are giving loans and advances to the companies, and companies are making default. However, SARFAESI was not that much practicability. So a new code has been enacted in the law, and this doesn't deal only with the insolvency of the companies. This deals with the bankruptcy of the individuals as well as partnership firms. Insolvency means a company is not able to repay its debt in the ordinary course of its business. Bankruptcy means an individual or partnership firm is not able to repay its debt in the ordinary course of business. So what is there is, in case a company is a debtor, company has taken loans and advances from the bank, we call it as a corporate debtor. And if it commits a default of 1 lakh or more, then in IBC action can be taken against it. Right now this has been increased, but for your purpose, that increase is not allowed. You will say if a company has committed a default of 1 lakh or more in repayment of its loan, an action for its insolvency can be taken in IBC. However, central government can raise this limit from 1 lakh to 1 crore. This limit right now can be raised from 1 lakh to 1 crore. Default means whenever any installment is due and company is not making the payment, then it is a default. There has been change in this particular, I am mentioning the change, please keep in mind, because these are generally the amendments that used to come as a MCQ apart from all those corporate sectors. But earlier, what was it? It was not applicable to financial service providers, say like banks or the NBFCs, that it was not applicable. But right now, non-banking financial companies means, non-banking means those which are not accepting deposits from the public. These non-banking financial companies, including housing finance companies with asset size of 500 crore or more,
as per the latest audited balance sheets, action can be taken against them, and we can go to the IBC if default is made of 1 lakh or more. For the purpose of valuation, what is there? How would you value at this asset size of 500 crore or more? With respect to which date? With respect to the audited balance sheet date. And regulator here will not be NCLT, it will be RBI. In IBCI, the decisions are taken by National Company Law Tribunal. The adjudicating authority for the company is National Company Law Tribunal, and if it is appeal to be made, it will be made to National Company Law Appellate Tribunal. Full form is given in the comments also, in the slides comments. Okay. As far as individual is concerned or partnership firm is concerned, adjudicating authority is still DRT and DRAT. But in case of companies, the adjudicating authority is National Company Law Tribunal, and appeal is made to National Company Law Appellate Tribunal. There has been change in insolvency. See, whenever what happens in a company is taking loans and advance from banks, which is known as financial creditors. Simultaneously, company buys raw materials and takes goods and services on credit. They are known as operational creditors. So there are two kinds of creditors in case of companies. One are known as financial creditors, other are known as operational creditors. Anyone can take action if default is made, even if default is made in payment of workmen and the default is more than 1 lakh. Action can be taken for the insolvency of the company. Whenever you apply to NCLT that please start insolvency process against this company, that is known as my initiation date, the date you are applying to the adjudicating authority. This NCLT has to give the decision within next 14 days that whether to start insolvency or not. If it, the date on which it gives order that okay, application is admitted and start insolvency process against this particular company, that is known as insolvency commencement date. In this insolvency commencement date, all the work is, whenever insolvency order is given to start the process, there is a professional that is being appointed who will take over all the management. Board of directors will be suspended, and this professional is known as resolution professional. This is a person who has cleared the exam of insolvency conducted through IBBI. That person will manage the whole work now. What his role is? He has to complete this insolvency process within 180 days. Please mark it. This insolvency process has to be completed within 180 days. This I am also showing in slide. This I have shown. Financial creditors, operational creditors, even a company itself can go to for CIRP that I am not able to pay, so start insolvency process against me. That in that case, the company is called as corporate debtor. See, earlier what was the provision? Even you must have read in the newspaper also, for the home buyers. In case of real estate sectors, home buyers were approaching NCLT for initiating CIRP because they were categorized as financial creditors by the court. So they said, but these home buyers are so many in numbers. So they put a particular condition that if home buyers want to initiate insolvency process against a particular company, then either they should be 100 in number or they should hold 10% of the total claims. That is the requirement in certain law, right? Whenever an application is filed with the adjudicating authority, it has to give an order within 40 days. It may reject it also, but whenever it will reject, it has to record the reason for the same. And now the requirement is the insolvency professional who is being appointed, he shall be appointed on the date the order is given.
on the date of insolvency commencement date. Right? Whenever a financial creditors, I have told you one thing, that who can apply. Whenever a financial creditor applies or a corporate debtor applies, they have to recommend the name of insolvency professional in their application. In case of operational creditors, he may give it or he may not give it. So MCQ is insolvency professional name is not required to be given by whom? By the operational creditors. I am giving this fast track process. See, I have told you first, in the ordinary course, the time period is 180 days and this could be extended by maximum 90 days. Only one time extension will be given. Extension will be given only one time and maximum 90 days. It's not that first you have got 60 days extension, then you will again apply and get, no. Only one time you can apply and maximum extension is 90 days. And this application, see, whichever communication is going to be with IBBI, it's resolution professional who will communicate. It's resolution professional. He will make a committee of creditors, financial creditors. And if that committee of creditors with 66% voting says, okay, 90 days period is allowed, should be applied for extension, then resolution professional can apply to the adjudicating authority and the time could be extended. But what happens these days now is that despite of all this, there are litigations going in the Supreme Court. Because Supreme Court is the highest authority and it could be approached in any case. So what happens now, they are saying, again the time period is more than 270 days. They are saying, okay, even if any litigation is going on, if no litigation is going on, the time period is 180 plus 90. But if any litigation is going on, even then, the total time period cannot extend 330 days. This is what is the latest change. So MCQ is, in normal circumstances, the time period is 180 days. Extension could be of 90 days, only one time extension with the 66% voting. And if there is any litigation, the maximum period is 330 days for completing all this CIRP. What is this insolvency resolution process in this? What happens? Resolution professional makes a committee of creditors, financial creditors. Then they invite bids from the other persons who wants to acquire and run this. What is it? What the approach is? Establish a new company. Instead of selling its assets, instead of the unemploying the workmen, if there is some person who can take hold of these assets, who can give employment to these workmen and run this company, even though at a discount, even though financial creditors have to give up their loan, a chance should be given to revive this company. That is what is the objective of this CIRP. If application is to be withdrawn, say as a financial creditor, you have applied, but now there are the settlement, the company is ready to repay your loan, it can be done, but the approval of 90% voting shares of the COC is required. This is the latest one questions. Within how many days interim resolution professional shall be appointed? It is on the insolvency commencing. I have told you earlier there was a period of 14 days from the date of admission of the application in which resolution professional could be appointed. But now whenever the order is given, A has to appoint the IRP. Apart from this, there is just 1 minute thing that will deal with your valuation aspects. That is important for your this particular this section 53 waterfall mechanism, we used to say it. Have you ever heard waterfall mechanism? No. Okay, this is the ultimate crux of my IBC, which says even if a company is going into liquidation, how will the proceedings be distributed?
Just give me 1 minute more. This is not opening. Yeah. Last one I am doing it too. Now it is saying, say, you have made an effort to revive the company. There is a committee of creditors. It has invited bids from the other parties and other companies to take over the company and run it. But it is not getting a good bid from any company. So it says, okay, liquidate the company, liquidate, dissolve the company, sell its assets, and distribute the proceeds to the creditors. So what it is, the first priority they are saying is whatever cost of this insolvency resolution and liquidation means whatever is to be paid to the insolvency resolution professional who is being appointed, whatever are the expenses incurred, they are to be paid first. Then is the आपका जो MCQ आता है वो इस पे आता है. Workman's dues for the period of 24 months preceding the liquidation commencement, and that's owed to a secured creditor if he has relinquished the security. See, secured creditors has two rights. One can directly sell the asset and recover his dues. Other is he gives security back to the company and said, okay, I will take whatever I will get in the liquidation. This is the case when he is giving up the security. In that case, if the company is getting anything, say 4 lakh, it will be distributed among these two in proportion of their claims. In the workman dues of the last 24 months and the debts which are owed to the secured creditors. After they are being paid, the third will be of those employees. Here workmen means those who are working in the factory, basically that category. And here it is basis to the employees third category that are due for the last 12 months. Then in the fourth, financial debts owed to unsecured creditors will be paid. And the miraculous thing here is the last thing, there are 5 claims which are to be distributed proportionately. And government has taken itself in the last category. That it is saying if it is a company is going under liquidation, okay, first distribute to the financial creditors and the workmen. In the last, put myself in the shoes of the equity shareholders. Whatever are my dues for the last 2 years, they are in the last rank. Whatever are the creditors debt due, hold the security, but his debts are not recovered, then he will preference shareholders and equity, they will be given in the last. This is what you have to calculate. That would be the case of your MCQ, and the most probable chance are of these two. For the last 24 months, they will be given pro rata. Say he is having, workmen are having a dues of 2 lakh and the secured creditor is of 1 lakh. So whatever will be received, it will be distributed among them in the ratio of 2:1, and unless until they are being paid fully, they will not go to the third step. Right? Anything you want to ask? This is the most important thing in the IBC for your exam. Anything you want to ask from this channel, this ranking you should keep in mind, because from your valuation point of view, this is the most important thing. And my IBC says that valuation in IBC is to be as per internationally accepted valuation standard. Right? Is as per internationally accepted valuation standard, and at least 2 registered valuers should be appointed by the one. Is it okay? Anything you want to know? I have taken your a little bit more time, so I have started a late too.
So please, if you have any query. So I think now you should go for your lunch break. This is your lunch break time. Please go ahead. I will share all the slides, right? Thanks a lot. I think there is something. What time? Thank you. Resumption time. Next Yes. next session. Ma'am, next session. What time? That will be, I think you can see on your chat. It will be around 2:30. 2:30. Okay. Yeah. Fine. So anytime if there is any query, I will share. My number is there in your WhatsApp group also. You can always contact me and ask for the query. Right? So best of luck for your exam. First go through your syllabus and then prepare for the exam. Right? Thank you. Thanks a lot. Thank you. Thank you.
Vijay, you can let me know when to start. Is the voice audible? Good afternoon, everyone. Hi, good afternoon. I think there are few mics. There are few mics which are probably on. Can anybody request Arvindji to or? If somebody is from RVL side can either make me a co-host or I can mute the other voices. Just give me a minute, let me see. So good afternoon, participants. I think there is some echo coming in the voice. Yes, sir.
I have given you one PDF for valuation rules that would have been circulated on the WhatsApp group. So if you can download that, then it will be easy for you to prepare for that. So give you my small background. I'm born brought up in Jaipur. I studied CA in Jaipur. Then I moved to Delhi for 2 years of practice. Still the voice is an issue. I think Sanjeev ji is having a echo. Is it with everyone or? You can tell me by chat, I will be able to make up. Sanjeev sir, are you still having issue? No, sir. Okay. Now we are having Arvind ji as a echo. So if the echo is there, let me. If everybody facing a I'm trying for my. It's okay. I'm trying to speak now from mobile, so my audio will come from mobile and. No, it is comfortable now. Okay, now it's fine. So, born brought up in Jaipur, did practice in Delhi. Then I moved to Mumbai. So I worked in Mumbai for few years, and then I worked in PwC Mumbai. And from there, I moved to Middle East, Bahrain, near Saudi Arabia. I worked 8 years there, and 3 years back, they call it Lord Kateda Ghar Ko Aaye. So I moved back to Jaipur, and now mainly practicing in valuations and advisory. So this is a very interesting field which you all have opted, and this is a very new area. Now the best part of this field is now, since now it has become regulated, we all are at the same path. So it does not matter you are a 5-year-old fresher or you are 20 years old practicing valuer. We all get the same privilege, same power to sign. So this field is very lucrative. As of date today, if we talk as of today, if you go to the numbers based on IBBI website, for SFA we have 1181 members. For land and building we have 1706 member, which is the highest probably. And for plant and machinery we have very less number, 351. So it shows two things. One, if you were to look at the good side of it, there's a huge opportunity. Vacuum is there, so the premium is very high. If you see other side, that means either the exam is tough or the people are not more inclined. Those who are into plant and machinery side, they may be taking other options. That is one. And now we are having 22. Now we just got 23 approved today. So 23 registered valuer entities. My one question which I like to understand from most of you. So this is a figure from IBBI and you would have seen this figure now. What do you think that what is the reason that many of us are practicing on individual basis, and till last 2 years only we have only 22 firms. When I say firms, entities, it might be firm, LLP or companies. Why majority of people are willing to work in individual only and not in firm? Any thought process you like to chat, speak, whatever is convenient to you? I'm happy to hear your views. Sir, probably the criteria for registration of an entity as a valuer. Okay, so very good thought process, but let me make it more simpler. Unlike IPE, so you all would be aware there is an entity called IP, Insolvency Professionals. To make a IPE,
you need to have a 1 crore capital. That is a bare concept. Luckily, and it's a blessing for us, in RV, in valuation, there is no such criteria. With just 1 lakh rupees, I can form a registered valuer entity and I can work with 1 lakh rupees also. So money is not an issue here. Formation of entities is also not an issue. Then there must be something which is bothering a lot of people not to enter into partnership for various reasons. We'll quickly come to that very shortly if you have gone through the rules. If not, then I'll cover that and we'll understand what is the issue here. But now let me give you something scary, though I don't want to scare you, but these are the facts. Let us attempt the facts. Those who are all land building participants, this data is published every quarterly by IBBI on their website, that how many people have attempted the exam and how many have passed. So if you ask any normal student, he may get very scary by this data. But if you ask any CA or any IITians or those who try for PMT, they will be still very happy that at least the pass percentage is in 2 digits. In CA fraternity, it was used to be 2, 3, 4%. So this number 16 look good. But we need to understand one point here, and it's a fact check. So point is not to scare you. Point is to bring you to the attention that what we are missing. So if 13,000 people are giving approximately exam, 2,000 people are passing. So it's not 13,000 people, it's 13,000 attempts. So it may happen, I may take 2 attempts, 3 attempts. So that will become different attempts. Why people are failing, and majority of the reason people are failing in this exam, your temptness to answer 100% question paper, because we have a negative marking here. And believe me, I am teaching in this profession, this valuation from since 2018 onwards. I have seen majority of people failing between 58 and 60, majority of people. So somebody, and I'm sure you will also see from your seniors and friends, somebody will fail at 59.75, 59.5, because the exam is tricky. I do not say exam is tough. Exam is tricky. They ask very basic questions, and the basic questions we are not able to answer at times because we think this is correct, but that is the other way. For let me give you a simple question before we go through what makes the exam tough. For example, a question comes: India derives which is the maximum contributor of GDP in India's economy? 4 options: agriculture, manufacturing, service. What do you think can we answer out of 3 options? Agriculture. Agriculture it is. What if I say this is a wrong answer? Though majority of you and I, हमने सबने यही पढ़ा था, भारत एक कृषि प्रधान देश था, है नहीं. Manufacturing. It is service sector now. It is service sector. From now agriculture, what happens? Sir, agriculture gives you maximum number of employment. But when we say who contributes maximum to the GDP, it will be service sector. And now I'm sure everybody has Google. You just put this question on Google, which sector contributes maximum to GDP of India? Immediately answer will pop up is service sector. And that too, more than 54%. Earlier, it used to be always agriculture, which used to contribute 60%. Now agriculture has gone to 3rd position. It is service sector, then manufacturing, then agriculture. Now the point is, this concept we always have it in our mind that agriculture is the best answer. So in your exam, you will think, I know this is the correct answer, and you will put that answer. And it may happen that if we are not updated, it might fall back on us. So one thing we need to do is we need to read a lot before pretending for exam. That I'm sure everybody do that. So these are some points which make little bit exam little bit tricky. Those who are plant and machinery participants, if you see your data, so plant and machinery, if you see again the similar results, almost 19%, 10%, overall 17%, and this is consistent. So the beauty of IBBI is they are consistent with all. For SFA, it is 15% aggregate. For land and building, it is 16%. For plant and machinery, it is 17%. So it is all the same range. Because a lot of people do the mistake of over attempting 100% full question, and they fail between that. So I'm sure by now you all know that a passing percentage is 60 marks, and your each negative will give you 0.25% for every question. So you need to be very careful.
How to attempt for exam and how to register for exam, that also we will cover very shortly once I'll finish up a little bit subject today. But those who are scared, do not get scared. I can give you some WhatsApp feedback of people who cleared the exam in first attempt despite very new. Even if you are not an expert, even if you have not been in valuation so long, but if you can read the concepts thoroughly, you can clear the exam. But now the most important chat which I want you to read, and this is most important. Cleared exam with 80 marks, and this is of again of SFA, not of land building, plant and machinery, but understand the concept what he is trying to say. I must say many questions were absurd. When I say absurd, just like question like of agriculture we discussed. So you will not think that they will ask such a question in exam, but this is actually they are asking absurd questions. They will ask which section number has registered valuation rules. We'll come to that also. So at times the question looks illogical to us, but to pass the exam we need to have something basics ready. So no need to get scared of exam. We just need to get prepared. And mark my one word, if after finishing exam in next 2 months you give the exam, your passing probability is very high. But if you delay, if you don't give exam in next 2 months, you say I have a lot of assignments, now the lockdown has just opened, let me catch up with all my pending work and let me give after Diwali, November, December, probability reduces for the simple reason now your memory is still fresh. Whatever 8 days you are 7 days you have been learned, taught, it will be very easy to replicate in exam. And I'm sure I'm not sure Vijayji is now there listening me or not. You can double check. Recently one batch of SFA finished on 31st of July, on this last week on 31st of July. One guy gave exam on 5th of August and he passed the exam because we pushed him to give and he says I may fail. I say you do fail, we don't mind, but you need to give exam. And he got passed. Had he would not have given exam, he would not have passed. So giving exam is important. We'll discuss more on exam perspective shortly. Let's cover basics so we all understand. From now we have evaluation rules 2017. So whatever valuation happens under Companies Act and IBC, it has to govern under the valuation rules. As of now, IBBI is your regulator and we always call him a temporary regulator. Very soon we will have a new regulator once the new bills passes. Primarily that name should be National Institute of Valuers. That's a draft bill we have. IBBI handles RVOs and RVs. As of now, there are 3 asset classes: securities, plant, land and building. And I'm sure by now you all know which class belongs to which categories. Who values inventory? If somebody like to answer on this question, who will value in which asset class will value inventory? So this was asked with IBBI. Security financial SFA. SFA. So if you ask SFA people, they will always say let's plant and machinery do. It is not our role because nobody would like to take the extra responsibility on our report. So we would like to shift the responsibility. So this question was asked to IBBI. Who should do what? What was IBBI view? IBBI view was, first you see what is the nature of inventory. Suppose I am valuing a real estate company and his inventory is land and building. Then the inventory has to be valued by land and building. If I'm valuing a company which make transformers or heavy machine equipments, that inventory will be valued by plant and machinery. If so, the logic is see what is the nature of inventory, which asset class is most closer to him, put into that asset class. After that, any residual category will go to SFA. There are certain asset classes which nobody can take. For example, you are valuing a diamond company and they have inventory in diamonds. So neither land and building nor P&M or nor SFA have a capability to value diamonds. So what we need to do, it will go to SFA asset class. SFA will further hire registered valuer of wealth tax and all, and then they will value accordingly. So somebody asked Mr. Sahu that Mr. Sahu, there is a painting. Who will value that painting in my office, in my factory? So Mr. Sahu was taken aback that you cannot expect an IBB regulator to answer all queries. You know, he does not have all the answers at the time, but he was very smart enough to answer. So Mr. Sahu said, we need to first see where the painting is situated. So if the painting is fixed on the wall, you value under the name of building valuation.
plant and furniture and fixture, and add under building valuation. But if you have made the painting on the ground, just like you make rangoli on the ground, you will add in the value of land. So we're just trying to make things easy for people by taking on a lighter note that IBBA cannot give answers to all questions. It's a valuer has need to take a practical approach. We have 14 RVOs as of now. The benefit of all RVOs are same. There is no hierarchy or no seniority. For IBBA, every RVO is same. The only thing one we need to always look for, if as a professional I need to look, if I want to make a partnership firm, then I should be registered only with that RVO that has got it registered with IBBA in all three asset classes. For example, if you see from this list, a few RVOs have not taken registration on all asset class. For example, ICA RVO, Severesta, and various other. They have taken only certain classes. So then you cannot open a partnership from there. Then you need to register it other RVOs. Any RVO, it's a mandatory. In a question may come in exam to form an RVO. What entity we should have? Should it be a partnership firm? Should it be a charitable organization? Should it be an NGO? Should it be a trust? So earlier everything was allowed earlier. Now it has to be mandatory Section 8 company. What is Section 8 company? Section 8 companies is non-profit or not profit companies in Companies Act. So if somebody wants to do a charity and want to make a non-profit organization under Companies Act 2013, he can register under Section 8. There are 4 committees which are mandatory. Can anybody tell me which are the 4 committees that are mandatory? Any names of any committees? And we are talking as per valuation rules. Any idea what committees you think? You can speak or chat, whatever is convenient to you. What is a grievance, I think? One is grievance, fine. What is the second one? There are 4 committees. Sorry? I could not hear you. So one is grievance committee. Second is disciplinary committee. Third is membership committee. Fourth is monitoring committee. I will explain this also when we go through the rules, but that we need to understand. Every job of RVO is to complete 50 hours of training. What we are doing now, you pass the exam and then you register with IBBA. We need valuation for all purposes. Wherever you do any transaction, valuation is required. Every law valuation is required, but as of now, every law does not recognize registered valuer. So if you go to income tax and say I am a registered valuer of IBBI, he will say I don't know you. If you go to SEBI, if you go to other RBI, they say we do not know who is RV, because for them valuer can be either somebody who is a chartered accountant or a merchant banker or who was registered under wealth tax. That was the classification for them. This causing a lot of problem, but we expect very soon to get it settled. As a valuer, you will get a lot of assignments in future, companies which are following Ind AS, because in Ind AS, whenever any market scenario happens, like whatever this time pandemic, like corona, or any market goes very bad, they call an impairment assessment. You assess the value of investments every year, fixed assets every year, and it has been done by registered valuers always. So that's a good opportunity to work for Ind AS, because that is only for your reporting purpose. So valuation is always needed, because they say it is better to be roughly right than precisely wrong. Whenever any transaction happens, it is not necessary that based on your number, the transaction will happen. Our valuation report just work as a benchmark to discuss what is the number, and then they move accordingly. Now there are so many confusions, who should value what under which rules. But for us to understand, for Companies Act and IBC, we only govern with Section 247 and valuation rules. We'll just quickly touch base Section 247 also before we come to the rules. Now from 2019 February onwards, any valuation that will happen in Companies Act or IBC has to be mandatory registered valuer. Otherwise, you cannot get it done. Earlier, there were a lot of people were saying that we don't have enough plant and machinery valuers registered with IBBA, so let us take with any valuation.
any person as a valuations report. IBBA strictly issued a letter to all IPs that you cannot appoint anybody now if it is not a IBBA registered. So it's a huge opportunity in IBBA. Section 247, we all are aware, we have read, we should have completed. At least 1 marks question generally comes from section 247. So first question comes section 247. It's a very basic and absurd question. Anyone can answer? Audit committee. All are with this, or anyone with a different answer? All go with A. Yes. So this is the only section in Companies Act which makes audit committee more powerful than the board. In all other sections of the Companies Act, board is powerful and audit committee always recommends and board approves. In this section, the wording of the section is wherever there is no audit committee, then it goes to the board. So answer should be audit committee. Simple question comes, under which chapter number of Companies Act this section 247 is there? So just note it down, chapter 17. So chapter 17 has the section 247, and in Companies Act there is only one chapter, and there is only one section in this chapter. 247 is only under chapter 17. How long you cannot be associated with the company? How long you cannot have an interest with the company before taking assignment? Any number of years before and after? Any idea? 3 and 3. 3 years. 3 and 3. So 3 years before and 3 years after you cannot have. So just note this 3 and 3, because in exam a simple question comes on this. And so it means that if I have done a valuation today, next 2-3 years I cannot take assignment of architectural drawing or any consultancy, because it looks that I might have taken some influence from them. I would have done a excessive valuation for them with a consideration. Okay, I will do a good valuation for you, you give me some assignments in future. So we need to be careful of that. Once you read section 247, you need to be careful on the penalties. A question may also come, what are the penalties? So if I did a wrong valuation where my intent is not to defraud, my penalty will go 25,000 to 1 lakh rupees. If my intent is to defraud the management, it goes from 1 lakh to 5 lakh rupees and imprisonment up to 1 year. So we need to be very careful of the penalties also, because in exam there are simple questions on penalties. So be aware on the penalties. And if I do a wrong valuation, whatever remuneration I received, I need to refund them. Whatever losses somebody makes, I need to bear their losses also. And I need to go to section 448, 469. That means, that says, if it is proven that I have fraudulently issued a valuation report, collided with the management, I need to pay a fine up to 3 times of the losses incurred. So that's a very heavy penalty. And jail term can go up to 10 years if it is proven that we had done a fraud. That is the highest penalty in Companies Act, for 10 years. So normal question comes from 247. So be aware of these questions. Who appoints are we? Which chapter number? How cannot be associated? And penalties. Is valuation an art or science? This question always comes up. And my teacher always used to say that we always used to ask question, is accounting is an art or science? So he says, if your trial balance tallies automatically, it is science. But if you made the trial balance tally with your jugglery, it is an art. So but Professor Damodaran says valuation is neither an art, science or art, it's a skill. That means you learn more by doing. There are people who are jugglers who can do valuation whatever they want, and they can justify also. So I've gone through one valuation report, and it's a very funny valuation report of land and building valuer. They did a valuation in Mumbai. So in valuation, though I'm not expert on land and building, or I have not much idea, but basics understanding I know. So in valuation, when you're doing a valuation of an area, you calculate the FSI, that how much floors you can build up on that. So suppose the government has given a permission of 1:3, that you can make 3-story flooring. He made the valuation of 9-story. And what was the logic he is given? The logic is given is, Mumbai is a densely populated city. Whoever comes in Mumbai does not go back. So there will be a space shortage.
and client is confident that the government will give approval to make 9-story building later on. So based on just client commitment, he made the valuation where the existing laws was of 3-story building only. So I'm sure you all are much expert me on this matter. Can you take on this call that in future something may happen? Can you do a valuation today? My personal answer would be you cannot do that. Client will say anything. Client will also say, Uddhav Thackeray is my friend, I will get an approval. Even that, when you are a valuer, you cannot play with that. So that is called ethical dilemma you will always face. Though IBBA expects and they also admits that valuation is a complex process, and for same set of assets you can have a different value from different valuers, because each person have a different upbringing, different exposure and different experience. But if you are following the valuation standards, you cannot have too much difference valuation. In a lot of courts, and there are so many court cases happen and valuations. Luckily, none of the court cases, any court has said that the valuer has done a wrong method. We are not talking of fraud. So unlike what happened in PMC Bank, I'm sure you all would be aware, where they say that the valuer has done a fraud. That is different story. But nobody has ever said that valuation has chosen a wrong method. So there are whatever methods available under your approaches, whatever you feel like, court does not interfere in that. Court will only interfere when somebody can prove that you have taken money from client and used a wrong method. So there is a funny cartoon saying that we got a valuation done from 12 different valuers, and 12 valuers give a 12 different report, which is fine. But what is common in that? Everybody gave $500 hour per fee. So valuers will always give a different value. So those who would be having any idea of IBC, we'll come to that IBC. Just give me a minute, probably. That will be easy to understand. Now, is price equals to value? No. Yes, no, no, no. Okay, let me ask another question. Is value equals to price? It can. Yes, It can be. See, if my answer to first question is no, then I think answer to second question will be also no. Yeah, because it's just changing from LHS to RHS and RHS to LHS. So what is the problem here? The problem here is client will always come with a certain price in mind. I'm sure most of you would have felt in your practical experience. Client will say, this is a land and I think this is my valuation. Client will always have a number in mind. And as a valuer, what is our role? We try to follow the standards and try to get a fair value. That is our expectation from us. What is the problem then? The problem here is to bridge the expectation of a client, what is price he wants, and to get the value what is as per standard. And that is all about ethical dilemma, because at times it happens. Suppose you are valuing a land in, let's say, if anybody is from Delhi, let's say Connaught Place. So according to your best estimate, the value of land can be, let's say, 1 lakh square meter. But the client says, "No, I want to have a 2 lakh rupees." That becomes a challenge, because maybe some transaction would have happened 10 years back at 2 lakh rupees. That would be a abnormal transaction. Can you take that as a base? Client will never understand these kind of nitty-gritties. Client will always say, no, I want that number to be 2 lakh. And as a valuer, that will be a big challenge for you. And we need to be very careful. What do we commit to client? My one simple suggestion would be never ever commit number to client without doing your homework double. Because the moment you commit, and because we also did this mistake at times in a starting time of our profession. So if I tell a client, I think your share price value will be X, immediately the CFO will commit this to their shareholders that valuer has agreed for X price. And then when you start doing working later and you think that X cannot come, client becomes very angry on you. And client says, you have committed me the price. So never ever commit the value or price. For your exam purpose, basic things to understand. The key difference between price and value is price is always a entry price, entry value, entry point, and value is always a exit price. So when I'm buying something, if I am buying something, that is my entry price. I bought it. So price is precisely measurable.
but how much value I have, that will be exit price. So if I bought something at 100 rupees, that will be my price. But I think I can sell this thing at 500 rupees, that will be my value. So the value is always non-determinable, it is not precise, but price is always precise, and value is always considered exit price. So Warren Buffett clearly says price is what you pay and value is what you get. There is one gentleman who says valuation is what people are willing to pay. So he says, I'm sure if you have remember the Diwar movie where Amitabh Bachchan is buying one building at 10 lakh rupees and the seller says to Amitabh Bachchan that you have bought this building very expensive. If you would have asked me, I could have given you 2 lakh rupees discount. You are not a good businessman. And then Amitabh Bachchan responds to him back and says, if you would have asked 10 lakh rupees more for this building, I would have paid you 20 lakh rupees and I would have buy the building. Then now the seller gets shocked. How can he would have buy so much high price? And he says, because my mother has made this building when we were young. So this is the gift I want to give to him. So valuation is always depends on what people are willing to pay. For you, it may have no commercial value, but for I may have a commercial value. Take classic example of WhatsApp. Did anybody of you paid any subscription to take WhatsApp, or it's all free for us? It's all free. I'm sure nobody would have paid any subscription. WhatsApp we downloaded free. Did WhatsApp shows advertisement to you every day or every chat? Answer is no, you don't get advertisements also. But still Facebook acquired WhatsApp at a very high price, $32 per user. That kind of value Facebook saw. So commercially somebody can say Facebook is an idiot. Without having any revenue model of WhatsApp, he acquired the WhatsApp. But that's not what actually happens. So valuation happens always at the businessman's point of view. So if somebody comes to me, ask me as a valuer, I will say WhatsApp has no value or a very little value because it does not have a commercial angle. I will always see how money is coming. So there is neither I have paid any money to WhatsApp as a user. So what WhatsApp is getting, nor WhatsApp is selling my data. Then how the WhatsApp company is earning. But the Facebook have thought different thing. You want to control the media, social media. So WhatsApp is a part of that. So then the price is always different, which valuation you want to give. I'll quickly take 2 minutes on this. I'm sure we all are aware of Flipkart and Paytm. This is just to give a ballpark figure, not relevant for exam, but just for practical understanding. Flipkart have not made a single penny money till date. They are still in losses. Paytm still in losses. If you see the loss of Flipkart in 2017, 245 crore. Valuation was 7.6 billion. 2018, loss was 2000 crores. Any idea how much would have been the valuation in 2018? Any vague idea? What should have been the valuation? Approximately. Any number? I'm not looking for exact number, but just a thought process. आपको क्या लगता है? How much the valuation could have been in 2018 after seeing the losses? Give me any number, any ballpark number, which you think. Sir, कोई भी number बोल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता. There is no negative marking in class. 18, Sorry? 18 or 19. 18 or 19. So you are expecting it to go higher? Yes, definitely. Okay. Yes. This is a very interesting answer, and this is almost the correct answer. It went up to $20 billion. And from this day onwards, people started accusing valuers that valuer does not know how to value. The company has gone into so much of losses, how the value is increasing. So common man does not understand the valuation concepts, and they started blaming the valuers that value does not know anything, and they are giving a fake valuations. But the only reason the valuation increased so much, similarly case of Paytm, despite losses every year, doubling the losses every year, the valuation was double every year. Now, can somebody answer what is the logic? Before that, read the classic tweet of Harsh Gwenka, who was the chairman of RPG Enterprises. He made a classic tweet. He says, if I travel in Ola and stay in Oyo Hotel and pay through Paytm, I will increase losses of all the three companies because they give cashbacks. We're still trying to understand, more the losses, higher the market capitalizations. Perhaps I'm too old world. Any idea when such a big businessman is also confused that losses बढ़ते जा रहे हैं और valuation बढ़ते जा रहा है? Can you give me one logic? What do you think makes the valuation go so high? Quickly, anyone, any thought process? What do you think the valuation is going so high despite having so much of losses? They have not incurred a single penny profit.
Why the valuation would have been high? Any vague thoughts? Increased number of users every year. The most important is their customer base is increasing a lot. And Warren Buffett says we need to understand accounting numbers are just the beginning and not the end of valuation. Just because the company is not showing profit currently does not mean it does not have a value. It may have a value. So valuation will always come from future, that future may have. So if I'm acquiring so much of customers today, despite giving so much of cash back, so I'll assume that after 5 years, they will become habitual to my app and they will not move anyway. I may earn money in the future. That is always goes. Under Section Companies Act, there are so many sections which require mandatory report of registered valuer. There is a confusion that should we go for a registered land valuer or registered PM valuer for issuing shares certificate along with SFA. It is cleared that if there is a company which is having only land, building and plant and machinery and other assets, it is always advisable to have all three valuations in a Companies Act. Generally, bigger companies prefer that, but smaller companies, due to cost of hiring three valuers, try to avoid that. We'll come to that point shortly. Index is mandatory. Now IBC all you would have covered. Mandatory, you need to appoint two valuers in IBC. So it means any two valuers or six valuers? Two for each asset class or any two valuers will work out? What do you think? What does the regulation says? Two valuers. Should it be two or six? Two registered values. So it should be, so there are three asset classes, right? Land, building, plant and machinery, and SFA. So IP can appoint only two valuers, he's fine, or he has to appoint six, two for each asset class. Practically, आपको क्या लगता है? Two for each. Two for each. So it is, sir, आपका रामशंकर सर, आपका mic mute पे है सर. Sir, there may be two registered valuers with different class. तो नहीं, मेरा क्वेश्चन वो है सर, तो 6 करें या 2 करें? तो आपके हिसाब से मान लीजिए सिक्योरिटीज के हैं वो डायरेक्टर, तो फिर 2 प्लांट एंड मशीनरी और उसका कर देंगे लैंड एंड बिल्डिंग का, तो 2 से चल जाएगा सर. अच्छा सर, तो हमारा काम कम कर रहे हैं सर, इसका मतलब सर पहले क्या होता था? पहले क्या था, आप जैसा बोल रहे हैं वैसा बिल्कुल पहले होता था, क्योंकि पहले कंफ्यूजन था. और आरपी का क्या प्रॉब्लम होता था इंसॉल्वेंसी का? वो कहता था सर मैं 6 आदमी से कैसे डील करूं, तो मैं एक रामशंकर जी को बना दूंगा, एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर वो आईबीबीआई लैंड के हैं, और एक सुमित अड्डा को बना दूंगा. अब सुमित अपने हिसाब से 2 और प्लांट एंड मशीनरी और लैंड एंड बिल्डिंग को ढूंढ लेगा, रामशंकर जी एक एसएफए और एक प्लांट को ढूंढ के वो अपनी कॉस्ट में इंक्लूड करके मुझे दे देंगे. ये पहले ऐसा होता था, साल भर ऐसा खूब चला, साल भर आईपीज ने भी 2-2 अपॉइंट करके चले. बट देन आईबीबीआई वोक्ड अप, आईबीबीआई बोला नहीं ये गलत है. आईबीबीआई बोलते हैं हमारा इंटेंट ये नहीं था, क्योंकि फिर क्या होने लगा, मैंने 2 जनों को रख लिया अपने पास में और मैं बोलूंगा मैं तो 1 लाख लूंगा, आपको मैं 10-10 हजार दूंगा. सो आईबीबीआई से इट इज नॉट फेयर, वी डू नॉट वांट अ combination, we want independent people. So IBBA said now, as of now, the rule is mandatory 6 valuers or 2 entities. If suppose there is a one firm which says we have 3 valuers, registered valuer entity, then IP can appoint 2 entities, or you go with 6 valuers. So that is one. So it should be 2 for each asset class. Now it is very clear. Now IBBA has given a clear guidance. Okay. Now you tell me, you all are very senior and all are professionals. If 2 valuers are doing a value, will the value come same or different? May come different. Different. Sir, मेरा दूसरा submission है इसमें, it should not may come different, it should come different. The problem is if it comes same. Now, सर आप अपने आपको आईपी या कमिटी ऑफ क्रेडिटर की टेबल पे बैठ के सोचिए, 2 वैल्यूड ने रिपोर्ट दी आपको और दोनों की सेम आ रही है, 100 रुपीज 100 रुपीज. आपको नहीं लगेगा दोनों ने मिल बैठ के शाम को कैफे कॉफी डे में बैठे हैं, शाम को मिलके दोनों ने रिपोर्ट डिस्कस कर ली और सेम वैल्यू दे दी? होगा नहीं होगा? अगर 2 समझदार आदमी अपने कमरे में बैठ के ऑफिस में बैठ के रिपोर्ट्स बना रहे हैं किसी पे, पॉसिबल है कि दोनों का सेम नंबर आए? अनलाइकली. अगर सेम नंबर आता है फॉर एनी रीजन, जेन्युइनली भी आता है, आई सीओसी क्वेश्चंस कि हाउ कैन 2 वैल्यूज गिव अ सेम वैल्यू, बिकॉज कुछ तो थॉट प्रोसेस आपका डिफरेंट होगा. सपोज आप बोलते हैं मैं
10% डिस्काउंट दूंगा बीइंग इन अ स्लम एरिया और बीइंग सराउंडेड बाय स्लम, आप बोलोगे मैं 10 नहीं मैं 20% डिस्काउंट दूंगा, तो हर वैल्यूअर का एक थॉट प्रोसेस अलग होता है. सो आईबीसी में रूल है कि इफ टू वैल्यूअर्स आर गिविंग अ डिफरेंट वैल्यू इट इज एक्सेप्टेबल. ऐसा नहीं कि गलत माना जाएगा, हो सकता है मैंने 100 दिया, रामशंकर जी ने 200 दिया, स्टिल एक्सेप्टेबल. बट आईबीपीएस सेज if the two values have given a value and there is a difference in value, there is a significant difference in value, you need to appoint third valuer. और एग्जाम में इसी पे कंसेप्ट पे क्वेश्चन आता है, बिकॉज आईबीसी में आपके लिए मतलब का सिर्फ वैल्यूएशन का यही पोर्शन है, दैट इज की कंटेंट. सो आई एम श्योर ये आपका शायद कवर हो चुका होगा, बट अगेन जस्ट टू रिफ्रेश, अगर आपका टू वैल्यूअर्स ने रिपोर्ट दिया, एक ने रिपोर्ट दिया 100 करोड़ वैल्यूएशन असेट का, दूसरा वैल्यू ने दिया 300 करोड़ असेट का, तो सिग्निफिकेंट डिफरेंस हो गया. सो वी अपॉइंटेड अ थर्ड वैल्यूअर एंड थर्ड वैल्यूअर इज गिवन अ 400 करोड़ वैल्यूएशन. नाउ व्हाट शुड बी द फेयर वैल्यू फॉर आईपी? somebody need to answer this one. आपको दो वैल्यूअर से रिपोर्ट आया, पहले ने 100 करोड़ दिया, दूसरे ने 300 करोड़ दिया, आपको सिग्निफिकेंट डिफरेंस लगा, आपने थर्ड वैल्यूअर को अपॉइंट करा, उसने 400 करोड़ दे दिया. नाउ व्हाट वैल्यू शुड आरपी टेल the committee of creditors, sir, this is the fair value based on my working of reports, 3 reports. It should be 300 crores because third valuer has given 400 crore, so it should be go higher side. It should be average of the 3. Average of the 3. Okay. Anybody has a different view? ये तो वो वाली बात हो गई, दो और दो कितने होते हैं, आपको कितने चाहिए? हाँ 400 जो है it is near to 300 but not as high as 600, so 400 is reasonable value even if it is inflated. ठीक है. अब आईबीबीए ने ये सब सोचा पहले से भी, जब रूल्स बनाया आईबीबीए ने, तो आईबीबीए थॉट ऑफ दिस दैट इट मे हैपन. नाउ बिफोर वी कम टू द आंसर, विल कम फर्स्ट क्वेश्चन नाउ, बिफोर वी अंडरस्टैंड द आंसर, व्हाट डू वी मीन बाय सिग्निफिकेंट डिफरेंस? कोई डेफिनेशन है इसकी सिग्निफिकेंट डिफरेंस की? देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट डिफरेंस. बट व्हाट इज प्रैक्टिकल? इंडस्ट्री में क्या ट्रेंड है? फ्रॉम 20 to 25% इज कंसिडर्ड नॉर्मल. अगर मैंने 100 रुपए का वैल्यू दिया और आपने 120 से 125 दिया या 80 75 दिया, इट इज कंसिडर्ड नॉर्मल, इट इज नॉट कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट डिफरेंस. सो दैट इज वन. बट अगर सिग्निफिकेंट डिफरेंस होता है, हमें लगता है 50% से ऊपर हो रहा है, इट इज हायर, so IBB has given a rule, the RP need to take the average of two closest value out of the 3 reports. So then in this case जो मैंने क्वेश्चन पूछा उसका आंसर होगा 350 crores. The RP will take a valuation of 300 crore and 400 crore and it will go to average of 300 and 400 crore and go to 350 crore. So just note this concept, it should be average of two closest value which is coming. You may ask a question, suppose पहले वाले ने वैल्यू दिया 100 करोड़, दूसरे वाले ने वैल्यू दिया 200 करोड़ एंड तीसरे वाले ने वैल्यू दिया 300 करोड़. सब में 100 करोड़ का डिफरेंस है, नियर बाय डिफरेंसेस है. अब मैं किसको लूं? टू क्लोजेस्ट वैल्यू कौन सी है? इन दैट केस आल्सो यू नीड टू टेक 200 and 300. व्हाई? You will not take 100 crore and 200 crore average, you will take average of 200 crore and 300 crore average, even though the difference is same in all. Because what is the intent of valuation of this exercise? A company is in trouble and we want to get a fair value so that a buyer can acquire the company. So we are selling a company, we will prefer to get a higher value for us. So we will always take 200 and 300 average in that case, even if the valuation is coming same. So just remember this concept, and for exam, simple question comes of 1 marks on this. So understand this concept, and this is in the rules itself. So IBBA do not want to have this kind of confusion. Now just understand one last point. In IBBI, there are two things: insolvency process and liquidation process. So when it is going into insolvency, you appoint two valuers, and if there is a difference come, you appoint a third valuer. Suppose the insolvency process fails, it does not work. After 1 year, the company is going into liquidation. In liquidation also, we get again two valuers are appointed. When I say 2, 6 valuers are appointed again in liquidation also. If there are 6 valuers appointed in liquidation, and if the difference come in the value, then we do not appoint third valuer in liquidation.
You do not appoint third valuer in liquidation because the company is going to end. So it does not matter how much value you come, you just sell it off. But in insolvency, you appoint third valuer. So just understand this point. In insolvency process, you give two valuations. You give fair value and you give liquidation value also. You give both valuation at the same time. So if I'm doing, if any IBC appoints you to do a valuation today, you need to do a fair value of the same asset, assuming business will continue. And the same day, you also need to give a liquidation value, assuming the business may close tomorrow. You just need to remember that in liquidation, you will only give liquidation value. In insolvency process, you will give both the values. Okay. So mandatory, we discussed, we need to have Companies Act and IBC, which is mandatory. Non-mandatories is SEBI, income tax, RBI are non-mandatory for registered valuer as of now. It's optional. But one ray of hope for all valuers is the new draft valuers bill. That is a ray of hope. So as I said, in Companies Act, we have only one section 247. Now in this valuer bill, we are getting a full act only on valuation, which will give us a huge power. And the only thing which I am very hopeful, the preamble of the act itself says that first, when this bill passes, we'll first include Companies Act and IBC as usual, which is going. In future, we will include mandatory 14 other acts. So they named the few acts also. They say Banking Act, RBI, Income Tax, SEBI, FEMA. They will also take registered valuer certificate mandatory. So it's a huge opportunity. And majority of work will come under income tax because a lot of people buy, sell their properties. So it's a huge opportunity. Though I expect it will take at least 1 or 2 years to get the new bill passed. And the benefit is whenever we become registered valuer, automatically you will be converted into new bill. So we don't need to give exam again. We don't need to pass again. Once who passed now would be automatically converted a valuer. Suppose you do not give exam for next 1 year, suppose, and the bill gets passed. So what is the provision in the bill? In that case, who have already completed 50 hours training now will be given a 3-year timeline. Pass, give the exam in the old syllabus and automatically become the valuer in the new act. So 3-year timeline is always there, but I don't think anybody would like to take this 3-year opportunity. We would like to give exam in next 2 to 3 months. I always say there are 3 valuation approaches for always, and these approaches are worldwide. Understand the difference between methods and approaches. Approaches are only 3: past, present, future. Kal, aajkal. Kal means cost approach. Aapne kitni cost kharch kari, that is a cost approach. Aaj is market approach. How much competitive market somebody is giving. So you have a property in, let's say, Karol Bagh. How much your neighbor is able to sell the property, that is a market approach. And Kal is an income approach. How much in future you can earn by making a property on that, a rental property. So that's a future approach. There are 3 approaches. In exam, a question can come, what are approaches and what are methods? You need to know the names of methods also. Practically, you should read the names of method. They should be as per your syllabus. Now we'll come to the rules. What does the rule say? The valuation rule says, till the time central government, so they say whenever we do any valuation, we need to follow the standard notified by central government. As of today, central government has not made any standard. So there is no standard sponsored by central government. So it's free. So then we come to the proviso. The proviso says, till the time standard government does not adopt any standard, you can do a valuation as per internationally accepted valuation standards, either and any standard adopted by RVO. So depends on your industry. So like for you use RICS or any other standard globally which is accepted, you can do valuation as per that. So whenever you need to do valuation, you need to choose which standard you are using. Once central government notifies the standard, everybody needs to follow that standard, irrespective of whichever RVO you are. It does not matter which RVO you belong, but once central government says, everybody needs to do that. Till the time central government does not says, whatever the act says. So suppose if you are following FEMA, FEMA will give you particular method, follow that. If the act is silent, follow globally accepted standards. If globally accepted is not there, then follow whatever RVO is doing. So as of now, I think only IOV has adopted some standards for land and building and PM. There are only 2 RVOs, I guess, 1 or 2 RVOs that are adopted. Rest you are free to choose whatever you want.
there are internationally, there are so many standards, depends on which you want to use. For SFA people, securities assets, they generally use IVSC Standards Council. You can use TAF, RICS, or depending on what kind of society you belong to, you can connect that value. So this is a small brief about, now we just go through some valuation rules. Now you may have a query and you may protest, but you need to surrender. You are all my hostages for next 1 hour. You will say you are not even taught valuation rules and still you're taking exam. And then why I'm taking that, I will tell you shortly. Quickly answer these questions on chat if possible, so that, and why I'm doing this, without reading, we try to understand how much you can make guesswork. So this will tell you whether your guesswork is right or wrong, and whatever mistakes you will do, commit here now, in exam you will not commit those mistakes for sure. So start chat, if you can use chat options and quickly respond. 10 years. We got one answer. We got two answers. We got two answers. We got DBD, so we got all answers. Okay, now just note down. For valuation rules, it is 3 years. Okay, as for valuation rules, it is 3 years. If you go to the valuation rules, okay. Why people get confused with 8 and 10 years? Because generally income tax says 8 years, Companies Act says 10 years. So we always think, but in the valuation rules itself, the PDF which I have given you, they have mentioned it should be 3 years minimum. That's a minimum. You can keep 10 years, nobody will stop you, but minimum is 3 years. Quickly answer this one. Achha, one tip for MCQs is, whenever you do not understand the meaning of any word, that will be the answer. So that's on a lighter note. Do not take it sincerely. Ethical. Now the problem with this kind of question is, all answers look correct. All answers almost fit. That I think that should be the correct answer. But the correct answer will be only one which is written to the rules. And the rules, they have written the word forthright. We'll come to the rules shortly after 5 minutes, but we need to understand why, if we don't read the rules, we'll not be able to clear this MCQs clearly. And these MCQs and this professional ethics, valuation rules, I consider them as a low-hanging fruit. Without any efforts, just need to read plain once, and you can clear the exam by these points. Quickly answer this. And this is a test of our English language. If our English is very good, we can get this answer very well without even reading. Okay. Now you tell me, as a professional, as a valuer, what do you render? Service. Then what should be the answer? You render service. Yes. So you do not render integrity. You portray integrity, you display professionalism, you follow ethics, you render service. I know for me it is very easy because I have passed the exam, I have read the rules. For you, the point I'm trying to bring home is, you need to apply logically to answer these kind of questions, because 3 to 6 marks will come from this rules and regulations, so which are very simple, because they cannot do any jugglery. It's not a calculation involved. We just need to read it once thoroughly and we'll be able to go through. Quickly review. Quickly answer. इसका C तो कभी आंसर नहीं हो सकता. C can never be the answer. Why C can never be the answer? अगर हमसे कोई बोलेगा it is expected. B. It's B. B. Okay. So C cannot be the answer for sure, because if something is expected from you, हम कभी नहीं करेंगे, right? आपसे expectation है, आप वोट दे के आए, हम नहीं दे के आते हैं, क्योंकि expected है. But जहाँ compulsory हो गया कि हमको mandatory देना, तो हम देते हैं, right? Now, answer may be between A, B, and D. Remember one point: answer is B. And why answer is B?
Just remember one simple concept. In law, we never use the word should. Whenever the rules are framed and laws are made, any MCA or any Companies Act law, they will only use the two words shall and may. Shall is considered as a should. So literally shall means should, but they don't write should in the law. You will not find anywhere in the law. Quickly answer this one. This question is very tricky question because all look simple, all look same. So that is a challenge when everything looks same. Complete independency in his professionalism and shall conduct the evaluation independent of Externalities. It's D. जब मेरा एग्जाम हुआ था फर्स्ट टाइम, आई क्लियर्ड इन 2 अटेम्प्ट्स. इन फर्स्ट अटेम्प्ट आई गॉट 59.5. उसमें इसी क्वेश्चन की वजह से मैं फेल हुआ था, और सेकंड अटेम्प्ट में आई गॉट 75%. तो मैंने भी एक्सटर्नलिटीज टिक करके आ गया था मैं, क्योंकि एक्सटर्नलिटीज का मतलब क्या लगता है, मैं पूरा ब्रह्मांड कवर है इसके अंदर, सब कुछ डाल दो उसमें, सब आ गया. ये मैं भी यही सोचा था, बिल्कुल एग्जैक्टली. और संजीव जी, ग्रेट माइंड थिंग्स अलाइक, तो मैंने भी ऐसे सोचा था. फिर जब आंसर फेल हो के आया घर में, तो मैं वापस बुक पढ़ी एक बार, तो पता चला आंसर गलत है. अब आप मुझे बताइए, मैंने एक वर्ड यूज करा था थोड़े टाइम पहले, जब मैंने बोला था आप असाइनमेंट ना लें. अगर मैं आज इस साल वैल्यूएशन कर दिया तो अगले 3 साल में मैं असाइनमेंट नहीं लेना चाहिए. क्या नहीं हो सकता? मैं एक वर्ड यूज करा था मैंने, अगर आपको वर्ड ध्यान आएगा तो आपको आंसर आ जाएगा. व्हाट द वैल्यू शुड नॉट हैव, ए और बी में से एक आंसर है. external factor. Influence, उसको influence, external influence. External influence, because you should not be influenced by a value, by a client. तभी आपकी इंडिपेंडेंसी क्वेश्चन होती है. तो इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए आपको. ये तो सबको आना चाहिए. आई एम श्योर नोबडी शुड गो रॉन्ग ऑन दिस विदाउट इवन रीडिंग. मैंडेटरी सबको आना चाहिए. सक्सेस फी रूल्स में लिखा है, आप सक्सेस फी चार्ज नहीं कर सकते. कम करना है फ्री में करना है, फ्री में करो. ज्यादा करना है ज्यादा करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. सक्सेस फी आप नहीं ले सकते कभी. Quickly we'll go through questions quickly, ताकि मुझे बहुत सारा कवर करना है. I want to cover for exams and registration process also. अब इसका आंसर होगा रिटन कंटेम्परेनियस. ये क्या बोलता है, जो भी वैल्यू और वैल्यूएशन करे उसको ऐसा डॉक्यूमेंट करना चाहिए कि आपने जो भी जजमेंट्स लिए, सपोज आपने वैल्यूएशन करा लैंड का लेट से, और आपने बोला सर्कल रेट एक्स है, तो ये सर्कल रेट आपने खुद ने तो नंबर नहीं बनाया, आपने कहीं से पढ़ा होगा या कहीं से आपने बेस लिया होगा. वो बेस को अपनी फाइल में लगाइए, सो दैट कल को आईबीबी आपका रिव्यू करे फाइल, तो जो समझदार वैल्यूअर होगा वो आपकी फाइल में देखेगा द सर्कल रेट हैज बीन टेकन फ्रॉम दिस डॉक्यूमेंट. दैट मींस आपने सब्जेक्टिविटी कुछ इन्वॉल्व नहीं है आपकी. सो वॉट एवर यू आर टेकिंग डिसीजंस, उसका डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए, ताकि कोई भी समझदार आदमी आपके लेवल का नॉलेज का पढ़े तो बिना आपसे पूछे ही कैन मेक आउट. So we call a term like the document should speak itself. Document खुद बोलेगा कि this is the way I have been valued by the previous valuer. So it should be written contemporaneous. अब इसमें सी और डी कभी ऑप्शन नहीं हो सकते. रेगुलेटर कभी नहीं बोलेगा आप ऑनेस्ट बनिए, हो तो ऑनेस्ट एक्सपेक्टेड ही आपसे. यू हैव टू ऑनेस्ट, हम्बल आपको होना ही पड़ेगा, नहीं तो सीबीआई हम्बल कर देगी अपने को. रेगुलेटरी अथॉरिटी विल ऑलवेज मेक यू हम्बल. ए और बी. आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से चिट्ठी आएगी, आप बोलोगे मैं तो रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा. या रिस्पॉन्ड करना तो जरूरी हो जाता है, मैंडेटरी रिस्पॉन्ड करना एज अ प्रोफेशनल, व्हाटएवर यू गेट अ लेटर. सो आईबीबी आपसे इतना से रिक्वेस्ट करती है कि आप कोऑपरेट करो, बस जो भी अथॉरिटीज आ रही है उनसे कोऑपरेट करो और उनको सब जो भी बताना है बता दो. यहाँ पे हमारा कॉन्फिडेंशियली क्लॉज खत्म हो जाता है. हमारे रूल्स में है, अगर कोई एजेंसी हमसे मांगती है इन्फॉर्मेशन, आई नीड टू गिव दैट इन्फॉर्मेशन इवन इफ क्लाइंट ने मुझसे एनडीए साइन कराओ तब भी. इसको आप लॉजिकली सोचेंगे तो आपको सबका करेक्ट आंसर आ जाएगा. लॉजिकली सोचेंगे तो मैंने तो एग्जाम में गलती कर दी थी, मैं तो सुप्रीम कोर्ट टिक करके आ गया था. मुझे भी लगा सुप्रीम कोर्ट पाप होता है सबका. कॉमन सेंस इज ए, क्योंकि जब अपेलेट ट्रिब्यूनल आ रहा है तो उससे पहले ट्रिब्यूनल भी आएगा. तो दैट इज अ लॉजिकल कंक्लूजन एंड दैट इज अ करेक्ट कंक्लूजन.
I'll take last 2 more questions on this, then we'll go to the rules. I'll quickly answer. Tell you this looks very difficult. I'll take this answer. It is undermines. इसका undermines नहीं होना चाहिए. It's a typical. I'll cover this also, but just to save time, I'm just rushing. Last question, and then we'll go to understand the rules. देखिए, अगर मैंने रूल्स नहीं भी पढ़े होंगे ना, तो मुझे इतना तो पता है बी और डी इसका आंसर नहीं हो सकते. डी इसलिए नहीं हो सकता, रूल्स में थोड़ा ना लिखेगा इसको ब्लैक लेबल मत देना, ओल्ड मॉन्क मत देना, वो तो नहीं लिखेगा. लिकर तो नहीं लिख सकता, राइट? रूल्स में तो लिकर डज नॉट साउंड्स गुड इन रूल्स. It's incentives. किकबैक भी अच्छा नहीं लगता. किकबैक एक्चुअली में किकबैक होता है, यू नो, मैं बोलूंगा मुझे असाइनमेंट दो, मैं आपको आधा पैसे दे दूंगा, 10% दे दूंगा, वो किकबैक होता है. बट रूल्स में लिख नहीं सकते किकबैक. डज नॉट साउंड अ गुड पार्लियामेंट्री वर्ड टू राइट इन रूल्स. चॉइस गोज बिटवीन ए एंड सी. अब कॉमन सेंस से इंग्लिश अगर आप ढंग से पढ़ लिए तो सही पकड़े हैं आप. बताइए कहाँ गलती हो रही है? पता है कॉमन सेंस क्या बोलता है? इंसेंटिव शुड बी आंसर. कॉमन सेंस इज, क्योंकि एंड ये नॉट ओनली आप, आई हैव टेकन सेशन विद सीए, सीएमए, सीएस, एमबीए, सब इंसेंटिव पकड़ते हैं. फिर 2 मिनट देखते हैं क्वेश्चन को, फिर उनको रियलाइज होता है इंसेंटिव गलत आंसर है. क्यों गलत आंसर है इंसेंटिव? इट शुड हैव बीन एन. एग्जैक्टली मिस्टर कामत, क्योंकि यहाँ वर्ड में ए लिखा हुआ है. सो टू बिफोर वॉवल्स, रिमेंबर हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था या केजी में कहीं तो पढ़ा हुआ ए. सो ए बिकम्स फाइनेंशियल. सो इसका आंसर फाइनेंशियल है. और हमारा क्या प्रॉब्लम है, हम चार्टेड जो एटलीस्ट जो हम सीए, सीएस, एमबीए होते हैं, हमारे लिए फाइनेंशियल का मतलब सिर्फ बैलेंस शीट, पी&एल होता है. बट ये रूल्स कहाँ से कॉपी हुए? ये रूल्स कॉपी हुए यूके से. यूके में फाइनेंशियल का मतलब लेन देन भी होता है कि भाई हाउ मच ट्रांजैक्शन यू आर हैपनिंग. सो दैट इज अ प्रॉब्लम. आपका फॉर्म एबीसीडी आपको याद है, पता है फॉर्म एबीसीडी किसके लिए होता है? एग्जाम में क्वेश्चन सिंपल से आता है. फॉर्म ए किसको देना होता है? कौन भरता है फॉर्म ए? मेंबर्स के लिए. मेंबरशिप नहीं, कौन मेंबरशिप? कौन? इंडिविजुअल, कंपनी? इंडिविजुअल. कितने रुपए फीस? कितनी? 5,000. आप जो फीस बोल रहे हो वो विजय जी वाली फीस बोल रहे हो. ये फीस आईबीबीए वाली फीस है एग्जाम में, कि वहां पे कितनी फीस देनी है आईबीबीए को. दैट इज 5,000. एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन आता है, इंडिविजुअल को रजिस्टर करना है तो कौन सा फॉर्म, कितनी फीस, एक मार्क्स से क्वेश्चन. फॉर्म बी किसके लिए है? कंपनीज. पार्टनरशिप कंपनीज. कितने पैसे? 1 लाख. 1 लाख. अरे नहीं, बहुत ज्यादा हो गया. 1 लाख में तो बढ़ेगी नहीं कभी कंपनी हमारी. 10,000 रुपीज. 10,000 रुपीज. ठीक है. ये जब मैं आपको स्लाइड दूंगा तो एटलीस्ट आप ये फॉर्म्स वाला जरूर पढ़ लीजिएगा. एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन आता है इस पे. फॉर्म सी किसके लिए? आईबीबीआई. आपको सर्टिफिकेट देगा आईबीबीआई. आपने जो भी फॉर्म ए या बी भरा होगा उसके अगेंस्ट आईबीबीआई आपको सर्टिफिकेट देगा. फॉर्म डी किसके लिए? आरबीओ के लिए. आरबीओ के लिए. और इसकी फीस क्या है? 1 लाख. इसकी 1 लाख. टू मेक अ फॉर आईबीबीआई आरबीओ यू नीड टू फिल अ फॉर्म डी और 1 लाख फीस. और कितने रुपए में कितनी? फॉर्म ई किसके लिए? सोचो सोचो. सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन. व्हाट इज फॉर्म सिमिलर टू फॉर्म सी? फॉर्म ई इज फॉर सर्टिफिकेट. फॉर्म ई में आईबीबीआई सर्टिफिकेट देगा आरबीओ को. आरबीओ को आईबीबीआई सर्टिफिकेट देगा. तो ए बी सी डी ये 5 फॉर्म क्लियर हो गए. फिर एक क्वेश्चन आता है टाइमलाइंस का. मैं आज एग्जाम पास कर गया, आज मैंने फॉर्म ए भर दिया आईबीबीआई वेबसाइट पे. अब कितने दिन में आईबीबीआई को मेरी अप्रूव करनी है मेंबरशिप? हाउ मेनी डेज? 60 days. 60 days. So timeline is within 60 days IBBA should approve. Suppose मैंने फॉर्म भरा और फॉर्म भरने में मैंने गलती कर दी, कुछ मैंने टाइपो एरर कर दिया या आई डिड सम goof up, कुछ भी मैंने कर दिया. कितने दिन IBBA मुझे देगा ठीक करने के लिए? 21 days. Suppose IBBA ने फॉर्म देखा मेरा और बोला मुझे आपको मेंबरशिप नहीं देनी. हो सकता है पॉसिबल? मैंने एग्जाम पास कर लिया, फॉर्म भरा, आईबीबीआई बोले मुझे आपको मेंबरशिप नहीं देनी. ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता? पास करने के बाद भी आईबीबीआई बोले मैं नहीं देना चाहता. हाँ ना? हो सकता है. किस कारण पे हो सकता है? कैसे ग्राउंड्स हो सकते हैं? क्या रीजन हो सकता है कि मैं तो पास हो गया? Eligibility might not be there as per Eligibility might not be there. Correct. 1 second. Case. No. A criminal case or civil case going against you. Yes. Conviction. Third, your CIBIL record is bad. पता चला हमने तो बैंक से 10 बैंक से लोन लेके रखा है,
और हम पे किसी को नहीं कर रहे, तो IBBA बोलेगा भाई if you are becoming a government valuer, we are giving a certificate power, if your conduct is not good, how can we assume you will do a good job? So अगर आपका सिविल खराब है, आपका कोई केस चल रहा है, जिस इंस्टीट्यूट में आपकी प्राइम मेंबरशिप है वहां पे आपके अगेंस्ट कोई इंक्वायरी चल रही है, इवन दो इट इज जस्ट ए इंक्वायरी, नो प्रूफ हैज बीन अगेंस्ट यू, दे विल स्टिल नॉट गिव यू मेंबरशिप. सो आपके अगेंस्ट कोई सिविल केस चल रहा है, लेट्स से किसी का कोई फैमिली मैटर चल रहा है, सो देयर वाज अ लॉयर जिसका हस्बैंड वाइफ का झगड़ा चल रहा था, वाइफ ने बोला हस्बैंड मुझे मारता है, तो केस चल रहा था, IBBA डिड नॉट गिव ए मेंबरशिप. तो हस्बैंड सेड आप ये तो पता करो मैं पिट रहा हूँ या मैं पीट रहा हूँ, पता करो को दोनों में से किसकी हालत खराब हो रही है. बट फिर भी IBBA said till the case is not decided by court we will not give you membership, even if it is under a benefit of doubt we will not give you. So IBBA ने एक रूल बना रखा है, अगर IBBA को लगता है कि हमें आपकी मेंबरशिप नहीं देनी है हमें आपको, तो IBBA को कितने दिन में आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा फॉर्म भरने के? 14 days नहीं, 45 days. आपके फॉर्म भरने के अगर IBBA ने सोच लिया कि हम आपको मेंबरशिप नहीं देना चाहते, within 45 days they will give you a notice and they will give you an opportunity which says that we think we don't want to give you membership based on these grounds. We will give you an opportunity to answer why you should be granted a membership. कितने दिन की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए हमें रिस्पॉन्ड करने के लिए? 7 days. 15 days. So IBBA says within 15 days of receiving notice you respond and let us know why you deserve to get a membership. और कई बार ऐसा होता है आपने कोई रिस्पॉन्ड करा, IBBA will accept. फॉर एग्जांपल आपका कोई ने क्रेडिट कार्ड चुरा लिया और उसमें 1 लाख रुपए की शॉपिंग कर दी और आपने पे नहीं करा, आपने FIR लगा दी, तो आप तो पे नहीं करोगे बट सिविल में आपका क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट बोलेगा. बट इफ यू शो द FIR कॉपी, इफ यू शो द कम्युनिकेशन प्रूफ, IBBA will accept it. ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है. Now after I give this notice, within 30 days IBBA need to finally respond, should we give you or not give you. So आपको ये rules और ये days and timelines थोड़ा याद रखना पड़ेगा. Now if you all can, अगर आपको मैं I'll try to show you, if not अगर आप वो जो मैंने आपको PDF डॉक्यूमेंट भेजा था अगर हम वो खोल लेते हैं तो आपके लिए थोड़ा सा easy हो जाएगा. एक मैंने आपको WhatsApp पे PDF भेजा हुआ है, if you can open that that will be good, else I will try to show here. but कई बार क्या PDF मूव नहीं करता फास्ट. सर प्लीज सर. अगर IBBA रिजेक्ट कर देता तो उसके बाद फिर से एग्जाम देना पड़ेगा? नहीं, एग्जाम का तो इशू ही नहीं होगा. इशू फिर आपका ये होगा कि डू यू आर एलिजिबल और नॉट. एग्जाम को कभी नहीं देना पड़ेगा हमें. एक बार पास हो गए तो वो लाइफ लॉन्ग पास है. लाइफ लॉन्ग तो नहीं बोलूंगा मैं, एक बार पास हो गए तो 3 साल का हमारे पास टाइम पीरियड है. अगर मैं एक बार पास हो जाता हूँ तो मुझे 3 साल के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है. सपोज आप मान लीजिए आज आप मान लीजिए गवर्नमेंट जॉब में है, आप PWD में है या किसी मिनिस्ट्री में है, कहीं पे भी जॉब करते हैं अच्छी कंपनी में, आपने एग्जाम पास कर लिया, IBBA गिव्स यू 3 years टाइमलाइन कि 3 साल में आप डिसाइड कर लो आपको प्रैक्टिस करनी है या जॉब ही करना है. क्योंकि अगर आप जॉब करोगे तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा. वेरी क्लियर. आपको टू गेट ए मेंबरशिप ऑफ IBBA RV यू नीड टू इनटू प्रैक्टिस ओनली. तो आपको जॉब छोड़ना पड़ेगा. बट अगर सपोज जैसे मेरे कोई क्वालिफिकेशन, लेट्स से मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरा कोई सिविल खराब है, तो जब तक मैं सिविल ठीक नहीं करूंगा IBBA मुझे मेंबरशिप नहीं देगा. या सपोज आप घर के 3 फैमिली बिजनेस में पार्टनर हो और वहां पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो, नॉन एग्जीक्यूटिव नहीं एग्जीक्यूटिव, यू आर MD चेयरमैन, तो वो आपको पूछेगा भाई या तो आप रिजाइन करो डायरेक्टरशिप से और यू बिकम ए नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, हम आपको देंगे. पास का इशू नहीं है इसमें, पास तो एक बार हो गए. जैसे भी आप अभी जाएंगे, आई एम नॉट श्योर, एक जस्ट गिव मी मिनट, मैं आपको केस वाला बता दूं. एक इसमें क्वालिफिकेशन है कि आपको किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ना है और वो 5 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, ऐसा कुछ है. तो अभी जस्ट 21 जुलाई को IBBA ने एक रिजेक्ट करा एक आदमी को, ही पास द एग्जाम, बट जिसने क्वालिफिकेशन बताई थी जहां जिस कॉलेज से मैं पढ़ा हूं, तो देयर वाज सम कॉलेज समवेयर इन साउथ इंडिया दैट डिड नॉट हैव दोस टॉपिक्स. सो सी अगर आपने पोस्टल से कहीं ग्रेजुएशन कर ली और उसमें बोला कि ये टॉपिक्स मेरे पास हैं, वेयर लैंड एंड बिल्डिंग का एक्सपोजर है, और पता चला IBBA ने वो डेटा मंगवा लिया उस कॉलेज से और कॉलेज ने बोला हमारे पास तो ये सब्जेक्ट ही नहीं था, तो IBBA रिजेक्टेड दैट. तो अगर वैसा होगा तो नहीं कर सकते, बट आप क्वालिफिकेशन ले लो तो यू कैन ऑलवेज गेट एलिजिबल रजिस्टर्ड. एंड IBBA इज वेरी सपोर्टिव, ऐसा नहीं सपोर्ट करता. नाउ वंस यू गेट द वैल्यूएशन रूल्स, अच्छा बिफोर दैट लेट मी नो, आप लोगों को पता है एग्जाम में रजिस्टर कैसे करना है? वंस यू पास द एग्जाम, वंस यू कंप्लीट द कोर्स में क्या करना है, आइडिया है?
समझ गया सर, समझ गया, नहीं आइडिया, ठीक है, ओके ठीक है, मे बी आई विल टेक 10 minutes फॉर दैट आल्सो, हाउ टू रजिस्टर फॉर एग्जाम. नाउ ये वैल्यूएशन रूल्स आपसे बिटवीन 2 to 4 मार्क्स विल बी देयर इजीली, तो उसको एक बार ढंग से पढ़ना है बिफोर यू गो टू एग्जाम. सेक्शन 247 पढ़ना है आपको, सेक्शन 458, 59, 69 एक बार पढ़ना है. इसमें क्यों पढ़ना है हमें? ये सेक्शन पेनल्टीज बताता है कि कितनी पेनल्टीज हैं, तो यू विल गेट एन आइडिया कि अगर मैंने फ्रॉडलेंट रिपोर्ट करी तो मेरी क्या पेनल्टीज है, और ये सबके लिए लगेंगी, ये खाली सीए सीएस के लिए नहीं लगेंगी, सारे वैल्यूज के लिए इक्वल लगेंगी. ठीक है, अब अगर आप लिख सकते हैं तो लिखते रहिए, या पढ़ देख सकते हैं तो देखते रहिए, दोनों में से कुछ भी कर लीजिए, वॉट एवर इज कन्वीनियंट. व्हाट इज द डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस रूल? 18 अक्टूबर 2017. ये रूल स्टार्ट हुआ था 18 अक्टूबर 2017 से. राइट, फर्स्ट पॉइंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, सेकंड पॉइंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, थर्ड पॉइंट में जो पढ़ने की जरूरत है, थर्ड पॉइंट में जो पढ़ना है, एक बार प्लेन रीडिंग कर लीजिए, थर्ड पॉइंट की प्लेन रीडिंग. थर्ड पॉइंट में सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स पढ़ने हैं, सबसे इंपॉर्टेंट हमें क्लॉज, एक सेकेंड, क्लॉज आई. व्हाट डज क्लॉज आई सेज? अगर आप कभी कोई जेल गए हैं, मैं नहीं कह रहा आप कभी गए, मतलब ये पढ़ने के रूल्स में, अगर कोई कभी जेल गया है 6 महीने से ऊपर, तो जब तक हमें वो 5 साल पास नहीं होते तब तक मैं रजिस्टर नहीं हो सकता आईबीबीए के लिए. सो इफ somebody has gone for a jail exceeding 6 months, till the time 5 years passes, he cannot register. One. Second, अगर आप कभी 7 साल से ऊपर जेल चले गए तो आप कभी लाइफ में रजिस्टर्ड वैल्यू नहीं बन सकते, ये एक्सेप्शन है. दैट इज वन. सेकेंड एक ये लिख लीजिए, कभी आपको इनकम टैक्स में पेनल्टी लग गई अंडर सेक्शन 271J, तो ये नोट सेक्शन नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में सेक्शन पूछा जाता है. 271J में आपको कभी पेनल्टी लग गई तो आप कभी 5 साल तक के लिए आप वैल्यूएशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते रजिस्ट्रेशन के लिए. व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ फिट एंड प्रॉपर? फिट एंड प्रॉपर का क्राइटेरिया है, एग्जाम में आपको ऐसी लाइन आएगी, इंटीग्रिटी डैश कैरेक्टर, रेपुटेशन वर्ड उड़ा देंगे, और फिर आपको ऑप्शन देंगे ऑनेस्टी, प्रोफेशनलिज्म, ब्ला ब्ला, 4 ऑप्शंस. तो करेक्ट आंसर वुड बी रेपुटेशन. तो आपको ये तीनों वर्ड्स याद रखने हैं, इंटीग्रिटी, रेपुटेशन, कैरेक्टर, ये तीनों में से क्राइटेरिया होता है फिट एंड प्रॉपर का. और आप देखेंगे यही रीजन है जहां पे कंपटीशन फाइनेंशियल सॉल्वेंसी लिखा हुआ है, इसीलिए सारे आरवीओज आपसे 3 साल की रिटर्न मांगते हैं, बिकॉज इट इज आईबीबीआई मैंडेट कि जो भी हमारा मेंबर बन रहा है उसके 3 साल के इनकम टैक्स रिटर्न्स लो और सबमिट करो आईबीबीआई को. अच्छा, अगर हमें एंटिटी बनानी है, पार्टनरशिप फर्म बनानी है, तो हमें कितने मेंबर्स हमारे, सपोज हम 10 लैंड वैल्यूअर्स हैं, कितने लोगों को रजिस्टर्ड वैल्यूअर होना चाहिए उसमें टू बिकम? 3. Everyone. 3 इज मिनिमम. 10 जने हैं तो 3 भी बनेंगे चलेगा, नॉट एवरीवन. So IBBA is allowed, but IBBA prefer everyone should be. That is a preference, but rules allows 3. Fourth clause not relevant for you. But एग्जाम के लिए मतलब का नहीं, फोर्थ क्लास कोई क्वेश्चन नहीं आता फोर्थ में, फिफ्थ में से कोई क्वेश्चन नहीं आता. ये फोर्थ में तो यही बोल रहे हैं कि क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, फिफ्थ बोलता है एग्जाम पास होना चाहिए, वो तो हमें सबको पता है, बिना पास करे कौन बनाएगा. फोर्थ में पढ़ने में टाइम वेस्ट मत करिए. सिक्स्थ क्लॉज पढ़िए, एक सेकंड. सिक्स्थ क्लॉज इंपॉर्टेंट है. सिक्स क्लॉज कौन सा क्लॉज है? फॉर्म ABCD आपको जो बताए थे, फॉर्म ABC 6 क्लॉज के अंदर आते हैं. जब इंडिविजुअल को रजिस्ट्रेशन करना है तो कैसे करना है, तो 6 क्लॉज में मैंने वो पीपीटी में कवर करा हुआ है पूरा, 5000 10,000 ये सारा हमने 6 क्लॉज में पढ़ा हुआ है. सेवेंथ क्लॉज नॉट रेलेवेंट फॉर एग्जाम पर्पस, बट एक क्लॉज हम अभी जैसे एक क्लॉज पढ़ लेते हैं कि क्यों लोग कम हो रहे हैं, क्यों लोग पार्टनरशिप में कम काम कर रहे हैं. आप ये पढ़ लीजिए थोड़ा सा. व्हेन आई से पार्टनरशिप एंटिटी या फर्म में क्यों कम काम करते हैं, सिर्फ एक ये क्लॉज है जो थोड़ा सा, इस क्लॉज का मतलब समझ गए अब आप? हम 5 लोगों ने पार्टनरशिप फर्म बनाई, 5 जने पार्टनरशिप फर्म और एंटिटी और LLP, 5 में से 4 वैल्यूअर्स, 5 वैल्यूअर्स है, एक वैल्यूअर ने गलती करी, 5 विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल जॉइंटली एंड सेवरली ऑल. तो ये थोड़ा सा टफ क्लॉज है. हम लोगों ने क्या डिमांड रखी थी कि सर आप इसको जॉइंटली एंड सेवरली की जगह आप इसको जॉइंटली और सेवरली कर लो, बट
एंड वर्ड को और कर लो, बट IBBA did not agree. This is one of the reasons where a lot of people are scared. But my personal take is अगर हमें सिर्फ वैल्यूएशन प्रैक्टिस ही करनी है, my personal advice would be form an entity with any 3 valuers. सपोज एक किसी लैंड को ढूंढ लीजिए, एक प्लांट को ढूंढ लीजिए और एक एसएफए को ढूंढ के एक वैल्यूएशन, एक पार्टनरशिप एंटिटी या फर्म या LLP या कंपनी बना लीजिए, जिससे एंड पार्टनरशिप शुड बी डन जिससे आपकी ट्यूनिंग बैठती हो या इक्वेशन बैठती हो, फॉर अ सिंपल रीजन, इन फ्यूचर, मैं आज की बात नहीं कर रहा, मैं आज से 5 साल बाद की बात कर रहा हूँ, 3 से 5 साल के बाद, all banks, all IBC will give assignments only to RVEs. आप खुद अपने आप को RVE की पोजीशन में रख के देखिए, आपको 6 वैल्यूअर से डील करने में मजा आएगा या 2 एंटिटी से डील करने में मजा आएगा? यू डिसाइड योरसेल्फ. अगर मैं IP हूँ, क्योंकि मैं खुद IP भी हूँ, बट मैं IP का काम नहीं करता, given a choice, I will never go with 6 valuers, I will go with 2 RVE entity, for a simple reason, मेरा headache कम होता है to interact with 6 people. I will just deal with 2 people, 2 entities, and my work will be done. तो मेरा follow up, मेरा effort and energy will be wasting on 6 valuers. So in future, people will prefer only RVEs. That is my personal advice, not related to course. Clause 8 नॉट रेलेवेंट फॉर एग्जाम पर्पस, बट एक चीज का याद रखिएगा, जिस दिन आप रजिस्टर्ड वैल्यूअर बन जाते हैं, जिस दिन, उस दिन क्लॉज 8 को दोबारा खोल के पढ़िएगा, क्योंकि क्लॉज 8 का जो सबसेक्शन 3 है, ये जो सबसेक्शन है, ये आपको पूरा बोलता है कि आपको अपनी रिपोर्ट में क्या क्या डालना है. तो जब भी IBBA आपकी रिपोर्ट रिव्यू करेगा, वो IBBA आपकी एक तरफ से रिपोर्ट उठाएगा और एक क्लॉज 8.3 देखेगा, क्या ये मैच होता है नहीं होता. जो क्लॉज 8.3 में लिखा है, अगर वो आपकी रिपोर्ट में है, तो आपकी रिपोर्ट IBBA पे कोई क्वेश्चन नहीं उठेगा. अगर वो नहीं है तो IBBA बोलेगा आपने मेरे रूल्स को फॉलो नहीं करा, क्योंकि यहाँ पे खुद लिख रहा है IBBA फॉलो दीज थिंग्स इन व्हेन मेकिंग अ रिपोर्ट. तो ये चीज आपको जब प्रैक्टिकल बन जाते हैं तो मैंडेट करना जरूरी है, ये आपको ध्यान देना है. क्लॉज 9 में एक चीज समझिएगा जो एग्जाम में आती है कभी. सपोज आज आप रजिस्टर्ड वैल्यूअर बन गए, COP भी ले ली, और कल आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज बोलती है कि हमें जियो के बहुत सारे प्लांट लगाने हैं, तो आप हमारे यहाँ पे जॉब कर लीजिए, एज ए वैल्यूअर जॉब कर लीजिए. जॉब तो जा ही सकते हैं हम वापस. तो यू हैव ए ऑप्शन टू सरेंडर योर मेंबरशिप टेम्पररी, एंड टेम्पररी मींस एनी नंबर ऑफ पीरियड, एक दिन से लेके अनंत काल तक आप टेम्पररी सरेंडर कर सकते हैं. सो यू विल गो टू योर RVO एंड से आई एम गेटिंग अ गुड जॉब ऑफर, so I want to discontinue my temporary surrender my RVO membership. You put it on record. So RVO needs to inform to IBBI that this member is temporary surrender his membership within 7 days. जब आप RVO को बताओगे. So just note this point that within how many days? So it is within 7 days, not later than 7 days. ये clause 2 में, 9(2) में. अगर आपको ये समझ में आ गया तो वापस clause पढ़ने की जरूरत नहीं है कि 7 दिन में RVO को IBBI को inform करना है कि यार member has surrendering his membership. Clause 10 काम का नहीं है, 11 काम का नहीं है पढ़ने के लिए, does not make sense. ये obsolete हो चुके तो मतलब का नहीं है. Clause 12 पढ़ने का मतलब नहीं है. अगर आपको एक चीज याद रह जाती है, नाउ जो भी कंपनीज बनेगी वो सेक्शन 8 का ही बनेगी RVO के लिए, तो पूरा क्लॉज पढ़ने का मतलब नहीं है. Crux of the whole clause is 12 clause is this. Clause 13 पढ़ने की जरूरत नहीं. Clause 13 में वही बात है, फॉर्म D एंड फॉर्म E, कि अगर RVO बनाना है तो कौन से फॉर्म में भरना है और कितने रुपए की फीस भरनी है, वो हमने स्लाइड में कवर कर लिया था. तो इट इज ऑल अबाउट ABCDE. Clause 13 only talks about the same. Clause 14 कोई रेलेवेंट नहीं है आपके लिए, यू कैन इग्नोर Clause 14. Clause 16, 15 भी रेलेवेंट नहीं है. Clause 16 में एक चीज याद रखिए बस, अगर आप नोट बना रहे तो लिख लीजिए. आपके हिसाब से मैं पूछ रहा हूँ, विदाउट सीइंग द स्क्रीन देखे बिना बताइए, अगर किसी को वैल्यूअर के अगेंस्ट कंप्लेन करनी है, कितने रुपए की फीस जमा करानी पड़ेगी उसको, IBBI को? 1000. तो इसका मतलब समझे आप, 1000 रुपए में कोई आपकी फिरकी ले सकता है. मुझे कंप्लेन करनी है किसी के अगेंस्ट, और नॉर्मली ये SFA वैल्यूअर्स के अगेंस्ट ज्यादा हार्ड बनता है कि मैं SFA अगेंस्ट की 1000 रुपए की रिपोर्ट डालूंगा, वैल्यूएशन एप्लीकेशन डालूंगा, एंड ही कैन गेट अ इशू. सो जस्ट रिमेंबर 2 थिंग्स, 1000 रुपीज एंड नॉन रिफंडेबल. ये मैं आपको क्यों एम्फेसिस करूं नॉन रिफंडेबल, क्योंकि इंसॉल्वेंसी में जो दूसरा कोर्स है IBBI का, इंसॉल्वेंसी में, उसमें ये रिफंडेबल फीस है. अगर आपकी कंप्लेन सही प्रूव होती है तो 1000 रुपए भी आपको वापस मिल जाएंगे. इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें प्रॉब्लम है, इट इज इवन इफ द कंप्लेंट इज राइट, इज नॉन रिफंडेबल.
So anybody can complain against the valuer with a non-refundable fees of 1,000 rupees. So clause 16 only talks about non-refundable fees. Clause 17, आपको clause 17 हो गया. Clause 17 से लेके clause 21 एक बार आपको प्लेन रीडिंग करनी है clause 17 की. Clause 17 talks about disciplinary committee. Clause 18 एक चीज याद रखनी है, स्टैंडर्ड सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा. एग्जाम में ऑप्शन आएगा अंडर क्लॉज 18 हु कैन इशू स्टैंडर्ड्स, सेंट्रल गवर्नमेंट, आईबीबीआई, आरओसी, एमसीए. सारे हमें लगते हैं आईबीबीआई और एमसी लगते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, बट आंसर इज ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट. तो स्टैंडर्ड तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही नोटिफाई करेगा, राइट. सो जस्ट रिमेंबर क्लॉज 18 सेंट्रल गवर्नमेंट. एक बार क्लॉज 19 की कमिटी जरूर पढ़ के जाइएगा. एग्जाम में क्वेश्चन आता है हु कैन बी मैंडेटरी मेंबर्स ऑफ द कमिटी. सो इस ये स्टैंडर्ड बनाने के लिए, ये स्टैंडर्ड कौन बनाएगा? स्टैंडर्ड बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एक कमिटी बनाती है जो उनको एडवाइस करती है. सो इस कमिटी को एडवाइजर के लिए आप उसके कॉम्पोजिशंस हैं. तो कॉम्पोजिशन क्या बोलते हैं? 3 मैंडेटरी मेंबर्स हैं. एक मेंबर एमसीए का होना चाहिए, एक मेंबर आईबीबीआई का होना चाहिए और एक मेंबर लॉ डिपार्टमेंट का होना चाहिए. ये 3 मेंबर्स मैंडेटरी हैं. बाकी सारे ऑप्शनल मेंबर्स हैं. बाकी सारे आईबीबीआई गवर्नमेंट अपने हिसाब से चूज कर सकता है. सो जस्ट रिमेंबर दैट. सो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कैन गवर्नमेंट मेक 2 आरबीआई मेंबर्स मैंडेटरी? दे आर नॉट मैंडेटरी, दे आर ऑप्शनल. ओके, दे आर ऑप्शनल. एक क्वेश्चन आएगा इसी में, इनका टेन्योर कितना हो सकता है चेयरमैन का? तो इनका टेन्योर हो सकता है 3 साल का एक टर्म और मैक्सिमम 6 साल. 3 years and maximum 2 tenures maximum. So just remember 3 years once and maximum 2 tenures, chairman and members. Clause 2021 ये मैंने आपको फर्स्ट लाइन में लिखाया था, आपको सेक्शन पढ़ने 469 448 टॉप लाइन में जब पढ़ा रहे थे. तो ये सबका उनका यहाँ पे है कि अगर आपने कोई रूल्स फॉलो नहीं करा तो आपकी क्या पेनल्टीज हैं, आपने कोई फॉल्स स्टेटमेंट दिया नोइंगली तो आपकी क्या पेनल्टीज है. देखिए, एरर इज डिफरेंट एंड फॉल्स इज डिफरेंट, फ्रॉड इज डिफरेंट. एरर और इनमें इंटेंशन होता है. सपोज गलती होती है, मैंने रेट आपका से फॉर एग्जांपल लैंड में होता है रेजिडेंशियल कमर्शियल या ऑन हाईवे इनसाइड हाईवे, तो आपके रेट में थोड़ा फर्क आ जाता है. इफ दैट टेक्निकल एरर हैपेंस इट्स फाइन, देयर कैन बी सम ग्रे एरिया. बट आप वैल्यूएशन कर रहे हो जयपुर का, रेट लगा रहे हो दिल्ली की, सो दैट इज अ ग्रॉसली इनकरेक्ट. और फॉर एग्जांपल आप गए नहीं क्लाइंट के साइट पे, ऑफिस में बैठे बैठे सोचा मैं गूगल मैप्स यूज कर लेता हूँ ड्रोन से, जो भी आपका होता है आजकल गूगल मैप पे लोग गूगल अर्थ से देख लेते हैं लोकेशन, और घर बैठे बैठे आपने वैल्यूएशन कर दी. दैट इज अगेन ग्रॉसली रॉन्ग बिकॉज यू नीड टू गो एंड सी एट द साइट. सी एसएफए वैल्यूअर हैव अ लग्जरी टू सिट एट होम. मैं आज घर पे बैठ के कंपनी का वैल्यूएशन कर सकता हूँ, आईबीआई विल नॉट इवन आस्क मी. बट आप लोग लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी घर में बैठ के वैल्यूएशन नहीं कर सकते. आपको एक बार तो एक दिन तो साइट पे जाना ही पड़ेगा. फिर आप नहीं बोल सकते कोरोना था, मुझे डर लगा था, मैं नहीं जा सकता. That will be considered wrong, क्योंकि क्लाइंट तो always assume client will give you wrong data, always assume. So इसीलिए और मैंडेटरी है, और आईबीसी में तो मैंडेटरी लिखा हुआ है, without doing a physical verification you cannot issue a report. तो इसलिए my personal advice would be आप जब भी जब when you become RV evaluations करें, एक आपके मोबाइल में एक फीचर होता है जहां खड़े हैं वहां का फोटोग्राफ जब खींचेंगे सेल्फी, तो आपका लोकेशन और जीपीएस टैग होके आ जाता है. वो करके रख लीजिए. कल को कभी आईबीसी में कोई केस आईबीबीआई में जाता है, आपके पास प्रूव है दैट यू एक्चुअली वेंट, उस टाइम मैंने देखा था, अब बाद में नहीं है तो नहीं है. सपोज आप गए और उसके सामने बिल्डिंग थी या डेटा था, प्लांट एंड मशीन में प्लांट थे, बाद में कोई चुरा के ले जाए तो आपकी गलती नहीं है, बट आपको उस दिन प्रेजेंट होना था जिस दिन मैं बोल रहा हूँ. और आपका मतलब आइदर यू गो और योर एसोसिएट गो. सपोज आपको 10 जगह की वैल्यूएशन मिली, आप थोड़ा ना 10 जगह जाओगे. यू विल सेंड योर कलीग्स, योर एसोसिएट्स, यू कैन सेंड दैट. फॉर एग्जाम्पल हम जब करते हैं एसएफए वैल्यूएशन और कंट्री के 10 सिटी में स्टॉक स्टेटमेंट्स होते हैं, तो आई कैन नॉट गो टू 10 डिफरेंट प्लेसेस. आई विल सेंड माय जूनियर्स, माय एसोसिएट्स, बट दे कैप्चर द क्लिक्स एंड कैप्चर द लोकेशन दैट वी वर देयर ऑन दैट डे, हम गए थे, तो इट वर्क्स एज एविडेंस. और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये तो फिर भी लीनियंट है. नया जो नेक्स्ट वैल्यूअर बिल आ रहा है, दे विल बी वेरी हार्ड ऑन वैल्यूअर्स, क्योंकि अगर, और ये हम मान के चलना पड़ेगा हमें, मेरी एक रॉन्ग वैल्यूएशन पे पूरा कंपनी डिपेंड करता है. आईबीसी में क्या होता है, 100 करोड़ आना, मैं मुझे केस ध्यान नहीं आ रहा है, केस चल रहा है किसी वैल्यूअर पे, लैंड वैल्यूअर पे 200 करोड़ की लैंड वैल्यूएशन थी, ही गेव ए वैल्यूएशन ऑफ 40 करोड़.
अब उसने आई डोंट नो द फैक्ट्स, उसने गलती करी, फ्रॉड करा, आई डोंट नो द फैक्ट्स एट ऑल, बट व्हाट द पॉइंट वी कम टू नो, आईबीबी इज ग्रिलिंग हिम वेरी बैडली। तो प्रूफ बताओ कि तुम गए थे नहीं गए थे। अब वो भला आदमी गया भी होगा, उसके पास कोई प्रूफ नहीं है, बोलो मैं गाड़ी से गया था, अरे गए थे गाड़ी से बराबर है, आप एक दूसरे की फोटो खींच लेते, सेल्फी खींच लेते, तो एविडेंस विल ऑलवेज बी देयर। तो बी केयरफुल ऑफ एविडेंसेस जस्ट टू सेवगार्ड, बिकॉज पेनल्टीज आर हार्श। सो ये हमें पढ़ना है। उसके बाद एक एनेक्जर 1, आप एक प्लेन रीडिंग जरूर करिए एनेक्जर 1 अपने हाथ से। What does this annexure 1 talks about? And we'll just quickly go through what is important in annexure 1. It says value should follow annexure 1 का point 1 note करिएगा, he should follow high standards of integrity and fairness. ये valuer को होना चाहिए. Second, valuer should be honest, straightforward and forthright. So इन तीनों में से कोई सा भी एक वर्ड उड़ा देंगे वो, और आपको एग्जाम में दे देंगे, तो फिलिंग द ब्लैंक्स आएगा, तो आपको ये तीनों में से एक भी वर्ड याद रखना है। आपको किसका इंटरेस्ट पहले देखना है, क्लाइंट का या पब्लिक का? जो वैल्यूएशन करा रहा है उसका या जो पब्लिक का? किसका देखना चाहिए पहले? पब्लिक का। पब्लिक का। और पैसे कौन दे रहा है हमें? फीस तो हमें क्लाइंट दे रहा है, और भला हम पब्लिक का करेंगे, ये बहुत बड़ा डिलेमा रहता है, राइट? सो इन्होंने क्लियरली लिख दिया यहाँ पे रूल्स में कि पहले आपको पब्लिक इंटरेस्ट का ध्यान देना है सर्विस डिलीवर करते टाइम। सो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अब वैल्यूएशन कैन कीप डैश व्हिच इंटरेस्ट फॉरमोस्ट, पब्लिक, क्लाइंट, सो इट इज पब्लिक। क्लॉज 6 एक बार पढ़िएगा, वैल्यू शैल रेंडर हाई स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस, तो उसमें से क्वेश्चन आता है, तो एक बार क्लॉज 6 पढ़िए। क्लॉज 8, वैल्यू शैल कंटिन्यूअसली मेंटेन नॉलेज, तो आप पूरे रूल्स में देखेंगे शैल लिखा हुआ, कहीं भी शुड नहीं है, शैल। क्लॉज 9, 10 एक बार पढ़िएगा, इसमें 2-3 वर्ड्स जो ध्यान देने, वैल्यू शुड नॉट टेक एनी इंस्ट्रक्शन इफ दे आर इनकम्पेटेबल विद द इंस्ट्रक्शंस फॉर इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिव, इंडिपेंडेंस। अगर वैल्यूअर आपको बोले कि बिना जाए क्लाइंट साइड पे आप वैल्यूएशन कर दो, मैं फोटो भेज रहा हूं आपको, शुड यू डू? आंसर इज यू शुड नॉट डू, क्योंकि जो आपको जाने को ही मना कर रहा है, दैट मींस देयर इज समथिंग फिशी। और आपकी इंडिपेंडेंस, कॉल आपका है, आप बोलोगे मुझे मेथड यूज करना है रिप्लेसमेंट मेथड, वो बोलेगा नहीं आप तो मार्केट मेथड यूज करो। क्लाइंट कैन नॉट डिक्टेट विच मेथड यू नीड टू यूज, इट इज योर चॉइस, इट इज योर राइट। क्लॉज 13, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, नॉट फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, अगर आपका कोई रिलेटिव या एसोसिएट is not considered independent with the company, you should not take that assignment. For example, आपका कोई कजन किसी कंपनी का सीईओ है, सीएफओ है, आप उसका वैल्यूएशन नहीं कर सकते। अगर वो जूनियर पोस्ट पे है, रिसेप्शनिस्ट है, सेल्स गाय है, विच इज नॉट अ की पोस्ट, देन यू कैन डू दैट, बिकॉज आपकी इंडिपेंडेंस इन्फ्लुएंस होती है। क्लॉज 14, just remember value shall maintain complete independence for external influences. The word influence will come from here. Clause 17, valuation shall not indulge in mandate snatching or offering convenience valuation. What is convenience valuation? आप क्लाइंट को बोलते हो सर एक बार असाइनमेंट तो हमें दो, वैल्यू आप जो बोलोगे वो ले आएंगे, दैट यू शुड नेवर कमिट टू क्लाइंट। और कभी करें तो भी कभी ईमेल पे मत करना, कभी देयर शुड नॉट बी नो रिटन एविडेंसेस एंड देयर शुड नॉट बी मैंडेट स्नैचिंग। व्हाट इज मैंडेट स्नैचिंग? सपोज संजीव शर्मा जी को एक असाइनमेंट मिल गया ₹1,00,000 का, उन्होंने बोला, और इन्होंने आके कामत जी को बोला, कामत जी मुझे ₹1,00,000 का असाइनमेंट मिल गया। कामत जी क्लाइंट के पास जाके बोलते हैं सर आप 1,00,000 क्यों दे रहे हो, मैं आपका 40 में कर देता हूँ। आई एम जस्ट गिविंग अ वेग एग्जांपल। सो मैंडेट स्नैचिंग इज, अगर बिड कर रहे हो, बिडिंग के टाइम में यू कैन डू एनी बिड। इन्होंने 1,00,000 का बिड करा, आप 10,000 बिड करोगे, एक्सेप्टेबल, नोबडी कैन क्वेश्चन। बट इनको मैंडेट असाइन हो गया, ऑफर लेटर आ गया, उसके बाद आप जाके क्लाइंट को बोलो मैं सस्ते में कर देता हूँ, दैट इज नॉट प्रेफर्ड बाय आईबीबीआई, बिकॉज आईबीबीआई सेज देन आपने जाके उससे कुछ कॉम्पनसेट लिया होगा, कुछ कैश में ले रहे होंगे, दैट इज आईबीबीआई इंटेंशन। एज ए वैल्यूअर वी शुड नॉट चार्ज सक्सेस फी। अब एक चीज ध्यान रखिएगा जो डिफरेंट है, 247 बोलता है सेक्शन 3 साल पहले और 3 साल बाद हम कुछ नहीं कर सकते, विच इज फेयर। क्लॉज 19 क्या बोलता है, जब भी हम कभी वैल्यूएशन कर रहे हैं, अगर 5 साल पहले मैं उसके कुछ कनेक्शन में था,
किसी भी तरह से, तो मुझे रिपोर्ट में सिर्फ डिस्क्लोज करना है। सपोज 5 साल पहले आप उसके ऑडिटर थे, आप उसके डायरेक्टर थे, आप उसके कंसल्टेंट थे, कुछ भी थे, आपको अपना ट्रांजेक्शन बताना है कि 5 साल पहले विद इन लास्ट 5 years ऑफ टेकिंग वैल्यूएशन आई एम हैविंग दिस रिलेशनशिप विद द क्लाइंट। ये नहीं कह रहा कि आप नहीं कर सकते, ये कह रहा है आप करिए वैल्यूएशन, बट डिस्क्लोज कर दीजिए रिपोर्ट में कि आपका प्रायर क्या लिंकेज था कंपनी से, सो द रीडर कैन मेक आउट हाउ कनेक्टेड यू आर, जस्ट ऑन द सेफर साइड। Clause 20 is not relevant. 21, just understand to hear the word. Valuer shall maintain written contemporaneous record for any decision taken, reasons for taking the decisions, and evidence in support of such decision. ये मैंने कहाँ से डिसीजन लिया, क्या सपोर्ट है, नॉट जस्ट मैंने कहीं से सुना था। जैसे होता है ना, हमने 2 ब्रोकर से पूछा, आप किसी का वैल्यूएशन करने गए लैंड का, और आपने किसी ब्रोकर को फोन लगा पूछ लिया भाई क्या रेट चल रहा है आजकल, और ब्रोकर ने वर्बली बोल दिया भाई ये रेट है। आप या तो ब्रोकर से कोट राइट रिटर्न में लीजिए, या व्हाट्सएप पे लीजिए, या ईमेल पे लीजिए, कहीं एविडेंस होना चाहिए, क्योंकि रिटर्न का जंगल में मोर नाचा किसने देखा, किसी ने नहीं देखा। तो जब तक रिटर्न में नहीं है, वर्क नॉट डॉक्यूमेंटेड मींस नॉट डन, तो रिटर्न में इंपॉर्टेंट है। क्लॉज 22, वैल्यूअर शैल अपीयर, कोऑपरेट एंड अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन, जब भी एजेंसीज कभी आती हैं। Valuation shall provide to tribunal, appellate tribunal, RVO, and every authority. Clause 24 talks about he should maintain working paper for 3 years. This talks about 3 years. Clause 25, हाँ ये important है, थोड़ा सा ये समझिएगा। Valuer shall not, जो मैं words बोल रहा हूँ उनको highlight करिएगा, except gifts, hospitalities, which undermines or affects his independence. तो हमें कोई client gift दे रहा है, छोटा गिफ्ट दे रहा है तो ठीक है, पता चला बहुत ही बड़ा गिफ्ट दे रहा है, नॉट एक्सेप्टेबल। अब छोटा बड़ा क्या डेफिनेशन है, पता चला फीस ही आपकी 10,000 रुपए और आपको 20,000 का गिफ्ट दे रहा है, सो दैट मीन्स क्लियरली नॉट एक्सेप्टेबल। आपकी फीस 1 लाख रुपए की है और आपको 5,000 का गिफ्ट दे रहा है, दैट इज एक्सेप्टेबल। सो देयर इज नो स्टैंडर्ड गाइडेंस, इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। सेकेंड, ये तो वो वैल्यूअर क्या नहीं ले सकता, अब यहां लिखा है वैल्यूअर क्या नहीं दे सकता। वैल्यूअर शैल नॉट ऑफर गिफ्ट, हॉस्पिटैलिटी और अ फाइनेंशियल टू पब्लिक सर्वेंट और अदर पर्सन फॉर गेटिंग वर्क। अब इसमें कौन सा नहीं दे सकते, कौन सा दे सकते हैं? अब दिवाली पे अपन स्वीट, ड्राई फ्रूट्स और स्वीट वो सब भेज सकते हैं, दैट इज एक्सेप्टेबल। बट पता चला आप दिवाली पे उसको मोबाइल आईफोन गिफ्ट कर रहे हो जस्ट टू गेट अ असाइनमेंट, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, जस्ट टू प्रूव। बाकी इट ऑल लीव्स अप टू यू। Clause 27 not relevant, 28 not relevant, 29 not relevant, 30th not relevant, इग्नोर कर सकते हैं। Annexure 2 पढ़ने की जरूरत नहीं है, Annexure 2 is just all forms, जो आपने फॉर्म्स भरे हैं, तो Annexure 2 पूरा इग्नोर कर दीजिए। Annexure 3 आपके लिए रेलेवेंट है। Annexure 3 एक बार पढ़ना है, और Annexure 3 में क्या पढ़ना है? फर्स्ट Annexure 3 में हमें पढ़ना है क्लॉज 3, Annexure 3 का क्लॉज 3, जो भी आरवीओ बनता है। तो Annexure 1 टॉक्स अबाउट रजिस्टर्ड वैल्यूअर इंडिविजुअल, कि अगर रजिस्टर्ड वैल्यूअर को कैसे बिहेव करना चाहिए, व्हाट आर द एथिक्स, व्हाट आर द फॉर्मूलाज, व्हाट आर द रूल्स। Annexure 3 टॉक्स अबाउट आरवीओ को कैसे बिहेव करना चाहिए, जो भी रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं उनको क्या करना चाहिए। तो Annexure 3 विल टॉक अबाउट अमेंडमेंट ऑफ बायलॉज। तो अगर हर आरवीओ के पास एक बायलॉज होना चाहिए, हु कैन अमेंड दोज बायलॉज, ये बायलॉज का गाइडेंस आईबीबीआई ने दिया कि अगर बायलॉज बनाएंगे इट शुड बी विद इन दिस क्राइटेरिया। बायलॉज कैसे बनने चाहिए, जैसे भी बनेंगे अमेंड कैसे होने चाहिए। सो बायलॉज अमेंड करने के लिए हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अप्रूवल चाहिए, 3/4 ऑफ द मेजोरिटी। कितनी की मेजोरिटी? 3/4। तो अगर बोर्ड 10 जनों का है तो 3/4 ऑफ बोर्ड शुड गिव मेजोरिटी, देन बायलॉज कैन अमेंड। उसके बाद हमें बायलॉज भेजने हैं आईबीबीआई को विद इन 7 days। जिस दिन हमारा बोर्ड अप्रूव करता है, सो द बोर्ड सेज वी वांट टू अप्रूव टुडे, विद इन 7 days यू सेंड टू आईबीबीआई फॉर अप्रूवल कि हमारा बोर्ड ये चाहता है अप्रूव करना, आप प्लीज अप्रूव करिए। देन आईबीबीआई को कितने दिन में अप्रूव करना पड़ेगा, एनी आइडिया? कोई टाइमलाइन है आईबीबीआई कितने दिन में अप्रूव करे? मैंने आईबीबीआई को 7 दिन में भेज दिया, आईबीबीआई को कितने दिन में अप्रूव करना पड़ेगा? There is no timeline put for IBBI.
वो माई बाप है, जब उनकी इच्छा होगी तब करेंगे वो। बट जिस दिन आईबीबीआई अप्रूव कर ले, सो आईबीबीआई सेज टुडे दे विल टेल टू आरवीओ, विजय जी वी अप्रूव्ड योर बायलॉज, देन इट शुड कम इफेक्ट विद इन 7 days। तो आईबीबीआई ने अगर आज बोला तो 7 दिन के अंदर उसको इम्पैक्ट लाना है। नाउ जस्ट नोट थर्ड पॉइंट विच इज डिफरेंट। आईबीबीआई ने अप्रूवल दे दी आपको, उसके बाद विद इन 15 days आपको आईबीबीआई को एक हार्ड कॉपी भेजनी है बायलॉज की, कि आपने जो चेंजेस हमें अप्रूवल दी थी हमने हार्ड कॉपी में वही प्रिंट करे हैं, तो आईबीबीआई विल चेक ऑल्सो। तो ये 15 दिन में देना है, बाकी सारे 7 days हैं, ये 15 days में फॉल करता है। कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए? देयर इज नो लिमिट, जितना आरवीओ की इच्छा उतने डायरेक्टर्स बना सकता है। बट रूल्स क्या है? जितने भी डायरेक्टर बनेंगे मेजॉरिटी शुड बी, मोर देन हाफ शुड बी रेजिडेंट इन इंडिया, more than half should be independent, and maximum one fourth can be registered valuer। so for example जो विजय जी का आरवीओ है, लेट्स से जो आरवीओ है, इसमें रजिस्टर्ड वैल्यूअर ये खाली 1/4 ही बना सकते हैं अपने बोर्ड पे। मैक्सिमम शुड बी इंडिपेंडेंट और नॉट रिलेटेड टू वैल्यूएशन प्रोफेशन, सो दैट ये जो भी काम करेंगे पब्लिक को देख के करेंगे। अगर सारे ही आरवीज बन गए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आरवी के, तो ये अपना काम सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए करेंगे, पब्लिक इंटरेस्ट नहीं देखेंगे। दैट्स व्हाई दे पुट। नाउ उसके बाद ये पार्ट 2 रेलेवेंट नहीं है पूरा, मतलब 6 पॉइंट तक, पार्ट 2 में आधा छोड़ दीजिएगा, 1 2 3 रेलेवेंट नहीं है आपके लिए। रेलेवेंट है क्लॉज 7, यहां से कमिटी ऑफ मेंबर्स के लिए। तो एडवाइजरी कमिटी इज अ ऑप्शनल कमिटी, यहां लिखा है गवर्निंग बोर्ड मे फॉर्म। मे फॉर्म का मतलब इच्छा होगी तो फॉर्म करें, नहीं तो नहीं, तो इट इज ऑप्शनल कमिटी। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा विच इज ऑप्शनल, सो इट इज एडवाइजरी। फिर क्वेश्चन आता है विच इज मैंडेटरी। सो मैंडेटरी 4 कमिटीज है। अब ये 4 कमिटीज आप 1 मिनट के लिए पढ़ लीजिए ढंग से, क्योंकि ये कमिटीज बोलती हैं कि चारों कमिटीज कौन सी हैं, और ये बताती हैं कितने मेंबर्स होने चाहिए या कौन मेंबर्स होना चाहिए। जैसे मेंबरशिप कमिटी में इन्होंने लिखा नहीं कितने मेंबर्स होने चाहिए, आपकी जितनी इच्छा। मॉनिटरिंग कमिटी में कितने मेंबर्स होने चाहिए, आपकी इच्छा। ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिटी में इन्होंने लिखा है नॉट लेस देन 3 मेंबर्स, 3 मैंडेटरी। डिसिप्लिनरी कमिटी में इन्होंने लिखा है 1 मेंबर मस्ट बी फ्रॉम आईबीबीआई, मैंडेटरी। ये डिसिप्लिनरी। तो एग्जाम में कंपोजिशन पूछा जाता है कि इस कमिटी का क्या कंपोजिशन है, तो ये ध्यान रखिएगा। इन सब के चेयरमैन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ही होंगे। आईबीबीआई की जितनी भी वैल्यूएशन में रूल्स हैं, सबके चेयरमैन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे। चेयरमैन हैज टू बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ ऑल कमिटीज। क्लॉज 9 रेलेवेंट नहीं है, छोड़ दीजिए। क्लॉज 10 पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्लॉज 10 में सिर्फ एक चीज पढ़ने की जरूरत है। क्लॉज 10 में अगर आपकी मेंबरशिप रिजेक्ट कर देता है आरवीओ, सो सपोज आपने आरवीओ को अप्लाई करा मेंबरशिप के लिए और आपकी रिजेक्ट कर दी, इन दैट केस आपको 30 डेज के अगेंस्ट मेंबरशिप कमेटी को बोलना है कि सर मेरी मेंबरशिप रिजेक्ट हो गई है, प्लीज लुक इनटू दैट। क्लॉज 11 काम का नहीं है, 12 काम का नहीं है, नॉट रेलेवेंट फॉर एग्जाम। 13 काम का नहीं है, 14 काम का नहीं है, 15 16 17 18 काम के नहीं है, 19 काम का नहीं है। 21 से आप पढ़ना स्टार्ट करिएगा। आप नोट करिए फ्रॉम 21 टू 26, 21 टू 25, 21 टू 25 आपको मैंडेटरी पढ़ना है ढंग से, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन ग्रीवेंस कमेटी का, अपीलेट कमेटी का आता है, तो जस्ट नीड टू रीड दैट। 26 का मतलब समझ लीजिए, तो फिर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने बात करी थी फर्स्ट एनेक्जर में, आरवी कब इन्फॉर्म करेगा, आरवीओ कब इन्फॉर्म करेगा आईबीबीआई को विद इन 7 days कि हमारा मेंबर टेम्परेरी सरेंडर कर रहा है। अब यहाँ कंडीशंस लिखी हुई है, मेंबर को कब सरेंडर करना चाहिए, 30 days बिफोर, जब वो एनआरआई बन रहा है। तो सपोज मैं फॉरेन में चले गया रहने के लिए, 1 से 50 दिन हो गए, तो मुझे 30 डेज पहले बोलना है कि भाई अब मुझे मेंबरशिप सरेंडर करनी है, बिकॉज इट कैन बी ओनली रेजिडेंट इन इंडिया। सेकेंड, अगर आप कभी जॉब लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हो, टेम्परेरी सरेंडर कर लीजिए। तो इसका बेस्ट पार्ट क्या है टेम्परेरी सरेंडर का, आपको दोबारा कभी एग्जाम नहीं देना, आपको वापस आके जस्ट रिन्यू करानी है मेंबरशिप अपनी। सो यू कैन स्टिल क्लियर द एग्जाम टुडे, गेट द मेंबरशिप एंड सरेंडर इट व्हेनेवर यू वांट। और जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, दैट इज वन वी नीड टू टेक केयर। सेकेंड, एक लास्ट पॉइंट जो रेलेवेंट है इसमें, आपकी फीस, आपको आरवीओ कब एक्सपेल कर सकता है या आईबीबीआई आपको कब निकाल सकता है, कैंसिल कर सकता है।
जब उसने 2 बार आपसे फीस मांगी और आपने 2 बार उसको फीस पे नहीं करी, तो सपोज आपने आज मेंबरशिप फीस पे नहीं करी, मैंने आपको 2 रिमाइंडर भेजे, सो 2 नोटिसेस अगर आपको सर्व्ड हो गए राइटिंग में, उसका आपने रिस्पॉन्ड नहीं करा, तो फिर आपकी मेंबरशिप कैंसिल हो सकती है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक आप एनेक्जर 4 में एक पेज का एनेक्जर है, इसको एक बार पढ़िएगा। व्हाट इज द क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया? तो जैसे पीएनएम का क्राइटेरिया, पीएनएम बनना है तो क्या क्राइटेरिया है? ग्रेजुएट होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए क्लाइज में। लैंड एंड बिल्डिंग है तो आपके क्या क्राइटेरियाज हैं? सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए, आर्किटेक्चर, टाउन प्लानिंग में होना चाहिए और इक्विवेलेंट। और एसएफए है तो क्या क्राइटेरिया है? क्या आप लोगों को लैंड एंड बिल्डिंग वाले को पीएनएम और एसएफए का पढ़ना चाहिए, या प्लांट एंड मशीनरी वाले को लैंड एंड बिल्डिंग और एसएफए के क्वालिफिकेशन पढ़नी चाहिए, नहीं पढ़नी चाहिए? शुड बी और शुड नॉट बी? क्विकली बताइए, पढ़नी चाहिए नहीं पढ़नी चाहिए एग्जाम के लिए? पढ़नी चाहिए सर, मैंडेटरी पूछ पढ़नी सकता चाहिए, है, पूछ मैंडेटरी सकता पढ़नी है। चाहिए, मैंडेटरी पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये पूरा रूल्स आपके लिए एग्जाम में है। तो और होता यही है, वो आपसे दूसरे का पूछेंगे, तो हमारे एसएफए के एग्जाम में पूछा जाता है लैंड एंड बिल्डिंग की क्वालिफिकेशन बताओ, क्योंकि मुझे पता तो होना चाहिए रूल्स में क्या लिखा हुआ है कि कौन बन सकता है, नहीं बन सकता। सो यू नीड टू रीड दैट, दैट इज मैंडेटरी। So that is one on valuation rules. 5 minutes I'll quickly take on how to register for exam purpose. Just give me a minute. ओके आप में से कभी किसी ने एग्जाम दिया है एनआईएसएम की वेबसाइट पे कभी, इससे पहले एनआईएसएम के पोर्टल पे कोई और एग्जाम? वॉइस नॉट कमिंग? नो सर। रमाशंकर जी, वॉइस इज वीडियो आपको नहीं आ रहा? नो सर, नाउ इट इज कमिंग। नाउ इज कमिंग, ओके ओके। अच्छा, तो अगर आप लोगों ने कभी किसी ने एनआईएसएम पे एग्जाम नहीं दिया, तो आप अभी एक काम करिएगा। नाउ हाउ टू रजिस्टर फॉर दिस प्रोसेस? इवन बिफोर कंप्लीटिंग 50 आवर्स ट्रेनिंग वी कैन रजिस्टर ऑन एनआईएसएम। हम एग्जाम चूज नहीं कर सकते, हम एग्जाम चूज करने के लिए तो हमको 50 आवर्स का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लगेगा, बट उससे पहले हम क्या कर सकते हैं, अभी जब भी हमारा फ्री टाइम है, आज कल परसों में, आप बैठ के आईबीबीए की वेबसाइट पे जाइए, go to ibba.gov.in. From there you will go to, just a second, screen आ रही। From there you will go to examination tab, choose your asset class, choose land and building and plant and machinery respective asset class अपने लिए। It will take you from there, it will take you to NISM website, वहां से आपको NISM पे क्लिक कर लेके जाएगा ये। There you need to keep your basic data ready. For example, your PAN, your Aadhaar card, your BCom mark sheets, graduation जो भी आपकी है वो data ready रखिए, and you need to upload that data and try to keep your picture less than 250 KB. Once you upload these details, your login ID can be created, for which is important, which is the first step. अगर आपके नेम, पैन कार्ड एंड आधार में कोई इशू नहीं है, मिसमैच नहीं है, तो आपका इमीडिएटली आपका पास हो सकता है, लॉगिन आईडी इमीडिएटली आपका क्लियर हो सकता है विद इन 2-3 days टाइम। बट इफ देयर इज अ इशू बिटवीन योर नेम एंड आधार एंड पैन कार्ड, इट विल टेक 7 to 10 days। पहले तो ये एक दिन में अप्रूव हो जाता था, नाउ जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना दे आर नॉट वर्किंग फुल स्विंग, सो दे आर टेकिंग टाइम। सो आप, माय एडवाइस वुड बी, आप कल बैठ के या आज शाम को, अगर टाइम है आज शाम को, नहीं तो कल बैठ के एक बार अपना लॉगिन आईडी क्रिएट कर लीजिए, सो दैट यू विल कम टू नो कहाँ आपको इश्यू आ रहा है, सो दैट इन द नेक्स्ट टाइम कुछ होगा तो वंस यू गेट सर्टिफिकेट यू कैन इजीली बुक योर एग्जाम्स। Once you
create a login ID ready, and once your training certificate is ready, after you finish the course here, they will immediately give you next day. You need to deposit 1500 rupees to choose the center, and then you can see whether the exam seat is available or not. Unfortunately, now Delhi, we are not having seats available, but other parts of the country, so Delhi, Mumbai seats are very limited. They are not opening fully, but other parts of the country seats are available. Yesterday somebody gave exam in Chandigarh. वहां उनको पूरा gloves पहना के mask पहना के exam दे रहे हैं. So center is taking care, but at some places seats are not available. I always say deposit 3,000 rupees first, and for a simple reason I say that, and why I say deposit 3,000 rupees. It's not that I'm expecting anybody of you to fail. That is not the expectation. But the expectation is, आप सोचिए अगर आपने सिर्फ 1500 रुपए जमा कराए और आपने पहला एग्जाम दिया और गलती से फेल हो गए, गॉड फॉरबिड गलती से फेल हो गए, तो हम बहुत एक्साइटेड होंगे या डिमोटिवेटेड हो जाएंगे? क्या होता है मेंटली, साइकोलॉजिकली क्या होता है हमारे साथ? डिमोटिवेट. हम डिमोटिवेट हो जाएंगे. फिर हम क्या सोचते हैं, अब की बार तो, और हम में से ऐसे कई लोग होंगे जो लाइफ में कभी फेल नहीं हुए होंगे, हमेशा वो मेरिट में रहे होंगे, हमेशा टॉप करे होंगे, और कभी पहली बार फेल कर लेते हैं तो बहुत ज्यादा चुभता है. फिर हम सोचेंगे अब मैं पूरी तैयारी करके एग्जाम दूंगा. और आप ये मुझसे लिख के रख लेना, ये पूरी तैयारी आपकी कभी नहीं हो सकती, साल भर में भी नहीं हो सकती. व्हाई? फर्स्ट, द कोर्स इज टू बिग, इट्स सो वास्ट. सेकेंड, वी ऑल आर वर्किंग प्रोफेशनल्स, वी डोंट हैव फ्री टाइम. एक जब बच्चे होके पढ़ते थे तब हमारे पास पूरा टाइम था, कुछ और एम नहीं था, सिर्फ पढ़ना ही हमारा एम था. अभी पढ़ना हमारा सेकेंडरी सबसाइड हो गया है. आई नीड टू टेक केयर ऑफ माई ऑफिस, टेक केयर ऑफ माई फैमिली, एंड देन स्टडी ऑल्सो. So it is very jugglery to manage the different things that we need to take care. Deposit 3,000. What is the impact of depositing 3,000 rupees? Suppose आज मैंने एग्जाम दिया और मैं फेल हो गया. Let's say I got 58 or 59 or 55, any number. ये तो हम मानते हैं अगर हमारा पैसा सिस्टम में अटका है, if I know my 1500 is still stuck with IBBI और NISM, तो मैं क्या करूंगा, मैं दूसरा एग्जाम क्विकली देना चाहूंगा to recover that money. We all are professionals, we want to recover our money faster. So मैं तुरंत जल्दी से एग्जाम डेट बुक करूंगा, मैं एग्जाम दे दूंगा और आई विल रिकवर. एक बार हमने जितनी तैयारी कर ली, उसके बाद हमें पूरी तैयारी करने की कभी जरूरत नहीं है. Then what we need to do is we just need to upgrade ourselves on what areas we are missing. So अगर आपने आज एग्जाम दिया और सपोज आप फेल हो गए, तो आपको पूरा कोर्स रिवाइज करने की जरूरत नहीं है. आपको सिर्फ वही चीजें पढ़नी है जिसमें आप अनकंफर्टेबल हो रहे हो एग्जाम में. देयर माइट बी ए केस लॉज, देयर माइट बी योर प्लान लैंड एंड बिल्डिंग के जो स्पेसिफिक लॉज होते हैं, सेक्शंस, हम हो सकते हैं वहां मिस कर जाएं, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच बी न्यू फॉर यू. सपोज आपके लिए इकोनॉमिक्स फर्स्ट टाइम होगा, स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट टाइम होगा, लॉज आपके लिए टफ होंगे. बट हैविंग सेड दैट, that does not mean we cannot clear. You all can clear, but the only condition is आपको एग्जाम जल्दी से जल्दी देना पड़ेगा. Now exam happens weekly. Earlier exam used to have, earlier पहले डेली एग्जाम होते थे, but अभी वीकली होते हैं. एक्सेल अलाउड है, नॉर्मल कैलकुलेटर भी अलाउड है, साइंटिफिक भी ले जाओ, कोई नहीं पूछता. यू टेक ए कैलकुलेटर विथ यू, क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं है. पास होने के बाद गलती से भी फेसबुक, लिंक्डइन, सोशल मीडिया पे मत डालना बिकम रजिस्टर्ड वैल्यूअर. ऐसा क्यों लिखा मैंने? Why you should not write on Facebook become registered valuer? पास हुए हैं, खुशी सेलिब्रेट तो करनी बनती है ना, फिर क्यों नहीं डालना चाहिए? Still not registered with the IBBI. Absolutely, and this is one of the reason you may find it very funny. This is one of the reason IBBI has withhold 4 members certificate. 4 बच्चे पास हुए और उन्होंने फेसबुक पे लिख दिया, लिंक्डइन पे लिख दिया अपना टैगलाइन रजिस्टर्ड वैल्यूअर IBBI, ब्रैकेट में लिख दिया. IBBI ने जब उनकी मेंबरशिप रिव्यू कर रही थी, सोशल मीडिया अकाउंट चेक करा और उनको नोटिस भेजा, टिल we have not given you authority, how did you write that you are registered valuer with IBBI? It means that you are soliciting work from the public without even getting registered, which is considered as a negative approach, and IBBI 6 महीने तक उनकी मेंबरशिप नहीं दी. It may look very innocent crime, but IBBI thinks is a very crime. My one piece of advice would be to all members, जिनके भी घर में बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, 5 साल से 15 साल तक की एज में अगर आपके घर में बच्चे हैं, अगर हैं ऐसे, तो घर में बिल्कुल बता के मत जाना आप एग्जाम देने जा रहे हो IBBI का एटलीस्ट. क्योंकि आप पास हो गए तो वेल एंड गुड, बट सोचो गलती से अगर आप फेल हो गए गलती से भी, तो आप अपने बच्चे को कभी नहीं डांट पाओगे जब तक आप पास नहीं करते एग्जाम कि बेटा पढ़ ले. वो बोलेगा पापा आप भी पढ़ लो.
दिस एक्चुअली हैपेंड विथ मी. सो मैं फर्स्ट एग्जाम में फेल हो गया. घर पे आके बेटे ने पूछा पापा क्या हुआ, मैंने कहा बेटा फेल हो गया. तो माय सन, पापा कल से आपका टीवी बंद, व्हाट्सएप बंद, सोशल मीडिया बंद, अब पढ़ाई करोगे आप. ही इज जस्ट इन सेकंड स्टैंडर्ड. सो नेक्स्ट 15 दिन तक, जब तक मैं पास नहीं हुआ, तब तक मैं उसको कभी नहीं बोल पाया बेटा तू पढ़ ले, क्योंकि मुझे पता था जैसे मैं उसको डांटूंगा पढ़ने के लिए वो मेरे पे चढ़ जाएगा. एंड दैट्स ऑन अ लाइटर नोट, वी नीड टू बी वेरी केयरफुल. सेकंड, मैं क्यों 3,000 रुपए बोलता हूँ, क्यों मैं बार बार हमेशा बोलता हूँ 3,000 रुपए डिपॉजिट कर दीजिए, या एटलीस्ट 3,000 नहीं करना. अगर सपोज 3,000 डज नॉट लुक लॉजिकल, एटलीस्ट डिपॉजिट 1,500 रुपीज एंड बुक वन एग्जाम इन नेक्स्ट 1 मंथ मैक्सिमम. 1 महीने में एक डेट ले लीजिए. क्यों? अगर आपकी तैयारी नहीं भी है, ठीक है, मैं 1,500 रुपए जमा करा के मुझे 2 चीजें सीख रहा हूं. मैंने 1,500 रुपए जमा कराए, मेरी आधी तैयारी है, और मैं ये लिख के देता हूँ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ हम में से बैठे हुए सारे पार्टिसिपेंट्स बिना पढ़े भी कल अगर एग्जाम देने जाएं 50 मार्क्स को बिना पढ़े लेके आ सकते हैं. अगर आपने प्रैक्टिकली काम कर रखा है तो दैट शुड बी सफिशिएंट. प्रॉब्लम, यस प्रॉब्लम विल बी देयर फ्रॉम क्रॉसिंग 50 to 60, दैट इज अ ब्रिज. बट आप सोचिए मैंने थोड़ी बहुत भी तैयारी करी, मैं एग्जाम देने चले गया, क्या होगा? 2 बातें हो सकती है, या तो मैं पास होऊंगा या फेल होऊंगा, 2 ही से ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता. पास हो गया तो दिस इज व्हाट ऑल वी आर लुकिंग फॉर, वो तो मुझे चाहिए ही था पास होना. बट इन केस अगर मैं फेल होता हूं तो देयर आर 2 थिंग्स. वन, आई विल गेट टू नो व्हाट आर द एरियाज वेयर आई वाज लैकिंग, जहां मैं ढंग से तैयारी नहीं कर रहा था. सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मुझे 1,500 रुपए खर्च करके 100 लाइव क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, 90 क्वेश्चंस की क्वेश्चंस कैसे आते हैं. सो दैट शुड बी अ वेरी गुड आइडिया फॉर यू टू नो. तो एक बार मेरे हिसाब से हमेशा ट्राई मारना चाहिए. दैट इज माय पर्सनल सजेशन. और लाइफ रिस्क टेकर्स की होती है, तुक्का लगाएंगे, रिस्क लेंगे, यू मे गेट इट, बट रिस्क लेना जरूरी है. अगर आपने 1-2 महीने से ऊपर इसको डिले कर दिया तो मैं ये नहीं कह रहा कि इम्पॉसिबल है आप नहीं बन सकते, बट चैलेंज बढ़ता जाएगा. ये जो लोग डिले हो रहे हैं, जो परसेंटेज हमारा कम है, पासिंग परसेंटेज, इसीलिए लोग ट्रेनिंग तो जोश में कर लेते हैं, एग्जाम देने के टाइम में डिले करते जाते हैं. और इट इज जस्ट लाइक अ प्रॉब्लम, जितना आप डिले करोगे उतना बढ़ती जाएगी, बट जितना जल्दी आप एक्ट करोगे उस पर यू ऑल कैन बिकम. एंड यू शुड टेक माई एडवाइस सिंसियरली. 1 से 2 महीने आप डेट बुक करिए. और मैं आप लोगों का तो नहीं कह सकता, एटलीस्ट हम सीए प्रोफेशनल्स की क्या प्रॉब्लम है, जब तक आप हमें डेडलाइन नहीं दोगे हमसे काम नहीं होता. आप हमें बोलोगे रिटर्न भरने की डेट 30 नवंबर है, तो हम 29 नवंबर को जगते हैं, अच्छा कल रिटर्न भरनी ही भर देंगे. यही आप मुझे बोलोगे कल है तो मैं आज कर दूंगा. सो डेडलाइन विल ऑलवेज वर्क, एंड ह्यूमन साइकोलॉजी वर्क्स विद डेडलाइन ओनली. सो ट्राई टू डू दैट. जब भी आप एग्जाम सेंटर में जाएंगे, दिस इज जनरली द वे स्क्रीन लुक्स लाइक. ये आई एम मुझे आपके कितने क्वेश्चंस आते हैं आपका नहीं पता, मुझे एसएफए का पता है. एसएफए गेट्स 90 क्वेश्चंस. एक आईबीबीए की वेबसाइट, एनआईएसएम की वेबसाइट पे जब भी आप जाएंगे आपको एक मॉक टेस्ट पेपर भी मिलेगा. हाउ डज द एग्जाम कम फॉर अ मॉक टेस्ट पेपर, आप वो भी देख लीजिएगा. सो यू विल गेट एन आइडिया. Normally you'll get a screen like this. You'll have a question numbers there. इसमें options होंगे. Anybody can answer this query. What can be the answer? This is exam question, real exam question. कौन होगा इसका मॉनिटर? आरबीआई गवर्नर. So it is RBI गवर्नर, right? So जब भी हम एग्जाम चूज करेंगे तो क्या होगा, इस ग्रिड में कलर्स चेंज होते रहेंगे. कलर्स का मतलब जैसे जिस क्वेश्चन को मैंने आंसर कर दिया वो कलर चेंज हो जाएगा, ताकि मुझे पता रहेगा ग्रिड देख के कि कौन सा कलर ठीक मैं आंसर कर चुका. अगर मैं किसी क्वेश्चन को लेफ्ट कर देता हूं, आंसर नहीं देता, तो उसमें दूसरा कलर आ जाएगा. और अगर मैं किसी क्वेश्चन पे रिव्यू लिखता हूं, एक बटन है यहाँ पे रिव्यू करके. रिव्यू का मतलब क्या है? प्रीवियस नेक्स्ट तो सबको पता है, पीछे जाओ आगे जाओ ये तो सबको पता है. रिव्यू का मतलब है मैं किसी क्वेश्चन को आंसर कर रहा हूँ और आंसर करने के लिए के बाद मैं डाउटफुल हूँ, ये सही हो सकता है नहीं भी हो सकता, आई एम कंफ्यूज, ये आरबीआई गवर्नर है या फाइनेंस मिनिस्टर है, दोनों में से एक हो सकता है. इन दैट केस यू जस्ट पुट अ वर्ड टिक रिव्यू हेयर. इससे कलर चेंज हो जाएगा कोडिंग में. अब जब यहाँ कलर चेंज हो जाएगा तो आपको पता लग जाएगा कौन से क्वेश्चन को मुझे वापस देखना है, क्योंकि आप 90 क्वेश्चंस को बार बार एक एक को ढूंढते रहोगे तो दिक्कत आएगी. सो दिस इज कलर कोडिंग हेल्पफुल फॉर यू. आप क्वेश्चन को टिक करके अनटिक भी कर सकते हैं. मैंने आंसर दिया आरबीआई गवर्नर, मुझे इसको नहीं करना अटेम्प्ट, मैं वापस यहाँ पे टिक करूंगा, इट विल बिकम अनआंसर्ड. यू कैन डू दैट. एनी क्वेश्चन यू लाइक टू आस्क ऑन एग्जाम पैटर्न और एग्जाम स्क्रीन. आपको 1 आवर 2 आवर्स मिलेंगे, 120 मिनट्स. दीज आर वेरी सफिशिएंट फॉर यू. आईबीबीआई सेंटर आपको रफ पेपर्स देगा प्रैक्टिस करने के लिए जितने आपको चाहिए, बट आप उनमें से कोई भी पेपर अपने घर लेके नहीं आ सकते. तो मैंने जब पहला एग्जाम दिया था, मैंने सोचा मैं सारे एग्जाम, मेरा
1 घंटे में खत्म हो गया था। मैंने कहा 1 घंटा खाली बैठा है, मैं सारे क्वेश्चन लिख लेता हूँ ताकि अपने फ्रेंड्स को बता दूंगा। मुझे तो लग रहा था मैं पास हो जाऊंगा, मैंने कहा अपने फ्रेंड्स को दे दूंगा ये क्वेश्चन आए थे। बट जैसे ही आप बाहर निकलते हैं वो सारे पेपर आपसे वापस लेते हैं, क्योंकि आपको नंबर करके पेपर देते हैं। सो दे नो कि जो बंदा इस सेंटर कंप्यूटर पे बैठा है उसको हमने 5 पेपर दिए तो 5 ही लेंगे। सो डू नॉट ट्राई टू राइट एनीथिंग ऑन द एग्जाम पेपर, वो आपको वापस देने पड़ेंगे उनको। माय सजेशन वुड बी, जब भी आप एग्जाम की प्रैक्टिस, जब एग्जाम जाएं, उनसे जब भी रफ पेपर ले लीजिए और लिखना स्टार्ट करिए कि कितने क्वेश्चंस आपको लगते हैं ठीक हो गए। तो सपोज आप पेपर पे कॉलम बना लीजिए 1 1 1 1, जैसे होता है ना चार्ट, तो आपको पता लगता रहेगा इतने क्वेश्चन मुझे लगता है कि बिल्कुल ठीक है मेरे। जब आप 70 क्वेश्चंस तक पहुंच जाते हैं कि 70 क्वेश्चंस मुझे लगता है बिल्कुल ठीक है मेरे हिसाब से, then that is the time you should stop taking chances, तब तुक्के मारना बंद कर दीजिए। और जो क्वेश्चन आपको लगे मुझे बिल्कुल ही नहीं आते, मैंने पहले कभी नहीं सुने, तो आप तुक्का मत लगाइए उसमें, क्योंकि हो सकता है आपके 60 क्वेश्चन सही हो रहे हो, एक गलत क्वेश्चन आपका 59.75 ले आएगा। तो जब भी you think you are in the range of 60 to 70 correct answers, stop taking chances, फिर वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा जो बिल्कुल सही हो, जो 100% श्योर हो। जहां पे भी आप 50-50 हो वहां आप चांस ले सकते हो। 4 में से 2 ऑप्शन तो आपको पता है पर्टिकुलरली नहीं हो ही नहीं सकते, तो 2 आपके ऑप्शंस ले सकते हो। बट जहां आपको चारों ऑप्शन फर्स्ट टाइम मिल रहे हो, नेवर एवर डू दैट कॉल, ऑलवेज बी वेरी 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 selective. So this is probably all. Any question you would like to ask? Probably I will send the PPT and the rules. I've sent everything, and my just suggestion would be try to give exam as soon as possible. You can all clear. Numbers look scary कि result percentage कम आता है, but वो कम नहीं आता, हम एग्जाम नहीं देते या हम डिले करते हैं। आप जल्दी एग्जाम देंगे तो आई एम श्योर यू ऑल कैन बिकम वैल्यूज वेरी क्विकली। एंड एग्जाम से डर लगता है, बस वो डर के आगे ही जाना है, हमें डर के आगे जीत है। माउंटेन ड्यू भी डर के आगे ही है। Give your exams quickly. I would be willing and happy to meet you all as a registered valuer, because IBBA में इतने केसेस आते हैं, कहीं ना कहीं will definitely get in touch. कभी IBC में आपको रिक्वायरमेंट होगी, कभी हमें रिक्वायरमेंट होगी, या कभी आप अदर साइड से वैल्यूएशन करेंगे। So we all will be there, and if you need any assistance, RVO, Vijay ji team and me and other faculties can always help you. Other faculties can share. Okay, my one humble advice: मैंडेटरी रीड IBBA सैंपल पेपर, मैंडेटरी। लैंड एंड बिल्डिंग वाले को लैंड एंड बिल्डिंग का भी पढ़ना है, प्लांट एंड मशीनरी वाले का भी पढ़ना है, और वाइस वर्सा प्लांट एंड मशीनरी वाले को भी लैंड एंड बिल्डिंग का पढ़ना है। हमें क्यों पढ़ना है? बिकॉज आप लोगों के 29 मार्क्स का टॉपिक सेम है, तो दोनों क्वेश्चंस वहां पे अलग अलग क्वेश्चंस है दोनों के सैंपल पेपर्स में, तो पढ़िए, लिख के रख लीजिए। मेरा 100% चैलेंज है, मिनिमम 6 मार्क्स का, बिटवीन 5 to 6 मार्क्स मिनिमम यू विल गेट फ्रॉम सैंपल पेपर एज इट इज। या आप किसी से भी पूछ लेना, जो भी आपका लैंड एंड बिल्डिंग का फैकल्टी आया होगा, मे बी लक्ष्य और एनीबडी, तो सैंपल पेपर से मैंडेटरी पढ़ना है। और आपका क्वेश्चन बैंक लिमिटेड है, तो क्वेश्चंस रिपीट होता है मैंडेटरी, सो जस्ट डू दैट। I think now the time is up. I'll take your leave. We can have a quick 15 minutes break, and then the new faculty Neha Bhandari will come and will take on the remaining topic of basics of accounts, which should be a very light, those who are aware of accounts. So I thank you all for patient hearing, and it was pleasure interacting you. Would be happy to see you all as a registered valuer soon. Exam looks tough but not tough, and just start preparing, start fixing a deadline, book a deadline, जो भी आपको timeline अच्छी लगती है, maybe September first week, second week, whatever makes sense to you, just do that, and we all can become. Happy to see you again as a registered valuer very soon. Thank you all. And now I'll share all the data with Thank you for your Vijay ji. kind guidance. No sir, my pleasure sir, that is to be there. We'll see you soon. Have a good day. Thank you.
Good evening, everyone. We are now starting with the topic Principles of Bookkeeping and Accounting. First, let's see what is accounting. Everything accounts for. अपन जो Disturbance in your voice. Hello. Yeah, there seems to be some disturbance in your voice. Everything accounts for. अपन जो everything accounts for. अपन जो sorry. Hello. Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, yes. Okay. So we are starting with our topic, Principles of Bookkeeping and Accounting. Accounting. In a daily life, for everything we account for, what we have gathered and what we have lost. It is the main principle of anything we do. Purpose of our accounting statements is like the final accounts, cash flow statements, to provide financial information about our organization to the interested parties. For example, it could be government, it could be bankers, it could be financial institutions, any of them, and even sometimes employees as well. Now, there are two main things for accounting. One is accounting principles and accounting conventions. Accounting principles we also called as a GAP, that is General Accepted Accounting Principles. These are the assumptions that we supposed to have in our accounting. Let's see what are the accounting principles. It maintains the transparency, consistency, comparability. First, accounting concept, business entity concept. It says, the concept says there is a separate entity of the business from the proprietor. First, see what does entity means. Entity means that something that has its different existence. The business and the businessman is separate in their entity way. For example, I am a businessman. I incurred 1,000 rupees expense on my own grocery for my household. This particular transaction will not entered in our business books. Why? Because it is a transaction of businessmen, not the business. Else, if I have expended 1,000 rupees for the stationery to be used in the office, this will definitely come into my books. Reason? Because it hits my business. Only the transaction which is related to my business will be entered in my business books. So it is a clear cut funda that business is separate and business proprietor is altogether separate. नेक्स्ट डुअल कंसेप्ट, हर सिक्के के जैसे दो पहलू होते हैं तो हर ट्रांजैक्शन के भी दो साइड्स होते हैं. इफ आई एम गिविंग समथिंग देन आई मस्ट बी टेकिंग समथिंग फ्रॉम यू, so it is hit at dual side.
फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको 1000 रुपए दिए कोई चीज खरीदने के लिए, मेरे यहाँ से 1000 रुपए गए और मेरे पास चीज आई, वैसा ही सामने वाले के पास हुआ, उसके यहाँ से चीज गई और उसके पास पैसा आया। Next concept, realization concept. According to this concept, only the profit which is actually realized is only to be accounted for. For example, आज मेरे एक शेयर की वैल्यू 1000 रुपए ज्यादा बढ़ गई. Like today I am sitting on lakh rupee of profit, but I can't book it in my books because it is still unrealized. Till the time I don't sell it, it will be termed only as unrealized, और unrealized को हम अपनी books में नहीं account for करते हैं. Going concern, आप कुछ भी काम करते हैं या कुछ भी चीज खरीदते हैं, आप हमेशा क्या मानते हैं, ये हम लंबे समय के लिए चलेगा, देयर वुड बी अ कंटिन्यूटी ऑफ द थिंग. तो नॉर्मली जब भी मैं अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करती हूँ तो आई फील इट इज फॉर अ लॉन्गर टाइम. अगर आप बात करते हैं कि कोई पर्टिकुलर वेंचर्स होते हैं जो साल भर के लिए होते हैं, वो वेंचर कहलाते हैं. बट नॉर्मल बिजनेस का बेसिक प्रिंसिपल है दैट इज इट इज अ गोइंग ऑन कंसेप्ट. In a minute. Going concern concept, that is, the business will go for a long time. Accrual basis of accounting. This is the main principle And of your our screen business. isn't visible. Just a minute, I'm fixing it. Is it okay? Yes. Accrual basis of accounting. Normally, in our accounting, we follow the. जी क्या बोल रहे हैं? प्रेजेंटेशन नहीं आ रहा है आपका. प्रेजेंटेशन अभी चेक कीजिए सर, अब शेयर हो रहा है. शेयर हो रहा है मैम. Yes, ma'am. Yes. शेयर हो रहा है? Can everyone see it? Yes. Okay. Yes, ma'am. Okay. Accrual basis. Our accounts normally follow the accrual basis. For example, there has been some, for say, I have purchased some material for my business, but I haven't paid for that. Then though I will account for that particular purchases. It doesn't matter whether I have paid the cash or not, or whether I have received cash or not. The things will be accounted as it is. And whenever the cash will come, then I will take it for. But मैं उसका अक्रूवल बेसिस के अकॉर्डिंग ही उसको एंटर अप करूंगी. जैसे कि मुझे किसी की वेजेस देनी थी, बट मैंने वेजेस अभी नहीं दी है. सपोज कर लीजिए जुलाई मंथ की, फिर भी मैंने जुलाई मंथ की बुक्स में वाली वेजेस अकाउंट फॉर कर ली है, चाहे से मैं उसको 2 महीने बाद करूं. बट अक्रूवल बेसिस कहता है जैसे भी कुछ भी चीजें या तो सर्विस परफॉर्म हो गई है या गुड्स डिलीवर कर लिए हैं, हाथों हाथ मुझे उसके लेवल पे उसको अकाउंट फॉर कर लेना है. Normally we don't follow the cash basis of accounting. Generally, as per the GAAP, accrual basis is used, but very few of them use cash basis also. Otherwise,
Normally the accrual basis is used. The preferable one is accrual basis only. Next concept is accounting period concept. See, accounting period, as we know that the business is like going concern concept, it will go for long period, but the other persons, we the business itself want to see what is the health of our business and how can we see it by its performance via income statement, via financial statements. But we have to decide some particular period so that we can count upon how the things are working upon. So normally in our business industry, from 1 year is regarded as a normal accounting period, and we started from 1st April and it ends by 31st of March. Then the money measurement concept. It concepts directly clearly says only those transaction will be accounted which can be counted or measured in the terms of money. For example, मेरी इंडस्ट्री मेरी फैक्ट्री ने 10 लाख रुपए कमाए, ये जो प्रॉफिट है 10 लाख का, ये मनी मेजर्ड है तो मैंने इसको अकाउंट फॉर कर लिया. मेरा असेट खाली मेरा पैसा या मेरा रेवेन्यू ये सब नहीं होता. मेरे जो वर्कर्स हैं दे आर आल्सो माय एसेट्स. उनका हार्ड वर्क, उनका डेडिकेशन, बट उनके हार्डवर्क और डेडिकेशन को मैं कन्वर्ट नहीं कर सकती मनी टर्म्स पे, तो ये मेजर नहीं हो सकते. तो ओनली द थिंग्स व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू द मनी, ओनली दोस ट्रांजैक्शन विल अकाउंट फॉर ओनली. नेक्स्ट इज द कॉस्ट कंसेप्ट. The thing, all the transactions, all the business transactions I mean, will be recorded at the cost price. Suppose I bought one AC today. मैंने उसको खरीदा 50,000 में, अगले ही दिन उसकी प्राइस हो गई 60,000 रुपए. मैं अपनी बुक्स में उसको 50,000 पर ही एंटर करूंगी. कॉस्ट कंसेप्ट को हम हिस्टोरिकल कॉस्ट भी बोलते हैं. व्हाई? कॉस्ट व्हिच हैव बीन पेड इन द पास्ट is a historic one. So we will always and always account it at the cost price only, not the market price. After the accounting concepts, let's see the conventions. See, accounting concepts is the pre-assumptions that we presume while accounting any of the transactions. Conventions are basically traditions, customs, or you can say as the rules that needed to be followed while doing any sort of accounting. सबसे पहला और जरूरी, क्यों? क्योंकि अपना अकाउंटिंग बहुत लोगों के लिए एक मिरर होता है, बहुत लोगों की एक्टिविटीज गवर्न अप करता है. डिस्क्लोजर. अब जो भी अकाउंटेंट है बिजनेस का, उसको इन टोटलिटी में एनी इंफॉर्मेशन, वेदर उससे अभी प्रेजेंट सिचुएशन में फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा, उसको सारी इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्क्लोज अप कर देना चाहिए. अपने जो भी इनकम स्टेटमेंट्स होते हैं उसके नीचे एक अलग से डिस्क्लोजर का प्लेस होता है. ही शुड पुट अपॉन कि अगर अगले साल के लिए उसको कुछ प्रॉब्लम दिख रही है तो ही शुड मेक अ स्टार एंड पुट द पॉइंट अपॉन दैट. या पहले का उसको कुछ डिस्क्लोजर पता चला है, पहले का कुछ एनीथिंग इंपॉर्टेंट विच इज रिलेटेड टू द बिजनेस. सेकेंड, अगर अपन देखें मटीरियलिटी, मटीरियलिटी एक्सेप्शन है डिस्क्लोजर का ही. मटीरियलिटी स्पेसिफिक बात करता है, जनरल बात नहीं करता. डिस्क्लोजर तो कहता है कोई भी इंपॉर्टेंट हो, बट मटीरियल कहता है I want the material things only to be disclosed down the income statements. अब पॉइंट ये उठा, डिबेट आया कि हाउ कैन यू से अ पर्टिकुलर थिंग इज इंपॉर्टेंट और अ पर्टिकुलर थिंग इज मटीरियल. इसका डेफिनेशन आया, anything which is of the use to the people who are using the financial statements as like management persons, we can say government, we can say employees, banking, any other outer agency or the inner agency. किसी भी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से इन किसी को भी फर्क पड़ता है या इनके डिसीजन को वो रिवॉल्व अप कर सकता है, दैट थिंग इज मटीरियल एंड नीडेड टू view of the health of the organization. Consistency. See,
लाइफ में कंसिस्टेंसी कई हद तक बहुत जरूरी है, बट धीरे धीरे जैसे ही नीड होती है तो हम भी थोड़ा थोड़ा बदलाव करते हैं. नॉर्मली अगर जैसे मैं अपनी अकाउंटिंग अक्रूवल बेसिस पे कर रही हूँ, तो यही माना जाएगा कि मेरे सारे सालों की जो भी अकाउंटिंग हुई है आज तक वो अक्रूवल बेसिस पे ही होगी. बट पहले जैसे मैं अपना बिजनेस दुकान से करती थी, बट बिकॉज ड्यू टू लॉकडाउन I might have to switch for the online ones. So that is okay. There must be some need of changing the process. आप normally फंडे जो अपने accounting principle के assumption से you can't change them, but you can alter them as per the usages. And last, conservatism, or I also called it as prudence convention. अपने अपन हमेशा जो दिमाग अपना कहता है वो कहता है कि फ्यूचर में अपने क्या क्या एक्सपेंस होने लगते हैं. लाइक अगर किसी का बच्चा है तो वो अभी चाहे वो साल भर का ही है तो भी वो सोचने लग जाता है थोड़े दिन में इसकी एजुकेशन होएगी, फिर प्रोफेशनल पढ़ाई के खर्चे, फिर शादी के खर्चे. वो कभी ये नहीं सोचता ये बच्चा बड़ा होके बहुत कमाएगा हमको वापस देगा, वो खाली एक्सपेंस को अकाउंट फॉर करता है. तो वैसे ही बिजनेस भी उसी वे में सोचता है. कुछ भी एंटिसिपेटेड लॉसेस अगर मुझे मेरे बिजनेस के दिख रहे हैं तो आई विल मेक सम प्रोविजंस फॉर दैट. लाइक मुझे जैसे लग रहा है कि अगले साल मेरी शायद पर्टिकुलरली इस चीज में ज्यादा खर्चे होंगे या लॉस हो सकते हैं, तो मैं इसी साल से उसके लिए कुछ ना कुछ प्रोविजन कर सकती हूँ. बट अगर मुझे ये लग रहा है कि मुझे कोई एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स हो सकते हैं, आई विल दैट इज नथिंग टू डू विथ माय अकाउंटेंसी ट्रांजैक्शंस. Bookkeeping, as the word says, to keep up the books, to maintain the books, maintain or recording transaction, any sort of transaction. Whether I'm buying a pen only for my business, that is to be also recorded, because लिखी हुई चीज याद रहती है तो बेटर एवरीथिंग, एवरी सॉर्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस को मुझे बुक कीप अप करना पड़ेगा. इट इज लाइक रिकॉर्डिंग, देन क्लासिफाइंग ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस. इसमें बहुत सारी बुक्स होती है. सबसे इसकी जो मेन जनरल बुक होती है उसका नाम ही जनरल है. उसमें जितने भी ट्रांजैक्शंस है रिलेटेड टू द बिजनेस, अकाउंटेंट उसके अंदर एंटर अप कर देता है. अब फॉर सपोज उसमें होंगे 1000, ये बड़े वाले बिजनेस को वो खाली जनरल से वो ही कांट see the things ki where the sales is happening, where the purchases have been done, who is the creditor, who is the debtor. So what they do, they bifurcate that particular entries into the ledger. Ledger is particularly the different accounts of everything, whether it is cash, whether it is purchase, sale, anything like that. Now let's see what is the difference between the bookkeeping and the accountancy. As per the things, when the bookkeeping ends, there the accountancy starts. Bookkeeping is mere the recording of the transactions, and accountancy is summarizing of the thing. It's like analyzing of the thing, making of the financial statements. Accountancy is a wider term than bookkeeping. Bookkeeping is the base. Over that the accountancy grew up. जितनी अच्छी बुक कीपिंग करी हुई होगी उतनी ही अच्छी अपनी अकाउंटिंग होगी. डबल एंट्री सिस्टम, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको डुअल कंसेप्ट समझाया था. डबल एंट्री, दैट इज एवरीथिंग, any sort of transaction will have two aspects. One is debit and another is credit. The main thing is to find out what we have to debit and what we have to credit upon. The three are the golden rules. अगर ये 3 rules आपने समझ लिए तो everything is done for the accounting. First, debit what comes in, credit what goes out. For example, मैंने AC खरीदा 50,000 में. जब मुझे इस वाली पर्टिकुलरली एंट्री करनी है, I will see what is coming. AC is coming, and what is going out, my cash is going out. The entry would be like is AC debit and credit, sorry, and cash is credited. Next,
डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो रिसीव कर रहा है उसको आप डेबिट करिए, जो दे रहा है आप उसको क्रेडिट करिए। तो डेटर शुड बी ऑलवेज डेबिटेड एंड क्रेडिटर शुड बी ऑलवेज क्रेडिटेड। And the third rule says all sort of expenses or losses in any of the way should always be debited, and all the incomes or any sort of the gains should always be credited. उसके बाद अपन बात करते हैं अकाउंट्स की। अकाउंट्स ये सारी जनरल एंट्री हो जाती है, उसके बाद बेसिकली इनको हम अकाउंट फॉर्म में देते हैं, बिकॉज जनरल में बेसिकली आप जैसे सारी की सारी एंट्रीज डाल दी, बट इट डज नॉट शो एनी सॉर्ट ऑफ पिक्चर कि व्हाट वी आर डूइंग, व्हाट इज हैपनिंग इन द बिजनेस। फॉर दैट we just separate up the things, we separate up the entries as per the accounts on which they are following up, like as ledgers, separate ledgers for each and every account. It shows in purchase how many purchases we have done. In sale account we can see how many sales we have done, so it simplifies the procedure. There are mainly 3 types of accounts. First, the personal account. As the name say, it relates to a person. Person, मैं business को भी person में ही कहूंगी. Any sort of person, कोई भी पर्सन से रिलेटेड एनी एंट्री आती है तो उस पर पर्सनल अकाउंट का ही रूल लगेगा और उसको पर्सनल अकाउंट कहलाया जाएगा। नेक्स्ट इज रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। हम इन दोनों को इम्पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। रियल अकाउंट दैट इज रिलेटेड ओनली टू द असेट्स, which assets or any sort of objects. जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, मैंने एक एसी खरीदा, तो ये वाला फॉल करेगा मेरे रियल अकाउंट में, और मैंने उसके लिए क्या दिया था, कैश दिया था, दैट विल ऑल्सो बी अंडर रियल अकाउंट ओनली। नॉमिनल अकाउंट, nominal account is basically related to the expenses and incomes. For example, मैंने सैलरी पे करी तो sorry, सैलरी is basically my expense, तो it will be in the nominal account. और मैंने सैलरी पे कैसे करी, कैश के थ्रू पे करी, कैश will be under the real account. For example, अपन इसमें मैच द फॉलोइंग करते हैं। आप बताइए इसमें रमेश कौन से अकाउंट में जाएगा? एवरीबॉडी? पर्सनल। देना बैंक? नहीं, देना बैंक पर्सनल है, बिकॉज ये भी एक एंटिटी है। मैंने आपको बोला था नॉट ओनली द लिविंग पर्सन एज वेल एज द एंटिटी विल आल्सो बी अंडर द पर्सनल अकाउंट ओनली। और अपन देख सकते हैं कंप्यूटर और लैंड हुआ रियल अकाउंट में, रेंट एंड डिस्काउंट हुआ अपने नॉमिनल अकाउंट में। बस आपको ये 3 वेरिफिकेशंस आने चाहिए कि ये किसमें फॉलो अप करेगा। जनरल मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, जिसमें सारी की सारी एंट्रीज फ्लो अप करती है। All the entries, whether it is of a pin, whether it is of a plane, all will fall under the general category only. जनरल में डालने के बाद फिर उनका सब डिविजन्स होते हैं। लेजर, जैसे ही हमारा जनरल एंट्री बन गया, उसके बाद लेजर का काम चालू होता है। लेजर में, लेजर इज बेसिकली अकाउंट्स। जनरल में खाली एंट्रीज होता है, कोई अकाउंट नहीं बनता, बट नाउ इट इज द टाइम टू मेक अप द अकाउंट सो दैट थिंग्स कैन बी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। तो वो अलग अलग अकाउंट्स में फॉलो अप करते हैं, वेदर इट इज ऑफ अ पर्सन, जैसे राम ने मशीनरी खरीदी, सॉरी, तो इसके लिए एक मशीनरी अकाउंट हो जाएगा। या एक्सपेंस किया, मैंने सैलरी दी, सैलरी का अकाउंट हो जाएगा। या मेरी कहीं से इनकम आई, उसका भी अकाउंट हो जाएगा। सो दैट वी कैन सी अप इजीली, इससे हमें चीजें क्लियर हो जाती है आखिर हमारे बिजनेस में रियलिटी में चल क्या रहा है, व्हाट इज आवर पोजीशन दैट वी आर गोइंग थ्रू। जनरल बन चुका है, एंट्रीज आपने सारी कर दी है, उसके बाद में आपने लेजर बना के सारे अकाउंट्स भी अप टू डेट कर दिए हैं। अब लेट्स सी
कि अपन ने जो इतनी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करी है, आर वी करेक्ट अपॉन दैट? तो व्हाट इज, अपन अब वापस से खाली उनको एक्यूरेसी चेक करने के लिए अपन वापस से तो एक एक एंट्रीज देखेंगे नहीं, दैट इज टीडियस एंड एरर प्रोन एज वेल. सो there is a way of that. It is a trial balance. The point to be clear, trial balance कोई अकाउंट नहीं होता. ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होता है. आपने लेजर में जितने भी अकाउंट्स बनाए, एनी सॉर्ट ऑफ अकाउंट्स, हाउ मेनी ऑफ देम, उसके सबके क्लोजिंग बैलेंसेस ट्रायल बैलेंस में फॉल अपॉन करते हैं. जो भी असेट्स हैं, जो भी इनकम्स है, जो भी लायबिलिटीज हैं, जो भी लॉसेस है, सारे के सारे क्लोजिंग बैलेंस अपन ट्रायल बैलेंस में डालेंगे. जो भी असेट्स और इनकम्स है वो वाली अपन डेबिट करेंगे, और जो भी अपने ये लायबिलिटीज है उनको क्रेडिट करेंगे, लायबिलिटीज एंड लॉसेस को. एंड में जो भी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड के जो भी बैलेंसेस है, दोनों अग्री अपॉन करेंगे. यही अपनी एक्यूरेसी चेक करेंगे और देखेंगे कि अपना मैथमेटिकली अपन कहीं गलत तो नहीं है अपने कोई भी वे की अकाउंटिंग में. इट इज बेसिकली टेलिंग ऑफ द थिंग. अकाउंटिंग इक्वेशन इन दिस, सारे के सारे जो भी अपना अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन हो रहा है, इस वाली इक्वेशन से हमें पता चल जाएगा वी आर राइट और नॉट. असेट्स कहते हैं दैट वी मस्ट बी ऑलवेज एंड ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी. या अगर मुझे ओनर इक्विटी फाइंड आउट करनी है तो आई कैन डू अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन लाइक दैट, इक्विटी इज इक्वल टू असेट माइनस लायबिलिटी. ये अगर इक्वेशन मेरी एकदम ट्रू अप हो रही है, दैट मींस मेरी अकाउंटिंग सारी की सारी सही जा रही है. जैसे कि इफ असेट्स टोटल 5 लाख एंड लायबिलिटीज टोटल 2 लाख, then definitely the equity must be of 3 लाख. अगर यहाँ पे कोई भी कुछ भी क्या बोलते हैं वेरी अप हो जाता है तो देयर इज सम रॉन्ग इन आवर अकाउंटिंग. Then we talk about the assets, the valuable resources of my business, the resources which are owned by my firm. For example, अगर मैंने मेरे बिजनेस के लिए अभी एसी खरीदा था, मैं उसको एज अ असेट अपने बैलेंस शीट में दिखाऊंगी. इट इज एन asset like that has been used for a longer time. ये एक साल में कंज्यूम नहीं हो जाएगा. that is for the longer term. मुझे इसके फ्यूचर बेनिफिट्स आगे के बहुत टाइम तक मिलते जाएंगे. असेट्स को अपन प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द बिजनेस भी कहा जा सकता है. इसके एग्जांपल्स है कैश बैलेंस, मशीनरी, फर्नीचर, मोटर व्हीकल्स, एनीथिंग it could be. There are two kinds of assets. First, physical assets, fixed assets. Second is current assets. Fixed assets which are normally fixed, नाम से ही पता चल रहा है, जो बहुत लंबे टाइम तक टिकने वाले assets हैं. जैसे कि मैंने मेरी इंडस्ट्री के लिए कोई भी मशीनरी खरीद रखी है, प्लांट एंड मशीनरी, या कोई बिल्डिंग खरीद रखी है, which are not बोलते ना मतलब वो बदलने का उसका थोड़ा लेटर वाला होता है, फिक्स रहता है नॉर्मली वो. और अगर मैं करंट असेट की बात करूं तो मेरा कैश बैलेंस का हमेशा फिक्स नहीं रह सकता है. इट कैन वेरी एट एनी टाइम. जो जल्दी बदलते हैं एसेट्स उसको हम करंट एसेट्स बोलते हैं. जैसे कि मेरा स्टॉक जो रखा हुआ है मेरे गोडाउन में, इट इज नॉट ऑलवेज फिक्स. अगर आज 1000 माल रखा है तो कल हो सकता है 2000 हो सकता है, परसों हो सकता है 0 हो जाए. दिस इज वेरिएबल. वैसी ही मेरी लायबिलिटीज होती है. The liabilities are my obligation. I mean to say my business obligations. For example, मैं एक बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ. मैंने मेरे बिजनेस में 5 लाख रुपए लगाए. अपन ने फर्स्ट अपना ये प्रिंसिपल पढ़ा था, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट. जब मैंने मेरा बिजनेस जिसमें मैं ही सोल प्रोपराइटर हूँ, मैं अपनी खुद की मतलब अपने बिजनेस की बैलेंस शीट में वो 5 लाख रुपए लाइबिलिटी साइड में लिखे जाएंगे इक्विटी. व्हाई? बिजनेस और मेरी एंटिटी डिफरेंट है. एट द एंड ऑफ द बिजनेस
बिजनेस को मुझे ये 5 लाख रुपए लौटाने पड़ेंगे. That is a obligation which I have done on the firm, which he have to return to me. See, like liabilities be short or long हो सकती है. I mean to say by fixed one or the like current one. अगर कोई liability मेरे को साल भर के अंदर ही चुकानी है तो वो current में आ सकती है. लंबी चल रही है like as equity, मैं उसको long term वाली liability में account for करूंगी. अभी जैसे मैंने आपको याली ओनर की इक्विटी का फॉर्मूला बताया था, दैट इज असेट्स माइनस लायबिलिटी. आप इसका कुछ भी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन कर लीजिए, या तो असेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस ओनर्स, इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट वन. आप इसको कोई भी वे में देख लीजिए. इट इज द बेस ऑफ द अकाउंटिंग. इट शुड बी मैच्ड अपॉन. नाउ अपना टोटली लेजर जनरल हो चुका है. जनरल अपना लेजर भी बन गया. अपना ट्रायल बैलेंस में सब कुछ टैली अप भी हो रहा है. नाउ इट्स टाइम टू एनालाइज अप द थिंग्स. ट्रांजैक्शन एनालिसिस इज द सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोसेस. ये एनालिसिस के लिए ही मेजरली देखा जाए तो बनते हैं हमारे इनकम स्टेटमेंट्स या अपने फाइनेंशियल. ये टोटली हमें बताते हैं वेयर वी आर स्टैंडिंग अपॉन. अपने को शायद बिना देखे लग रहा है कि हमारे बहुत इनकम है, बट जब मैंने मेरी बैलेंस शीट देखी तब मुझे रियल में दिखा मेरे इनकम तो है, बट साथ ही में मेरी स्टैंडिंग लायबिलिटीज भी बहुत ज्यादा है. तो इट गिव्स मी अ सिग्नल ऑन व्हाट द वे वी आर स्टैंडिंग अपॉन. Historical cost, that is anything that we record for the asset, we must always use a historic cost. Historic cost means मैंने जिस पे उसको परचेज किया है, that is the purchase price that is to be accounted for. Revenue and expenses. Obviously, revenue will always increase my equity and expense will always and always decrease my equity. revenues inflow of my assets, और या तो मेरे asset बढ़ते जाए या मेरी liabilities में reduction हो जाए. That both sound for revenue to me. और हर business को revenue generation का ही main इसी main source के लिए वो अपने statement को analyze भी करता है. One important point to be record for, like cash need not to be received in order to for revenue to be recorded. See, our basis is the accrual basis. Whether or not the suppose करिए मेरे को कहीं से सैलरी मिलनी थी, चाहे से वो सैलरी मुझे 4 महीने बाद मिले, but still मैं उस particular month में वो book कर लूंगी. Why? Because we follow the accrual method. Whether it has not been received in cash, still I will account it for. और एक्सपेंसेस का भी यही है. जैसे ही रिसोर्सेज कंज्यूम हो जाते हैं, चाहे से मैंने उसको पे किया है कि नहीं पे किया, तो उसको मैं रिकॉर्ड अप कर लूंगी. They're basically the cost of doing the business. It could be anything, whether it is salary, wages, rent, insurance, any sort of utility you talk about. Now the final, सबका compilation आ रहा है. That is the final accounts, that which show the business in the mirror, where what you are looking like. Financial accounts में मैं 3 चीजों को मेन बोलती हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट और P&L. ट्रेडिंग अकाउंट और P&L हमेशा साथ में बनते हैं. सबसे ऊपर रहता है ट्रेडिंग अकाउंट, उसके नीचे बनता है, ये दोनों कंबाइंड स्टेटमेंट है. इन दोनों को मिला के इनको सिंगल बोलने में इनको इनकम स्टेटमेंट भी बोला जाता है. एंड वन मेन पॉइंट टू बी मतलब टू बी केप्ट फॉर द रेफरेंस इज, ये हमेशा ईयरली स्टेटमेंट कहलाता है. It is always, it starts with the 1st April and it ends with the 31st of March. But if I talk about a balance sheet एक डे का स्टेटमेंट होता है. जैसे कि ट्रेडिंग P&L मुझे पूरे साल का ब्यौरा देता है कि मैंने कितना कहाँ कमाया, क्या बेचा, क्या मैंने सेल करी, कितना कहाँ पे मैंने खर्चा किया. तो वही बैलेंस शीट मुझे मेरी स्टैंडिंग, मेरी पोजीशन दिखाता है, दैट कि तुम 31st मार्च
तो तुम कहाँ पे खड़े हुए हो, उस दिन की मेरे को वैल्यूएशन मेरी वैल्यू दिखाता है, व्हाट इज माय वैल्यू ऑन अ पर्टिकुलर डे. इट इज नॉट फॉर द ईयर. बैलेंस शीट इज ऑलवेज फॉर अ पर्टिकुलर डे ओनली. Trading account. If I talk about trading account, it talk about the direct expenses as well as the direct incomes. अब let's see for what our business is for direct. Like as मेरी एक इंडस्ट्री, मेरी एक फैक्ट्री है, मेरे लिए डायरेक्ट इनकम और एक्सपेंस क्या होगी? मेरे लिए डायरेक्ट इनकम और एक्सपेंसेस होगी रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग. मैन्युफैक्चरिंग में मेरे लिए एक्सपेंस होंगे. मैंने अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, रॉ मटेरियल को फिनिश बनाते हैं, तो अगर मैंने कोई रॉ मटेरियल खरीदा है, दैट वुड बी अ डायरेक्ट एक्सपेंस फॉर मी. या मैंने कोई सामान बेचा है, दैट इज एन डायरेक्ट इनकम टू मी. और अगर मैं ट्रेडिंग की बात करूं तो नॉर्मल परचेज ऑफ गुड्स और सेलिंग ऑफ द गुड्स आर इंक्लूडेड इन माय ट्रेडिंग वन. ट्रेडिंग में हमेशा लाइक एज ग्रॉस प्रॉफिट आता है मेरा, नेट आएगा पीएनएल के बाद. तो आपको एक इसमें मेजर बात ये ध्यान रखनी है, ट्रेडिंग में खाली और खाली डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट इनकम को ही अपन अकाउंट फॉर करते हैं. और उसका जो भी रिजल्ट आता है, वेदर इट इज अ ग्रॉस प्रॉफिट और अ ग्रॉस लॉस, इट विल बी कैरी फॉरवर्ड टू द माय पीएनएल अकाउंट्स. अब नाउ लेट्स सी व्हाट कम्स इन द पीएनएल. जब डायरेक्ट अपन ने सारा का सारा ट्रेडिंग में डाल दिया, तो अब बचे हैं हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम्स. दे ऑल विल फॉल अंडर माय पीएनएल अकाउंट. और जितने भी मैंने पीएनएल में अपने एक्सपेंस डाले, अपने इनकम्स डाली, उसके बाद का जो भी रिजल्ट आता है उसका नाम दिया जाता है या तो नेट. अगर मेरे प्रॉफिट हो रहा है तो नेट प्रॉफिट, और अगर मेरे लॉस हो रहा है तो इट विल बी टर्म्ड एज नेट लॉस. अब मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात करूं तो बिजनेस के लिए मैंने स्टेशनरी खरीदी. इट इज नेवर अ डायरेक्ट वन. वाई? डायरेक्ट वाले मेरे होते हैं, जैसे कोई रॉ मटेरियल परचेज किया, दैट इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस. बट अगर स्टेशनरी खरीदी, मैंने रेंट पे किया, इंटरेस्ट पे किया, तो ये सारे के सारे मेरे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएंगे. ये मैंने आपको बता ही दिया है. ये मेजर पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है कि पीएनएल और ट्रेडिंग हमेशा और हमेशा पूरे ईयर के लिए होते हैं. दैट इज अ 12 मंथ स्टेटमेंट. बट फॉर द बैलेंस शीट इफ आई टॉक, दैट इज जस्ट अ पर्टिकुलर डे स्टेटमेंट. तो ऐसे ही किया जाता है, ट्रेडिंग एंड पीएनएल के ऊपर लिखा जाता है. जैसे अपन सपोज कर लेते हैं 2020 का ही सपोज कर लेते हैं, फॉर द ईयर एंडिंग. अपना ये वाला 2020 का जो फाइनेंशियल पीरियड स्टार्ट हुआ है, वो हुआ है 1 अप्रैल 2020 से. ये एंड होएगा 31 मार्च 2021 पे. तो अगर मैं मेरा ट्रेडिंग पीएनएल बना रही हूँ तो मैं इस पे लिखूंगी ऊपर में, फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2021. और यही मैं इसकी बैलेंस शीट बना रही हूँ, तो इसके हेडिंग में होएगा माय बैलेंस शीट एज ऑन द डेट. सी, वहां पे यूज किया था फॉर द ईयर एंडिंग, यहाँ पे मेरा पॉइंट आएगा एज ऑन द डेट 31 मार्च 2021. My balance sheet will talk only about that particular day, not for any particular year. बैलेंस शीट मुझे पूरी शो कर देगी मेरे पास कितने असेट्स है, असेट्स में कितने फिक्स्ड असेट्स है, कितनी करंट असेट्स है, मेरी लाइबिलिटीज कितनी है, मेरी करंट लाइबिलिटीज कितनी है. जो भी मेरा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो मेरे पीएनएल में हुआ है, वो बैलेंस शीट के इक्विटी में से, अगर लॉस हुआ है तो इक्विटी में से माइनस हो जाएगा, और प्रॉफिट हुआ है तो इक्विटी में प्लस हो जाएगा. बैलेंस शीट का मेजरली यूज ये है कि जो भी मेरे यूजर ऑफ मेरे बिजनेस के हैं, जैसे सपोज करिए मेरे को मेरी बिजनेस के लिए लोन चाहिए, मुझे 1 करोड़ का लोन चाहिए, तो बिजनेस जो बैंक मुझे देख के लोन नहीं देगा, वो बेसिकली कहेगा अपने फाइनेंशियल 5 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठा के ले आओ, वी विल चेक देम और हम आपको लोन दे देंगे. वो मेरी बैलेंस शीट देख लेंगे, मेरा ट्रेडिंग पीएनएल, वो मेरी पोजीशन देख लेंगे वाया माय अकाउंटिंग स्टेटमेंट से.
और इधर एनी ऑफ द लाइक गवर्नमेंट हो गया, गवर्नमेंट को मेरी देखना है, या मेरे एम्प्लॉय कहते हैं कि भाई आपके इतना फायदा हुआ है तो भी आपने इस बार बोनस नहीं दिया, तो my financial statements will help them to see कि what is my real position going on. और ना केवल ये एक्सटर्नल एजेंसीज के लिए इम्पोर्टेंट है, इनफैक्ट इंटरनल मैनेजमेंट वो भी बैलेंस शीट, ट्रेडिंग P&L देख के they can variate the change, they can do some variations in our working process. उसके बाद है बात कॉस्ट की, आखिर कॉस्ट में क्या क्या पार्ट होता है। कॉस्ट जो भी एक्सपेंडिचर इनकर्ड हो रहा है किसी भी गिवन थिंग पे, वो कॉस्ट होती है। कॉस्ट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, इट इज लाइक फिक्स्ड एंड वेरिएबल। फॉर सपोज अभी लॉकडाउन की बात करूंगी, मेरा एक ऑफिस है, उसका किराया जाता है 40,000 रुपए महीना। अभी लॉकडाउन की वजह से चाहे मैं 4 महीने ऑफिस नहीं गई तो भी मुझे वो 40,000 रुपए तो पे करना ही पड़ेगा। दिस टर्म्स एज माय फिक्स्ड कॉस्ट। बट मैंने वहां पे बिजली इस्तेमाल नहीं करी, मैंने इलेक्ट्रिसिटी का कोई यूज नहीं किया, तो वो कॉस्ट मेरी कोई फिक्स्ड नहीं आएगी, वो वेरिएबल कॉस्ट है, दैट इज एज पर द यूज। तो बिजनेस में बहुत सारी कॉस्ट ऐसी होती है जो फिक्स्ड होती है, चाहे आप उसको खर्च करो ना करो, यूज करो ना करो, वो तो आप पे इम्प्लाई अप होएगी होएगी। बट देयर आर सम कॉस्ट व्हिच कैन बी वेरिएट एज पर द यूसेज, so that will be termed under variable cost. Now we talk about break even point. Break even point, ये पॉइंट बिजनेस को बताता है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप न्यूट्रल गियर पे हो, ना तो आप लॉस पे हो ना गेन पे हो। और हर बिजनेसमैन चाहता है मेरी सेल्स या मेरी जो भी प्रॉफिट है इस ब्रेक इवन पॉइंट को के ऊपर उठे, क्योंकि इसी पॉइंट के बाद मुझे प्रॉफिट्स होंगे। ये बेसिकली डिटरमाइन कर देता है कि मेरा मिनिमम इतना आउटपुट तो होना ही चाहिए सो दैट आई कैन मेक प्रॉफिट आउट ऑफ दैट। अब मैं आपको इसको टू फॉर्म्स में बताती हूँ। ब्रेक इवन पॉइंट अपन कैसे निकालेंगे, ये वाला जो आपको फॉर्मूला दिख रहा है ये आपको यूनिट्स में बताएगा कि कितनी यूनिट्स बिकनी चाहिए तब जाके मेरे को कोई उस यूनिट के बिकने के बाद मेरे को प्रॉफिट होएगा। इसका फॉर्मूला कहता है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फॉर एग्जाम्पल मेरे सपोज कर लीजिए 1,000 रुपए मेरी कोई चीज की फिक्स्ड कॉस्ट है, ठीक है, और 20 रुपए सेलिंग प्राइस है, और वेरिएबल कॉस्ट मेरी 10 रुपए है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये जो आप फिक्स कॉस्ट के नीचे देख रहे हैं, मैं पहले कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको ये बताती हूँ। सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। तो मेरा सेलिंग प्राइस था 20 और वेरिएबल कॉस्ट था 10 रुपीज, तो अगर मैं इनको माइनस करूं तो कंट्रीब्यूशन आ जाता है 10 रुपए पर यूनिट। और अगर मैं इसको 1000 से डिवाइड करती हूँ तो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स आता है 100 यूनिट्स का। मतलब जब अगर मेरी 100 यूनिट बिकती है तो मैं ब्रेक इवन पॉइंट पे स्टैंड करती हूँ। तो अब अगर मुझे मुनाफा कमाना है तो मुझे कम से कम 100 यूनिट से ज्यादा बेचना होगा, और अगर मैं 80 यूनिट ही बेच पा रही हूँ तो दैट मीन्स आई एम अंडर द लॉस सिचुएशन। So it is the way how can one businessman find out कि where he is standing upon. Now let's talk about कि अपन एग्जाम में इन चीजों को कैसे कैसे देख सकते हैं, कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी किसी ने कहा था कि देना बैंक नॉमिनल में जाएगा, आपको अपने आप ही वाला फंडा याद आ जाना चाहिए कि नॉमिनल में खाली एक्सपेंसेस आएंगे या इनकम आएगी। बैंक इज नो ऑफ द वे इट इज अ इनकम और एक्सपेंस, राइट। बैंक कोई एसेट भी नहीं है, तो डेफिनेटली बैंक इज एन एंटिटी, इट विल डेफिनेटली फॉल अपॉन द पर्सनल अकाउंट ओनली। आपको यही चॉइस पूरा वाला, अगर आपने 3 उनके वाला फंडा देख लिया कि पर्सनल अकाउंट में कोई पर्सन का कोई भी हिटिंग आती है तो वो पर्सनल अकाउंट पे आएगा, या कोई असेट की हिटिंग आती है तो वो डायरेक्टली रियल अकाउंट में जाएगा। नॉमिनल साफ कहता है मेरे में खाली एक्सपेंसेस और इनकम को ही अकाउंट फॉर होएगा। तो जैसे आपको सैलरी दिख रही है या वेजेस दिख रहे हैं या बोनस दिख रहा है,
तो डायरेक्टली उसकी हिटिंग आएगी अपने नॉमिनल अकाउंट की ओनली। और वो जो 3 गोल्डन रूल्स अपन ने देखे थे, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, like as debit what comes in, credit what goes out, debit all the expenses, credit all the incomes, ये 3 are the basic rules that is to be followed upon। तो कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में it will make ease of you। और स्पेसिफिकली मैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को एक बार वापस से एक्सप्लेन कर देती हूँ। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, इसका आप लोग फॉर्मूला लिख लीजिए, दैट इज सेल प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ओके, जी। अब आप लोग जो भी इसके रिगार्डिंग कोई भी एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन दैट यू वांट टू आस्क, प्लीज आस्क। आवाज नहीं आ रही किसी की। हाँ, आप लोग अपनी कोई भी एनी, जी। P&L और बैलेंस शीट में मतलब व्हाट इज द मेजर डिफरेंस? मेजर डिफरेंस, हाँ मैं बताती हूँ सर आपको। देखिए P&L में अपन सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट को अपन सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट को अपन मतलब डालते हैं। जैसे कि सपोज करिए कोई आपकी इनकम हुई है, आपने उसमें डाल दी, एनी सॉर्ट ऑफ डिविडेंड आ गया, आपने उसको डाला, या आपने सैलरीज दी है। ओनली एक्सपेंसेस और इनकम्स विच आर इनडायरेक्ट टू द बिजनेस आर अकाउंटेड इन द P&L अकाउंट। और मेजर डिफरेंस बैलेंस शीट और P&L में ये होता है, बैलेंस शीट तो आपकी पोजीशनिंग दिखाती है, आपके ये दिखाती है आपके कितना तो आपके पास असेट है, कितना आपके पास आपका लाइबिलिटीज है। P&L ट्रांजैक्शंस दिखाता है कि आपने कितनी सैलरी बांटी या कितना वेजेस बांटा, कितना आपने रेंट किया। वो आपको ईयरली का, पूरे ईयर का ब्यौरा दे देता है कि आपने कितने खर्चे करे और आपने कितनी कमाई कर दी है। ट्रेडिंग और P&L दोनों का ये काम है, वो फुल ईयर का आपको ब्यौरा देता है रिगार्डिंग द डायरेक्ट एक्सपेंसेस, रिगार्डिंग द डायरेक्ट इनकम्स। और ट्रेडिंग में खाली डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट इनकम होएगी, और P&L में खाली इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट इनकम्स होएगी। बैलेंस शीट ये कुछ भी नहीं दिखाता। P&L और ट्रेडिंग अकाउंट्स होते हैं, बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं होता। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होता है जो एक पर्टिकुलर डे की मेरे को पोजीशनिंग दिखाता है कि वेयर आई एम स्टैंडिंग अपॉन, एट व्हाट वैल्यू। Basically, it is a summary of the trading and P&L. जी जी, हाँ 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 हाँ, राइट। वो जो लास्ट वाली कैलकुलेशन अपन ने वाली कैलकुलेशन देखी थी ना, असेट इज इक्वल्स टू इक्विटी प्लस लाइबिलिटी। अब वो क्या है, अपने तो इतने सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं कि अपन ये वाली इक्वेशन से बैलेंस शीट नहीं दिखा पाते, तो ये टी फॉर्मेशन से अपन ये पूरी चीज दिखा देते हैं, एक साइड लाइबिलिटी और एक साइड असेट्स को दिखा के। थैंक यू जी। और भी प्लीज आपकी जो भी क्वेरी हो प्लीज पूछ लीजिए। एक आपको अक्रूवल बेसिस का, जी जी जी, एक्सक्यूज मी, हाँ ये ट्रेड अकाउंट में हम सेल और जो अपने को मिला रेवेन्यू उसको दिखाते हैं। आपकी वॉइस क्लियर नहीं है सर। हेलो, हाँ आप बोलिए। जी सर बोलिए। ट्रेड अकाउंट में वेरिएबल कॉस्ट को दिखा सकते हैं क्या? किसमें सर? ट्रेड अकाउंट। कौन सा अकाउंट? आई डिडंट गेट यू। ट्रेड अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट यू टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट बोल रहे हैं ना सर आप? हाँ ट्रेडिंग। हाँ, ट्रेडिंग अकाउंट में खाली और खाली डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम्स। मैं डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट इनकम दोनों वे में आपको बता देती हूँ।
देखिए एक्सपेंस जो भी या तो कोई मैन्युफैक्चरिंग की वजह से हो रहे हो या ट्रेडिंग की वजह से हो रहे हो। अब मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या हो सकते हैं, जैसे अगर मैं कोई चीज खरीद रही हूँ, चीज मतलब रॉ मटेरियल खरीद रही हूँ, या इधर मैंने कोई गुड्स खरीदे हैं, या सपोज करिए मैंने कोई गुड्स बेचे हैं, कोई कुछ भी डायरेक्टली टू माय मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ भी चीज आती है तो हाँ मैं उसके अंदर ही काउंट अपॉन करूंगी। अब आप बोल रहे हैं वेरिएबल कॉस्ट, आप यही पूछ रहे हैं ना वेरिएबल कॉस्ट का? सपोज करिए वेरिएबल कॉस्ट अपन किसका एग्जांपल ले सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का, राइट? है ना? अब इलेक्ट्रिसिटी देखिए सर, मैं एक एक गुड्स की नहीं पता लगा सकती कि मेरे एक एक गुड्स बनने में कितनी इलेक्ट्रिसिटी लगी है, इट इज नॉट डायरेक्ट टू माय गुड्स। तो मैं बेसिकली इसको किस में अकाउंट अपॉन करूंगी, मेरे P&L अकाउंट में अकाउंट फॉर करूंगी। अब जैसे गोडाउन है, गोडाउन चार्जेस है, राइट? तो अब मैंने गोडाउन में हजारों गुड्स रखे हुए हैं, मैं इसको कभी भी ट्रेडिंग में नहीं दिखाऊंगी, इसको मैं हमेशा किस में दिखाऊंगी, P&L में दिखाऊंगी। इट इज नॉट डायरेक्ट वन, है एक्सपेंस, अपन इसको अकाउंट फॉर भी कर रहे हैं, बट अपन ने क्या किया, ट्रेडिंग में खाली और खाली एग्जैक्टली रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज ट्रेडिंग, खाली इन दो चीजों को ही अपन ने टेक फॉर किया है, सो दैट वी कैन हैव द नॉलेज ऑफ द ग्रॉस थिंग्स। ओके ओके ओके, है ना सर? एनीबडी एल्स? आपको ये तीनों अकाउंट्स में कोई दिक्कत आ रही हो या वो तीनों रूल्स में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप पूछ सकते हैं। ब्रेक इवन वाला पॉइंट आपको क्लियर है सबको? ब्रेक इवन वाला पॉइंट क्लियर है सबको? यस मैम। है ना? अब जैसे अभी आपने पूछा था वेरिएबल कॉस्ट, सपोज करिए मैं जो मशीनरी यूज कर रही हूँ उस पे हर साल कुछ ना कुछ डेप्रिसिएशन तो अपन अलाउ करते ही हैं, राइट? अब आप कहेंगे मशीनरी तो मैम यूज हो रही है मैन्युफैक्चरिंग में ही, तो डेप्रिसिएशन भी डायरेक्ट एक्सपेंस में डालो। नहीं, वो P&L में ही डालेंगे। रीजन बिहाइंड, मशीनरी मैंने मान लिया यूज हो रही है गुड्स के प्रोडक्शन के लिए, बट मैं ये अकाउंट फॉर नहीं कर सकती ना एक गुड के लिए कितना डेप्रिशिएट हुआ, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही आएगा, ये डायरेक्ट में नहीं आएगा। इस अकाउंटिंग इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम है? दैट इज असेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस ओनर्स इक्विटी। इन तीनों अकाउंट्स में उसे कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसी से ही आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे कोई पर्टिकुलर एंट्री कौन से वाले अकाउंट में जाएगी, वेदर पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। अगर कोई एग्जांपल हो तो बता दीजिए, मैं तो और क्लियर हो जाएगा। किस चीज का सर? ये अकाउंट्स का आप बोल रहे हैं ना? ठीक है, मैं वापस से रिपीट कर देती हूँ। देखिए अपन इसको जी एग्जांपल हो कोई, मान लीजिए बैलेंस शीट पड़ी हो, प्रॉफिट लॉस अकाउंट हो आपके पास, तो वो क्लियर हो बैलेंस जाए। शीट, हाँ बैलेंस शीट जस्ट अ मिनट। नहीं है तो वेल एंड गुड, ठीक है। ट्रेड अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट का कुछ पड़ा हो, अकाउंट, और आपको P&L इनका फॉर्मेट टाइप चाहिए सर, परफॉर्मा चाहिए आपको उसका? नहीं फॉर्मल जो ड्यूअल एंट्री आएगी ना उसमें तो। सुनिए मैं आपको बाद में व्हाट्सएप कर सकती हूँ इसको। हाँ ओके, हाँ ओके भाई, ठीक है, मैं आपको ये व्हाट्सएप, बट मैं फिर भी आपके ब्रीफ के लिए एक बार वापस रिपीट करती हूँ। P&L और ट्रेडिंग अकाउंट होता है, बैलेंस शीट अपने पोजीशनिंग का एक स्टेटमेंट होता है, बैलेंस शीट इज नॉट अ अकाउंट। मैं आपको इसका व्हाट्सएप कर दूंगी जो भी परफॉर्मा है, और एक इलस्ट्रेशन वाइज मैं आपको इसका व्हाट्सएप कर दूंगी। इन वाले 3 रूल्स में कोई दिक्कत आ रही है? मैडम ये काइंडली दोबारा, मैडम काइंडली एक बार हाँ हाँ, ये वाले तीनों रूल्स ना, ठीक है। जी जी जी। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट।
जो भी चीज आ रही है वो डेबिट होएगी, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो चीज जा रही है वो अपनी क्रेडिट पे होएगी। फॉर सपोज करिए मैंने कोई सामान बेचा, सपोज करिए मैंने कोई मशीनरी बेच दी 10,000 रुपए में। अब देखा जाए मैंने मशीनरी बेची, मेरे पास आया क्या? कैश। 10,000 रुपए मेरे पास कैश आ रहे हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन, दैट इज मैं कैश को करूंगी डेबिट, और मेरे पास जा क्या रहा है? मशीनरी। तो माय एंट्री इन द जनरल बुक वुड बी कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। इससे समझ आया सर? राइट मैम। ठीक है, अपन हर रूल का एक एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। फॉर सपोज मैंने राम को 1,000 रुपए दिए, ठीक है, मैंने लोन दिया, कुछ भी समझ लीजिए। पहली बात अपन देखते हैं, राम को अपन ने पैसे दिए, उसको उधार दिया अपन ने। मेरे इधर से जा क्या रहा है? कैश जा रहा है, और मिल किसको रहा है? राम को मिल रहा है। रिसीवर कौन है? राम। राम अकाउंट डेबिट टू कैश। यू गेटिंग माई पॉइंट? राइट मैम। है ना? अब रूल थर्ड का एग्जांपल देखते हैं। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल द गेन्स। सपोज करिए मेरे बैंक अकाउंट में 50,000 रुपए का डेबिट आया। यस, मान लीजिए मेरे को 50,000 का किसी ने कैश कोई बोनस दिया है, मेरे बिजनेस को मिला है, कुछ भी मुनाफा हुआ है। देखा जाए मेरे पास क्या आया है? कैश आया है। आई विल डू, और मेरे को इनकम हुई है, गेन हुआ है। तो साफ थर्ड वाला रूल कह रहा है क्रेडिट ऑल द इनकम्स, और फर्स्ट वाला रूल कह रहा है व्हाट कम्स इन। तो आया तो क्या है? कैश। तो दैट इज कैश अकाउंट डेबिट, और हुआ क्या है? फायदा हुआ है, गेन हुआ है मुझे, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बोनस अकाउंट क्रेडिट में जाएगा। एनी प्रॉब्लम इन दिस? तो आपको कोई भी जी मैम ये जो आपने फर्स्ट एग्जांपल दिया था मशीनरी बेचने का, इसको हाँ, रूल 2 में बिठा के थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। जैसे क्या चीज? आपने जो पहला एग्जांपल दिया था कि मशीनरी सपोज आपने 10,000 में बेचा, अच्छा तो अच्छा अच्छा। उसको रूल 2 में कैसे? नहीं, तो सर हर चीज में सारे रूल नहीं लगेंगे। सपोज मेरा वही वाला था ना कि मैंने मशीनरी बेची है 10,000 रुपए में, तो मैं ये देखूंगी 10,000 रुपए मेरे पास आए हैं, तो अपने आप मेरे पास हिटिंग आ गई है डेबिट व्हाट कम्स इन, और मेरे पास क्या चीज गई है? मेरी मशीनरी गई है। तो ये नॉट नेसेसरी कि हर वाले ट्रांजेक्शन में तीनों रूल फॉलो आएंगे। जैसे सपोज करिए आपने किसी को सैलरी दी है, तो सैलरी में फर्स्ट से ये सेकंड वाला रूल नहीं लगेगा, सैलरी में आपका एक्सपेंस वाला ही रूल लगेगा, रूल नंबर थर्ड। आपको कंपोनेंट देखना है कि उन दो में क्या हिटिंग हुई है। बेसिकली सैलरी दी है तो आपने किस चीज में हिटिंग हुई होगी? एक तो सैलरी हुआ, और एक अपना कैश हुआ। कैश अपना गया, और सैलरी क्या है? मेरे लिए मेरे बिजनेस का एक्सपेंस है। तो मैंने रूल थर्ड का फर्स्ट वाला ले लिया, डेबिट कर दी सैलरी को, और गया मेरे पास से क्या? कैश। तो मैंने रूल फर्स्ट का जो सेकंड वाला फंडा है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मैंने उनको अप्लाई कर दिया। इट इज नॉट नेसेसरी फॉर एवरी ट्रांजेक्शन द थ्री ऑफ द रूल्स विल फॉलो। हो सकता है किसी चीज का खाली डेबिट लगेगा, किसी चीज का हो सकता है खाली क्रेडिट लगेगा। आपको मेजरली यही चीज देखनी है, आपका ट्रांजैक्शन कहां कहां पे हिट कर रहा है। मैं आपको अगर इसके एक सिंप्लीफाई हाँ हाँ मैडम ये सेकंड वाला जो है डेबिट द रिसीवर, आपने इसमें एग्जांपल दिया था मनी गिवन टू राम, अमाउंट गिवन टू राम, करेक्ट? राम इज डेबिटेड जी ना, जी जी रिसीव क्या नहीं, इसमें जो है 1,000 रुपये आपने कहा कि राम को दिया, तो हाँ इसमें मैंने ये दिया। क्रेडिट जो है, हाँ हाँ जी, ये जो क्रेडिट है ये कैश है, ये क्रेडिट, इसमें देखिए, कैश क्या है? देखिए कैश इसमें क्या है? कैश मेरे बिजनेस से जा रहा है कि आ रहा है? पहले आप ये देखिए। जा रहा है जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल साफ मेरा फर्स्ट रूल बिल्कुल। कह रहा है व्हाट गोज आउट उसको क्रेडिट कर दो।
तो मैंने मेरे 1000 रुपए को तो डाला क्रेडिट में, और रिसीव कौन कर रहा है मेरा रुपया? राम। मैंने राम को क्या किया? राम अकाउंट डेबिट टू कैश। मैं आपको और एक और इसको सिंप्लीफाई करने का अगर आपको तरीका बताऊं। जी जी मैम। जी, आप है ना, ये जो फर्स्ट रूल है इसको अटैच कर लीजिए अपने रियल अकाउंट से। अभी देखिए मैं आपको इसको बताती हूँ। फर्स्ट वाला रूल है ना सर, इसको आप अटैच करिए रियल अकाउंट से। जो अपन ने पढ़ा था ना रियल अकाउंट में क्या क्या आते हैं? सारे एसेट्स आते हैं, राइट? और अपन ने एक पढ़ा था पर्सनल अकाउंट, जिसमें क्या है? खाली और खाली इंक्लूडेड पर्सन्स या कोई भी एंटिटी। रूल सेकंड फॉलो करता है पर्सनल अकाउंट्स को। और फिर थर्ड अपन ने क्या पढ़ा था? नॉमिनल वाला, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस पढ़ा था ना। जी जी जी। तो आप ये जो तीनों रूल है, मैं ये रूल 1 वाला तो लगेगा अपने रियल अकाउंट्स वालों पे, रूल 2 लगेगा अपने पर्सनल अकाउंट्स वालों पे, और रूल 3 लगेगा अपने नॉमिनल अकाउंट्स पे। अगर आपने इसको इस वे में मैचिंग कर लिया तो आपका कोई भी ट्रांजैक्शन आपका गलत नहीं जा सकता। अब आपने अभी जस्ट मेरे को बोला था, किसी ने बोला था ना, वो राम को मैंने पैसे दिए, मैंने यही बोला था ना राम को। अपन ने दो हिटिंग कहाँ पे आई है? राम और कैश पे आई है हिटिंग, राइट? ठीक है ना? तो अब राम कौन है आप ये बता दो, कौन से अकाउंट में फॉलो करता है वो? नेचुरली ये पर्सनल में आएगा। पर्सनल अकाउंट में। और पर्सनल अकाउंट पे अपना कौन सा रूल फॉलो हो रहा है? रूल नंबर 2, राइट? तो अपन वो रिसीवर है ना, उसको डेबिट कर देंगे अपन। और दूसरी हिटिंग कहाँ पे आ रही है ट्रांजैक्शन की? कैश की। कैश कौन सा अकाउंट होता है? कैश पर्सनल, रियल और नॉमिनल में से कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल ना, नॉमिनल में तो खाली एक्सपेंसेस एंड इनकम्स थी ना। रियल अकाउंट। सी 3 अकाउंट्स, फर्स्ट इज पर्सनल। पर्सनल में खाली कौन अलाउड होते हैं? पर्सन्स या कोई एंटिटी। उसके बाद कौन सा था? रियल अकाउंट था। रियल अकाउंट में खाली और खाली अपने असेट्स अकाउंट फॉर होते हैं। और थर्ड होता है नॉमिनल अकाउंट, उसमें खाली और खाली हमारे एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं। ठीक है ना? तो एक एंट्री में जरूरी नहीं है एक ही टाइप का अकाउंट होएगा। अब जैसे राम को मैंने कैश दिया 1000 रुपए, तो इसमें दोनों अकाउंट हिट हो रहे हैं। वन इज द पर्सनल अकाउंट में तो राम हिट होता है, और रियल अकाउंट में कैश हिट हो रहा है, राइट? यू आर गेटिंग माय पॉइंट? राइट। आप कहें मैं इसको वापस से समझा देती हूँ आप लोगों को। मैं तीनों अकाउंट को एक बार वापस से एक्सप्लेन करूं इफ यू ऑल वांट। मैं कोई एग्जांपल के बगैर ज्यादा क्लियर नहीं हो रहा है, कोई एग्जांपल अगर आप भेज दीजिएगा बाद में। जी जी जी, वापस से बोलिए, मेरे को आपकी आवाज नहीं आई। कोई एग्जांपल कोई भेज दीजिएगा, उससे ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, मैं एग्जांपल आपको भेज भी दूंगी, बट मैं एंट्री का, डबल एंट्री सिस्टम का। ठीक है, ठीक है, ओके, आई विल सेंड यू डबल एंट्री सिस्टम का एग्जांपल, और मैं आपको ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट का एक आपको एग्जांपल देना था, मैं वो भी भेज दूंगी। बट क्लास खत्म होने से पहले मैं आपको ये वापस से, आप अभी तक जो समझा है वो ठीक है, लेकिन मैं वापस से ये तीनों अकाउंट्स को आपको बता रही हूँ। पहला है जी जी, पहला है पर्सनल अकाउंट। साफ ही नाम से कह रहा है इसमें खाली पर्सन्स के लिए अकाउंटिंग होएगी। जैसे कि राम है, श्याम हो, आप हो, मैं हूं, बैंक है, या कोई भी अपनी जैसी एंटिटी है। उसके बाद है रियल। रियल कहता है मेरे अंदर खाली असेट से रिलेटेड वाली चीजें होती है, जैसे कैश हो गया, प्लांट मशीनरी हो गया, लैंड बिल्डिंग हो गया, एनी सॉर्ट ऑफ असेट। और तीसरा नॉमिनल कहता है मेरे अंदर खाली एक्सपेंसेस और इनकम्स की बात करो, और कोई सी भी नहीं। तो ये तीनों रूल भी कहते हैं, इन तीनों रूल को आप मैच कर लीजिए अकाउंट से। जैसे फर्स्ट रूल जो है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये फॉलो करता है। चाहे से आप इसको अपने इधर कहीं लिख लीजिए, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट गोज आउट, ये वाला है रियल अकाउंट का रूल, कि कुछ जा रहा है या कुछ आ रहा है तो ये वाला फंडा चलेगा। और सेकंड रूल कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ये कहता है मैं रिसीवर और गिवर कौन होते हैं? कोई पर्सन ही होते हैं ना, तो बेसिकली ये पर्सनल अकाउंट में फंडा लगेगा।
डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स, ये सारा का सारा नॉमिनल अकाउंट का जितना भी सिस्टम होएगा एंट्री का, ये इसके थ्रू ही होएगा। अब जैसे अपन चलिए राम शाम सबको छोड़ते हैं, एक नॉर्मल सा दूसरा एग्जाम्पल दे देते हैं। सपोज करिए मैंने सैलरी पे करी 50,000, अपने वर्कर्स को 50,000 पे करी, सैलरी पे करी, तो सैलरी ऑब्वियसली कैश में पे करी होगी। इस ट्रांजैक्शन में आप लोग ही बता दीजिए हिटिंग कहाँ पे है, डुअल कौन सी हिटिंग हुई है जी? सैलरी इज एन एक्सपेंस। सैलरी इज एन एक्सपेंस, बिंगो, बिल्कुल सही। दो हिटिंग बता दीजिए, एक तो सैलरी और दूसरा क्या है? वर्कर्स जो है वो तो कैश इज द रियल अकाउंट, कैश इज रियल अकाउंट। वेरी गुड, बिंगो। तो देखिए आपने दोनों हिटिंग तो पकड़ ली, सैलरी टू वर्कर पकड़ लिया, वो हो गया अपना नॉमिनल अकाउंट, और आपने कौन सा पकड़ा? कैश। कैश कौन सा अकाउंट है? अपना रियल अकाउंट, ये भी आपने बता ही दिया था। अब पहले अपन सैलरी को देख लेते हैं। नॉमिनल अकाउंट का याला है ना रूल नंबर 3, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो इसमें ये एक्सपेंस ही है, तो डेफिनेटली आप क्या करेंगे? सैलरी का आप डेबिट कर देंगे। अब दूसरा आपने क्या बताया था कि वो कैश है हमारा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सैलरी दे रहे हो तो पैसे तो आ नहीं रहे हैं, अपने पैसे जा ही रहे हैं ना, तो डेबिट तो हो गया अपना सैलरी और क्रेडिट हो गया अपना कैश। आप हाँ जी बोलिए जी। आपको मेजर इसका इस टाइप की अगर प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो आपको मेजरली देखना है कि एक ट्रांजैक्शन डुअल एस्पेक्ट देखना है कि दो कौन सी जगह है जहां वो हिट कर रहा है, और फिर उन दो जगहों को ये देखना है वो कौन कौन से अकाउंट को रिलेट करते हैं, वेदर इट इज पर्सनल, वेदर इट इज रियल और वेदर इट इज नॉमिनल। और उस अकॉर्डिंग इन तीनों में से जो भी रूल अप्लाई होता है, अगर आप वो अप्लाई कर देंगे तो इजीली आपकी एंट्री इजीली हो जाएगी, जनरल एंट्री। और फिर भी मैं आपको इसके एग्जाम्पल, इसका इलस्ट्रेशन, ट्रेडिंग P&L का और बैलेंस शीट तीनों का मैं आपको इलस्ट्रेशन भेज दूंगी। एनीथिंग एल्स? ठीक है मैम, थैंक यू। Thank you and all the very best for your exams. I will definitely be sharing all the illustrations with you. Thank you. This PPT also ma'am. हाँ, sure, no problem in that. Thank you ma'am. Thank you so much. Do you have some exam related MCQs and all for this session? जी? Do you have some exam related MCQs etc.? Right now I'm not having that, but if you say I will send it to you. But मैंने अभी जो questions आपको कुछ पूछे थे ना, जैसे सैलरी पे हुई या कुछ ऐसा हुआ, वो वाले इस टाइप के क्वेश्चंस आ रखे हैं। जैसे मैंने आपको ये वाला भी पॉइंट बताया था कि अपन ने 3 अकाउंट डिस्कस किए ना, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। तो मैंने आपको बताया कि जैसे पर्सनल अकाउंट के अलावा जो भी बाकी के दोनों अकाउंट है, ये इम्पर्सनल अकाउंट है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है पहले का ही, तो आई ट्राई टू इंटरप्रेटेड इन दैट पर्टिकुलर। जैसे मैंने आपको वाली पॉइंट बताई कि बैलेंस शीट डे का ही, एक पर्टिकुलर डे का ही होता है, और अपना ट्रेडिंग एंड P&L पूरे साल का होता है। मतलब if you can send in some MCQs, it would be ठीक है, really no problem. We'll definitely share with you all. maybe later on. All the best for your exams. Thank you ma'am.